So good morning, cricket lovers. Once again, welcome back for the most prestigious Yuvaratna Trophy 2022, proudly organized by Team Fortune Mangalore in the memory of late Punit Rajkumar. And we are into the last day of this prestigious cricket tournament, and a very important day for the cricket and a decider day of cricket. And first day number 3, we're going to start with the good matches. First match itself, it's going to be a very good match. KFC Kodikal takes on Sneha Malemar in the first match of the day number final. So both the teams, Sneha Malemar as well as KFC Kodikal, they're talking about the game plan to win the match. And KFC Kodikal, certainly they came into this tournament one of the favorite of coming into the finals. They got a very good season, particularly 2021-22. They clinched some prestigious titles, especially one of the biggest title for KFC Kodikal RRP Memorial Trophy, FCA Trophy, 30 overs format of games. They won, but that is a different ball game. 30 overs format of game is just like a test matches of underarm cricket. But coming to that 7 hours format of the game, different game, different ball game. Even the players are there. You have to implement different strategy, different game plan. And the last week, they won one more prestigious title, Sauharda Trophy 2022, which is played at Krishnapura Paradise Cricket Ground. And their level of confidence definitely going to be high. Sneha Malemar, coming back to Sneha Malemar. One more very disciplined, and you cannot underestimate the potential of Sneha Malemar. They famously known as with the nickname of the fighters. They are definitely the fighter. Sneha Malemar, they can give any kind of competition for any big teams. They got some good players in the side. They got all-rounders. They got Geetesh, Yatin, all are leading from the front. 7 overs game as per the rules umpires decided. Seven overs side to be played. So umpires are walking towards the middle for this the first match of the day number final. Roland Pinto, along with him umpire Sriraj. The very good two experienced umpires for this particular cricket tournament. The batsman, please. Sneha Malemar, captain, please send your opening batters quickly. So, just I would like to remind for both the teams, 4 minutes for each and every over, 28 minutes plus 2. It's definitely you have to complete your 7 hours quota within 30 minutes. ದಯಮಾಡಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 30 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ 7 ಓವರನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿ. So opening batters slowly walking towards the middle for Sneha Malemar. The left and right combination. Yatin is walking towards the middle. One more very good striker of the ball. And got a very good record in underarm cricket the last 5 to 6 years. He's been outstanding from the bat. And along with him, one more promising left-hand batter, Mustafa. The kind of batter who loves to rotate the strike each and every ball. Can hit some big shots as well.
but he's the kind of guy who can very strong behind and square off the wicket, and useful opening batters, especially when you're playing the small format of the games. The two different mindset players required, offensive and defensive. One batter who can rotate the strike, and one batter who got ability of dominate the bowler, and that might be the strategy from these two opening batters in the middle. So Mustafa will go into start. Mustafa will go into face, and from the commentary box, and Shakir, the one more very important player for the side of KFC Kodikal, is known to be a very good all-rounder in a present cricket. And I want to see the fielding set now. One at short fine leg, one at short square leg. One fielder is going towards a deep backward square leg. Looks like the mid-on going back to deep long on, almost in a little bit wideish long on. There is a short extra cover, a little bit short mid-on, mid-off, short extra cover, cover point, Iqbal, and at backward point, one fielder at backward point and one at short fine leg, Chetan. Akim standing well behind the stumps. Imran at short square leg. So start off the match, and good morning cricket lovers, once again welcome back for this final day of this prestigious Yuvaratna Trophy 2020-22, and you will go into watch the first delivery of the final day. Shakir will go into deliver the first ball. Lovely shot, beautifully played that one, right in between the two fielders, and between the cover and extra cover, before the fielder run back and fields the ball down at deep extra cover region. Ample time for Mustafa to complete that couple of runs. Lovely looking off drive. Little bit width is offered in the off volley, and immediately Mustafa off the back foot punts that one between cover point and extra cover. He got a very valuable couple of runs, two without loss of any wicket in the over number first in progress. Shakir again bowls out. That was a beautiful delivery. There's a chance of run out. If it is a throw, is then right on the stumps. Suddenly is a chance of run out. Mustafa, I don't know why he is making that much of hurry for that run, urgency for the run. And sudden chance of run out if Yatin respond for that run, but quickly Yatin realizing that Shakir is the very quick fielder on his follow through, and is denying that single, again edging it down, but ball went straight to the hands of Chetan. Again Mustafa showing a little bit urgency, appeal for run out, directing here from Chetan, but Sriraj exactly in a good position to judge. Of course Mustafa is right in time, is put his bat, and otherwise one more opportunity of run out. Mustafa, after getting a couple of runs, a little bit struggle, and especially wanted to rotate the strike and wanted to out of the strike by picking up the single, but Shakir is back very strongly in the last two deliveries. Shakir from the fourth time in this over. Right now Mohammad wicket went for the reverse, ball is in the air. This time run, it's gone. Very interesting to see that. Mustafa knows that, and I think he's a very good sportsman spirit. He's not really looking at, he's just walking towards the pavilion. And that's what really required the spirit of game, because Akim is not really appealing for a catch. He's just trying for the run out, wicket keeper. But Mustafa is walking, and umpire Roland Pinto already raised his finger in the occasion, so that the first wicket is back into pavilion of Sneha Malamar. Went for the reverse sweep, he got a top edge, ballooning up in the air, a wicket keeper behind the stump takes a catch, and immediately he is tried for the run out. Maybe he's thinking about the wicket of Yatin, probably wanted to get the wicket of Yatin. That's maybe the reason that Akim not interested to appeal for caught behind. But anyhow, one wicket is back into pavilion. Sneha Malamar lost the very big wicket of Mustafa. Looking very confident after getting a couple of runs from his bat in the first delivery, but afterwards might be a little bit he's started to feel the pressure. I don't know why he's feel the pressure, because each and every time when batter gets some runs in the first delivery itself, and the level of confidence definitely going to be increased, but in that occasion might be Mustafa is not having that much of a good confidence, and very confident. Lovely delivery again from Shakir, quicker one compared to the last three deliveries. He knows that in front of him is one of the fantastic
batsman, fantastic striker of the ball. Gitesh is on strike, so that he bowled a quicker one outside the line of off stump and completely beaten. This time, bowled him. This is a big wicket. That ball passed between bat and pad, between two his legs, and he went for the reverse stroke. Faced the penalty for that. Wicket number 2 for Sneha Malamar is back into pavilion. This is really a big blow. I'm really not understand why Gitesh has played that kind of risky reverse sweep, because that was a quicker one there from the bowler Shakir, and at the same time that ball is just passing between between his two legs, and that ball is almost targeting midland off stump. So 2 for the loss of 2 wickets. Chetan from the far end. Right arm over wicket he bowls. This time drives the run straight to the hands of Ashwit down at mid-on region, and there is no chance of any run. What an outstanding start given there by Shakir. Absolutely perfect over for KFC Kodigal. Picked up 2 wickets, valuable wickets in just 2 considering just 2 runs. This time improvising beautifully just over the top of square leg region fielder. Ball running down to deep square leg boundary for 4 runs. We are always talking about the nature of the ball in this particular cricket tournament. It's very hard in the nature, and once it beats the infield, then ball travels very quickly. And look at that one, just an improvisation, not enough power in that shot, but he's just helping it down. Clever cricket there from Yatin, and he got a very important boundary for his team, Sneha Malamar. 6 for the loss of 2 wicket. Again, Chetan bowling from the far end, right arm over the wicket, improvisation again, this time by playing a switch it, and didn't got that much of placement right, and Iqbal the fieldsman there in the short third man region. Imran led correction, and they got ample time to complete a single. Rajesh is a striker, the new batter. That one might be that Rajesh is thinking about a quick single by pushing the ball down to short cow point region, and rightly so. Yatin sending him back because that ball went very quickly to the hands of a short cow point region. So no question of any run at all, and the score remains at 7 for the loss of 2 wicket. Chetan with the short run up, bowling from the far end. Right arm over the wicket he bowls. This time lovely shot, beautifully driven, and quite deliberately he lofted that one down to the extra cover region. Extra cover drive, lofted extra cover drive. Vacant area, the huge gap between the short mid off and the short cover point. So quite deliberately Rajesh played that one in the air, and he picked up a valuable single for his team. 8 without loss, 8 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Chetan, second in progress repercussion. This time again across the line, Yatin tried to play that one over the mid-wicket region, but again didn't got that much of enough timing in that stroke, but he got a single, retains the strike for the next over. 2 overs completed, tidy 2 overs there from KFC Kodikal. Won the toss, elected to field first, and both the opening bowlers are really bowled very good line and line. 7 runs came from that over of Chetan, because Yatin got 1 boundary in that particular over. Now because of that they got some runs in this over. Good morning to everyone, special good morning to the viewers, those who are watching live telecast of this cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2022, and King Sports YouTube channel having a fantastic live telecast of this cricket tournament as well. And I would like to wish a very good morning for each and everyone, those who are watching cricket tournament in their
mobiles through YouTube. Once again, I request all cricket lovers, please subscribe King Sports YouTube channel as much as possible and please support. So after that, 2 days of successful cricket tournament in this most historical and beautiful UCG cricket ground. We are into the final day and decider day of cricket. A lot of cricketing action is going on in other part of South Kent district. Of course, the JD boys they're organizing JD Trophy at Bantwal SVS cricket ground. One more prestigious cricket tournament is going on in that Bantwal as well. So altogether, it was a good day for cricket lovers to watch some good cricket in two very good trophies. Yuvaratna Trophy and JD Trophy. Again, first ball of the over number 3. Hakim brought into attack and Yatin tried to reach that delivery, but the ball is deviating too much, going further away outside the line of leg stump, and is left that one umpire signals a wide. This time driven that one little bit across the line of the delivery. Hakim knows that if he missed the ball from the bat, certainly that ball is going to hit the midline leg stump. That's why he's put his hand into his head. But Yatin is so sure and so confident that he can get the ball. He will get the ball from his bat. He picked up a single, then scoreboard moves on to 11 for the loss of 2 wickets in the over number 3 in progress. Slowly and steadily, these two batters are certainly playing as per the condition required. Again, well swept down to square leg region there by Rajesh. They're looking for the second, but very difficult to get. Fielder is very quick in the deep backward square leg region. So no question of second run. One more addition to total. Both the batters are dealing with the single in this particular over because fielding is really spreading out after that power play. We can see that 5 fielders outside the circle saving the boundaries. Again, beautiful change of line. Absolutely perfect there from Hakim. Surprising Yatin in that occasion because Yatin is just waiting for the ball which is almost coming into him. But this is a different one, wrong one, quicker one from Hakim beats Yatin. Improvisation. Again, he gets the placement not right in the occasion. He wanted to play that one very fine. He wanted to get that one between wicketkeeper and the short third man region, but didn't got enough timing in that stroke, so he picked up a single for that. 13 for the loss of 2 wickets. Again, ball is hitting his legs, chance of run out, but I think it's very quick in that occasion. Leg by call by umpire, and one more addition to total. 14 for the loss of 2 wickets in the over number 3 in progress. Morning condition as always in UCG cricket ground, and the first 3-4 hours belongs to the bowling side. And so far, that's why they're just exploiting the morning condition. The bowlers of KFC Kodikal. It's not really giving any chance for the batters of Sneha Malamar to settle down for any kind of big stroke. Only one boundary, which is came from Ethan. Lovely shot, crashing that one down to deep cow point region. Beautiful shot and delightful stroke there from Yatin. But unfortunately, got a fielder in the deep at cow point region. So over number 3 completed. Completion of over number 3. Sneha Malamar after getting a very shackling start. And 2 for 2 at one stage, and after that these two batters really played very sensible batting in the middle. They played as per the condition required. Slowly they're building up a partnership, the partnership of 13 particular match, but unfortunately is today also is back very quickly, and that's only because of Shakir. He got a very, very important breakthrough in the first over. 15 for the loss of 2 wickets. Today we have Swastik in my left as a scorer for this final day of cricket. One more very good scorer. Swastik. Scorer come statistician. Got all the information what really going in South Kent district, especially in Underarm cricket is concerned. From the far end, change of bowler, and first ball a little bit down the leg stump, but well within the reach of the batter Yatin. So Sriraj rightly so not interested to give the wide. That's a fair delivery, and the first ball by Naufal is a dotted one. Naufal from the far end.
Right arm over the wickety balls. This time far outside the line of half time. Beats everyone. Diving effort of the fielder Imran. And even the fielder Shakir is in the short third man. One fielder at short fine leg. And ball just passed between their two fielders. 5 gifted runs. This is absolutely a bonus run for Sneha Malamar. All in sudden, umpire Roland Pinto just have a look at the bowling action of Altaf Naufal, in fact, and that's why Naufal couldn't man after bowled the first delivery. And quickly umpire Roland Pinto now coming towards the strike non-striker's end, and Sriraj coming to square leg in striker's end. So here is next delivery, driven firmly down to deep long off region for a easy single. With the addition of that single, scoreboard now moves on to 21 for the loss of 2 wickets. Certainly it's going to be a very, very valuable 5 runs for Sneha Malamar. They need to capitalize that one. And here is the no-fall from the far end. Again the wide outside the line of off stamp. Pressure onto the bowler's mind now, because after getting some warning from umpire, and might be something is going in the mind. The wide outside the line of off time. One more addition to total scoreboard moves on to 22 for the loss of 2 wickets. Suspicious the bowling action, which is not allowed, especially when you're coming to the UCG ground. And that's all happening whenever, of course, some cricket tournament, some bowling action is allowed, and when you are coming to the UCG cricket ground, then I think you should follow each and every rules and regulation of cricket, and that's why it's a very historical cricket ground. In this particular cricket ground, there's no excuse at all. You have to follow each and every rules and regulation as far as the true spirit of cricket. Have to accept each and everything here in UCG cricket ground. So now for once again practice bowling mark. 22 for the loss of 2 wicket. So far it's a good over for Sneha Malamar. Now fall balls. This time I think it's a better one. And down almost the ball is coming into the batter, and Rajesh quite nicely swept that one down to square leg region for a easy single. With that easy single, scoreboard moves on to 23 for the loss of 2 wicket. Yatin facing this, a lovely shot. Oh, my goodness, look at that. Just clearing that mid wicket fielder. What a great hit there from Yatin. Just I want to see it in the replay, the way he hit that one, just lifting his back leg when he was whipping it down. Look at the timing behind that stroke. Absolutely terrific from Yatin. And score jumped into 29 for the loss of 2 wicket. This has been a really outstanding over here for Sneha Malamar in form of run is concerned. Outside the line of off time, Yatin looking for the square drive, but one of his favourite, not happy with himself. He is one of the master of playing that stroke, but he missed that opportunity, and there is no possibility of any run. No foul. Fouls again across the line, swinging his bat. Yatin, so far it has been outstanding. He's a very cool and calm customer, as calm as deep waters of the calm lakes, Yatin. But look at the potential depthness in that lake. He never understand, never judge his potential. He's very cool and calm in the first 2 overs, and look at the way he's built his innings. Absolutely the one of the great cricketers. So 29 for the loss of 2 wicket. 4 overs completed, 3 overs remaining in the innings of Sneha Malamar, and before the next over going to commence, it's time for my friend Mr. Gopi to take over the microphone. Good morning, Gopi, and welcome back. It's not that much of a good morning because seeing that we have a lot of busy schedules. Yesterday night we are in JD Trophy 2022 Bantwal, and morning here, and afterwards evening we had to go to Bantwal as well. But still, it was nice to see that the 2 very good tournament is going on here. One is UCG and one at Bantwal. But look at the Sneha Malamar, 29 they got a shackling start. They lost 2 wickets very quickly, and outstanding partnership now is building up between Yatin and Rajesh, and they are cruising towards some very good total, isn't it? बिल्कुल सतीश, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जहाँ तक सवाल है
बेहतर शुरुआत, और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कर चुका है। और बेहतरीन दो क्रिकेट श्रृंखला है जो कि इस वक्त चल रही है, एक यहाँ पर युवरत्ना ट्रॉफी और एक बंटवाल में जो कि जेडी बॉयज जिन्होंने उस श्रृंखला का आयोजन किया है, जेडी बॉयज ट्रॉफी 2022 के नाम पर, जो बंटवाल के एसवीएस मैदान पर इस वक्त चल रही है। और जहां तक बेहतर गेंद थी इस वक्त, और ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई 5वें ओवर की पहली गेंद, शाकिर अपना पहला ओवर बेहतर फेंक चुके। पहले ओवर में 2 विकेटें उन्होंने प्रदान किए थे और प्राप्त किए थे। यह गेंद चिप किया इस वक्त, गेंद को इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कम से कम 50 का आंकड़ा पार करना होगा निर्धारित 7 ओवर में स्नेहा मालेमार को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर खड़ा करना है। तो यह गेंद चिप किया, यतीन ने लॉन्ग ऑफ पर एक्स्ट्रा कवर पर कहना पड़ेगा। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पर है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रनिंग बिटवीन द विकेट। पहला रन काफी तेजी के साथ पूर्ण किया और देखा कि डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर है वो थोड़े से धीमे हैं और दूसरे रन के लिए दौड़े, और यशस्वितम यहां पर दूसरा रन पूर्ण करते हुए। और यतीन की उपस्थिति इस वक्त बेहद जरूरी है स्नेहा मालेमार के लिए, जहां तक अच्छा एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है। और ये गेंद चिप किया, स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ पर 1 रन मिलेगा। दूसरा रन के लिए दौड़ पड़ा, 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। तो यतीन यहां पर एक बेहतरीन पारी खेलते हुए, हालांकि आरंभिक बल्लेबाज की हैसियत से मैदान पर उतरे थे और कुल मिलाकर 20 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हैं। ही इज बैटिंग ऑन 20 इंक्लूडिंग 1 4 and a 6। और अगली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ा खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन मिलेगा। रन से इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए और स्नेहा मालेमार एक बेहतर स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ। और शाकिर इस वक्त तैयार गेंदबाजी करेंगे राजेश के लिए, और दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा राजेश ने, अंतिम क्षण में चूके पूरी तरह गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। 6 रन इस ओवर में बने, बेहतर ओवर शाकिर का, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। तो जहां तक अगले मैच का सवाल है, मंगलादेवी क्रिकेटर्स विल टेक्स ओवर गोरी यंग बॉयज इन द नेक्स्ट मैच, and that will be the match number 2 of the day 3 of Yuvaratna Trophy 2022 is now coming up live exclusively right in front of you right after this match. And because of that, I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. शॉट खेलना चाहा राजेश ने अंतिम क्षण में, यहाँ पर गेंदबाज को इस वक्त गेंदबाज दी गई है टीम फॉर्च्यून एंड की ओर से चेतन, जो कि अपना दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए यतीन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 21 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, और यतीन एक ऐसे बल्लेबाज है जो एक बार अपना लय रिदम प्राप्त कर ले तो गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं, और यहां पर वो भारी पड़ते हुए गेंदबाजों के ऊपर, और निस्संदेह इस वक्त वो क्रीज पर जम चुके हैं और खुलकर स्ट्रोक से यहां पर खेलते हुए। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त चेतन तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार एब्सोल्युटली फाइन, पैडलिंग स्वीप एंड ही गेट्स एन बाउंड्री फॉर दैट। मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी और गेंद को जिस तरीके से उन्होंने पैडल स्वीप किया था पूरी तरह सफल होते हुए काबिले तारीफ है, और निस्संदेह इस चौके की बदौलत स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रोक, इंटेलिजेंटली प्लेड जस्ट वाइड ऑफ द शॉट फाइन लेग फील्डर शाकिर एंड ही गेट्स एन बाउंड्री फॉर दैट। स्कोर बढ़कर इस चौके के साथ पहुंच चुका है 39 रनों पर, और 26 रनों पर इस वक्त यतीन पहुंच चुके हैं। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, बल्ले का भीतरी किनारा, गेंद पहुंची इस वक्त फॉरवर्ड शॉट लेग पर, वहीं पर गेंद स्पिन होती हुई रुक गई और घुमाव लेती हुई रुक गई, और विकेट कीपर हकीम ने गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को फील्ड किया, और राजेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। चेतन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर और सिर्फ बाई का इशारा इस बीच, और विकेट कीपर हकीम चुके थे इस गेंद पर, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 41 रनों पर। 41 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। चेतन की उपस्थिति इस वक्त बेहद जरूरी है स्नेहा मालेमार के लिए, जहां तक उनका एक अच्छा स्कोर खड़ा करने का सवाल है। और चेतन की गेंद, ये गेंद इस बार यतीन के लिए ऑफ स्टंप से बाहर, और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई अंतिम क्षण में, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर। सुबह का वक्त 9:45 यहां पर बच चुके हैं, बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। पिच पर कुछ हद तक नमी जरूर मौजूद है, और इस नमी का
आमतौर पर यहाँ पर गेंदबाज फायदा उठाते हैं, इस उर्वा मैदान का स्वभाव ऐसा है, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज इस नमी का फायदा उठाते हुए कोई प्रयोजन इस वक्त नहीं उठाते हुए, कोई प्रयोजन इस वक्त नहीं मिल रहा है गेंदबाज को इस पिच की नमी से। ये गेंद इस बार उछाला लगो पर फील्डर का वहां पर मौजूद एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, नॉट क्वाइट मिडल गेट बट ही गेट्स एन सिंगल फॉर दैट और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर और चेतन पहुंच चुके हैं 28 रनों पर। ही इज बैटिंग ऑन 28 नाउ, यतिन इन फैक्ट, एंड फैंटास्टिक इनिंग्स कमिंग फ्रॉम हिम। और राजेश इस वक्त सामना करते हुए चेतन की गेंदों का दाहिने हाथ ऊपर तब विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद हल्के से गेंद को पैडल स्वीप किया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर। रन्स इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए और खासकर उनके टीम की ओर से एक बेहतर पारी यहां पर यतिन खेलते हुए एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं। चेतन की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और गेंद को इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर खतरा हो सकता है, ओवर थ्रो और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज यहां पर दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। तो सिर्फ बाई का इशारा और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 46 रनों पर। दे आर लुकिंग इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन नाउ। 6 ओवर्स कंप्लीटेड, 46 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। काफी थके मांदे यहां पर यतिन नजर आते हुए और वो इस वक्त मैदान पर बैठे हुए और अंतिम ओवर बाकी, द लास्ट ओवर नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। और जहां तक अगले मैच का सवाल है, मंगला देवी, श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स का मुकाबला होगा गोरी यंग बॉयज के साथ अगले मैच में। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर सब पर करें, ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। और अंतिम ओवर लेकर इस वक्त हकीम तैयार, राजेश स्ट्राइक लेते हुए। 46 for the loss of 2 wicket after completion of 6 overs. Just last over now remaining in their innings. और इस बीच हकीम गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात, गली फील्डर इस वक्त गली पर कोई फील्डर नहीं, शॉर्ट थर्ड मैन थोड़ा सा स्क्वायर गली और शॉर्ट थर्ड मैन के दरमियान, शॉर्ट फाइन लेग बिल्कुल सीधा और ओवर की पहली गेंद हकीम के स्वीप किया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। और यहां पर एक बेहतर क्रिकेटर राजेश अपनाते हुए, वो जानते हैं यतिन को जितना ज्यादा स्ट्राइक मिलेगा उतना उनके टीम के लिए बेहतर होगा, क्योंकि यतिन एक वेल सेट बल्लेबाज है और यहां पर वो स्ट्राइक पर आ चुके हैं और हकीम की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। हकीम दाहिना तो ऊपर द विकेट यतीन के लिए, ये गेंद चिप किया, गेंद जाती है स्क्वायर ऑफ द विकेट, कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद तक पहुंचे, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, स्ट्रेट ओवर द स्टंप थ्रो पहुंच चुका है और आखिरकार स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। 29 नाउ विद दैट सिंगल यतीन इज मूविंग अप टू, और 4 गेंदे अब बाकी, स्टिल 4 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग इन द इनिंग्स। हकीम इस बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, बड़ी स्लॉग ऑफ पर 1 रन फिर से मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 49 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। जस्ट 3 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। ये 3 काफी थके मांदे यहां पर नजर आते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। हकीम की गेंदों का, हकीम दाहिना तो ऊपर द विकेट, रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ निकाला, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया था विद अ ट्विस्टेड बैट जस्ट वाइड ऑफ द गली फील्डर, और यहां पर गेंद डीप बैकवर्ड थर्ड मैन के दीवार पर टकराती हुई और इस चौके के साथ 50 कम्स अप। हकीम 51 runs partnership now completed. Absolutely fantastic partnership is now building up between Rajesh and Yatin, and Yatin is now moving up to 33 now with that boundary. तो 51 रनों के साथ यहां पर बन चुकी है 51 runs partnership scored for the 3rd wicket now between these 2 batsmen. Absolutely fantastic partnership is now progressing here. गेंदबाज हकीम की गेंद, ये गेंद bowled out. That's it. A marathon innings from Yatin comes to an end. 33 runs he scored, including 3 boundaries and 1 6. और निस्संदेह यतिन जब पेविलियन वापस लौट रहे तो KFC कोडिकल के खिलाड़ियों ने ताली इस वक्त बजाकर उनका अभिवादन किया इस बेहतरीन पारी के लिए, और यहाँ पर वो निस्संदेह उनके कप्तान स्नेहा मालामार के जरूर उनसे प्रसन्न होंगे कि इस बेहतरीन पारी उन्होंने खेली है। और यहाँ पर 33 रन बनाने के बाद ही इज आउट फॉर 33 और आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए
अंतिम गेंद बाकी, द लास्ट बॉल नाउ रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स. 53 रक्षक नए बल्लेबाज इस वक्त उनकी पारी की अंतिम गेंद, द लास्ट बॉल का सामना करने के लिए तैयार रहा. और हकीम में इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, तो अंतिम गेंद स्नेहा मालामार की पारी का यहां पर गेंदबाजी करते हुए हकीम दाहिने हाथ ओवर द विकेट रक्षक के लिए. यह गेंद इस बार उछालना चाहा, चूंकि रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा अंतिम क्षण में और यहां पर यह विकेट गिर चुका है. So the innings is up and Sneha Malamar started slowly but finished well with 53 for the loss of 4 wicket after completion of 7 overs, and now they set a victory target of 54 now for KFC Kodikkal. जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है, they have to score with the run rate of exactly 7.72 runs per over. 54 they have to score in the stipulated 7 overs. Thanks to the fantastic innings came from the bat of Yatin, who scored 33 runs into his credit, and because of his help and because of the support came from Rajesh from the other end. They finished well with 53 for the loss of 4 wicket in the stipulated 7 overs. 54 the target, and their innings now going to start of KFC Kodikkal within a just short while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ अंग्रेजी में, जब KFC Kodikkal की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर. धन्यवाद. And now it's time for break. Thank you. Welcome back. Thank you very much, Gopi. So, at last, Sneha Malamar able to get some good score, and 52 total score. They set a target of 53. The total score 54 is the target for KFC Kodikkal to win the match. What an outstanding comeback by the Sneha Malamar after they got a very slow start and shackling start. Then Yatin is leading from the front. What a fantastic innings he's played. Absolutely one of the most valuable innings he's played for his team, and showing all his experience in this particular innings, and he played some matured and one of the most potential and composed innings for his team, and so that they now able to depend now they try to depend that total of 53 now. First ball, right arm over the wicket and outside the line of off stump, and Nizam is a opener batter for the side of KFC Kodikkal, went for the off drive and missed it completely, and wicketkeeper Yatin behind the stump did the rest, and there is no chance of any run. Shrikant, very young talented cricketer for the side of Sneha Malamar, bowling right arm over the wicket, slashed that one, but not quite getting hold of that one properly. Timing is not really coming proper here. Direct it, but no question of run out there. But Nizam completes the single. He's off the mark with a single, and KFC Kodikkal, they started their journey. And no one given no one's imagination when Sneha Malamar they lost 2 wickets, especially the wicket of Gitesh and Mustafa early breakthrough, and everybody thought that it might be the low scoring game, but it's an innings which is played by Yatin, and then Rajesh in the other end is gave a very good support from the other end, and the 50 runs partnership really outstanding. Looking for the reverse stroke again, not really getting the timing behind that stroke. Rakshak, the fieldsman there in the backward point region, fields the ball but not quite able to stop the single from Tazuddin. After a long time, watching Tazuddin is just came to bat as the opener, and wait and see how Tazuddin will go into justify, and you need to talk with this bat because for a long time. This time Nizam went for a slog sweep shot, ball is in there,
I think the Rajesh the fieldsman there in the deep mid wicket region making no mistake at all. Very good field set there by the captain of Sneha Malamar. Usually in the power play, sometimes we are seeing one fielder in a deep long and deep long off, but this time the captain of Sneha Malamar kept one fielder in the mid wicket. They knows that Nizam is a very good slog sweeper of the ball. You definitely will going to play such kind of cricketing stroke. He kept a fielder in that mid wicket region, and this time I think Nizam did a little bit wrong shot selection because the ball is outside the line of off time. He wanted to drag that one. By doing that, he got a top edge ball, really not got into his middle of the bat, and ball is ballooning up in there for a long time. The ball is in there for a long time. That gave a lot of time for the mid wicket fielder to run to his right, and it takes a very good catch. That's the start which Sneha Malamar wanted to get in this match against the KFC Kodikal. KFC Kodikal, everybody knows that they're in such a fantastic winning track, clinching some very prestigious titles in the last 2 weeks. Last week he got a Saharda Trophy Saharda Trophy titles as well under their name. Our lovely delivery there from Shrikant. The variation and even is mixing up the delivery very well, changing the line as well. And this time Tazuddin went for the cut shot, missed it completely, and there is no chance of any run. 2 for the loss of 1 wicket. Shrikant bowling away from us. Right arm over the wicket, went for the reverse aim, right in the gap, ball running down to deep back to point region before the fielder from a short gully region to run back to field the ball. Ample time for Tazuddin to come back for the second and made it quite easily then. So over number first completed. It's just like what the start the opposition has got to Sneha Malamar. The similar start here for KFC Kodikal. They lost and they got the same start and they got only 4 runs by losing a wicket of Nizam, and it's a really good start there from Sneha Malamar. For the next match, I would like to call upon Mangalore Devi cricketers as well as Gori young boys. Please report here to sign the official chart. ದಯಮಾಡಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So congratulations. First of all, I would like to give special thanks to KFC Kodikal because they completed their 7 hours within 30 minutes, and really I think it's the word of appreciation is required for KFC Kodikal. So similarly, I want the same support from other teams as well. Please concentrate over the time for the times. It's so important. Only one thing you cannot buy from your money, that is the time. You need to give a lot of importance for the time. 4 for the loss of 1 wicket from the commentary box. Right arm over the wicket balls. This time Shakir drives that one wide off the mid-on region. So before the fielder, mid-on fielder run across to his right, he managed to left. In fact, he managed left. Both the batters managed to complete the single. 5 for the loss of 1 wicket. Gitesh introduced from the far end from the team Fortune, and right arm over the wicket balls, drives that one straight to the hands of shotman of Reza, chance of run out and directed. Oh my goodness, Gitesh is not really uprooting the stumps. It's certain chance of run out, I must say. Maybe he's thinking about it, it might be the direct hit, but unfortunately the Tazuddin, unfortunately for that fielder, he fields well, returns the ball very well to the hands of Gitesh, but he couldn't manage to complete his job. Lucky escape here for Tazuddin. This time wide outside the line of off stamp. Shakir just once he wanted to chase the ball, quickly realizing that ball is going further away. So he's left the ball rightly, so nothing much to do with that delivery. Wide call by umpire. 7 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Gitesh again. Right arm up with wicket. Ball to Shakir. Shakir nicely turns that one to short square leg region. And this time Rakshak down at square leg couldn't manage to control his balance while he trying for the field, but single is taken there by Shakir. He is a very important player, just like Yatin for Sneha Malamar. Shakir is as a key player for KFC. This time he beats the infield. This is not a good effort there from the fielder, the young fielder in the mid-on.
He can dive to his right and can he try for the stop for the stroke which is coming from Tazuddin, but he's just watching the ball going just right of him. And welcome boundary coming up here for KFC Kodikal. Tazuddin just breaking the shackle in the relegation. Much required boundary for KFC Kodikal, and score jumped into 12 for the loss of 1 wicket. This time a ball him, cleaned him up around the legs. Tazuddin looking for one more expansive drive. He's almost left that. In fact, he's just try to play inside out cricketing strokes. That's why he's moving too much towards his leg stump. Try to hit the big shot, but Gitesh did a great thing bowling around his legs. Look at that one in replay, and the ball is absolutely is played with the wrong line and pays the penalty for that. The wicket number 2 is back into pavilion of KFC Kodikal. The very important breakthrough. 12 for the loss of 2 wickets. Chetan came into middle. One more very good all-rounder for the side of KFC Kodikal. Now it's all up to these two batters. Very experienced campaigner for KFC Kodikal. Need to come out from the trouble. This time lofted over the top, on bounce over the rope for 4 runs. What a great stroke there from Chetan. A lovely shot, effortlessly played. Quite deliberately. This is an intelligent cricket there from Chetan. Look at that one in replay. That ball is almost midland off stump. He just wanted to play that one over the top. Nothing wrong with the line of the delivery. But Chetan, look at his level of confidence. Look at that stroke. He played that one right over the top. Mid on and mid off up in the circle. You know exactly the ball is a little bit hard in the nature. Outfield is very quick. Once he get past that infield, and no question of the question for the fielder of deep long on to fields that one. Very important and productive over here for KFC Kodikal. In this particular over, they're strongly back into this game. 16 for the loss of 2 wickets. So 38 runs more required now for KFC Kodikal, remaining 30 deliveries. And I think it's outstanding over. 12 runs came from that over of Gitesh. Is not that much of effective. Tazuddin got 1 boundary. Chetan also got 1 boundary. And because of that, KFC Kodikal are rightly back into this game. The difference between run and ball exactly 8. And that difference, I think it's manageable, especially when you are seeing the condition of the ball. A ball is really coming to the bat nicely, and I think it's going to be a very testing time for Sneha Malamar bowlers. Have to get 1 or 2 good overs at the same time. Very important for Kiran now brought in the attacker for him. You have to get someone breakthrough, especially the 2 batters of KFC Kodikal. The very experienced, so that Sneha Malamar just thinking about their wicket-taking bowler to come and bowl after that power play over. So after that power play, fielding restriction is up, so that a short fine leg square leg fielder going back to deep backward square leg. The 1 fielder from mid-on going back to deep long on, and extra cover fielder going back to deep cover point region Gitesh, and mid-off fielder going back to deep long off. I think they are missing Pratap in this particular match for Sneha Malamar. Pratap is a very good all-rounder for the side of Sneha Malamar. And Kiran bowling right arm over the wicket bounce. This time appeal for leg before wicket. Loud appeal, very confident appeal. But umpire might be thinking about that ball is a little bit getting an extra turn, and
maybe going down the leg stump. Shakir, I think is played very dangerously. Shuffled across the line of the delivery, tried to play across the line, and one more single is added to total. 17 for the loss of 2 wicket. Kiran is a kind of bowler who has been definitely going to be very effective when he bowls a good line and length. Kiran, right arm over the wicket he bowls. This time down the leg stump, and Chetan quite nicely get the placement down to short fine leg region. Intention to get past that fine leg region fielder, but he couldn't manage to get enough bat onto that. 16 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Kiran again bowling away from us, right arm over the wicket to swap that one quite nicely down to deep backward square leg region. Lot chase here for the fielder, and very good footwork there from the fielder in the deep, and that was a really good work. Nitesh, the very young talented player for the side of Sneha Malamar, who is standing at deep backward square leg. Look at that run and look at the way he stopped that one. Absolutely excellent and athletic work by the fielder. The timing of his putting his boot into the line of the ball has been outstanding, and he's just saving a couple of runs. What could be a certain boundary? Beautifully bowled. Shakir beaten by the flight, beaten by the turn. Not really has got a big turn in the delivery from Kiran, but he managed to get past the outside edge of Shakir. Is trying for a sweep shot. This one again, ball him. Oh my goodness! I think the ball hits the stump. No, doesn't. Maybe the ball is just an inches. That ball missed the wicket. Just a miss by whisker. And I think it's one of the Linus sir will go into when he's having the mic in his hand. It's just a miss by whisker, and that definitely what that delivery looks like is a ball is going to hit the off stump of Shakir, and fortunately Shakir in that occasion, that ball just misses the stump. Lovely delivery there from Kiran. Then first time watching, he's getting some extra turn, and here is again Kiran. Bowls to Shakir. Shakir drives that one again, shuffled a little bit to try to disturb the concentration of the bowler, but this time Kiran just following the batsman. Very good over there from Kiran. The very much required quiet overs. 3 overs completed, chasing 54 to win this match. KFC Kodikal 21 for the loss of 2 wicket. They got a 21 at the rate of exactly 7 runs per over. Now straight away coming back to the equation. 4 overs remaining. 24 deliveries remaining. Out of 24 deliveries, they have to get another 33 runs to win this match. And the match is evenly poised. It's going to be anybody's game. A very interesting game of cricket is going on here. Kiran justifying his captain's decision in the previous over to come and bowl. And what could be a certain the wicket taking overs, Kiran just a missed opportunity. The danger man Shakir is still there in the middle, just like the partnership between Rajesh and Yatin for Sneha Malamar. A similar kind of partnership is going on for KFC Kodikal between Chetan and Shakir, 2 very experienced batsmen for the side of KFC. Lot of viewers are watching and enjoying this cricket match. Everybody knows this is one more the very good match in the morning to watch. So Gitesh been introduced, the second and last over of his quota. He bowled his first over in a power play, but not that much of effective. 12 runs he conceded. Now he's coming in a very important stage of the innings of KFC Kodikal. Gitesh, right arm over the wicket, lofted that one beautifully. Look at that one. Oh, that was a maximum. Straight that ball into the wall, down at deep extra cover, effortlessly played there by Shakir. What a great stroke coming from the blade of Shakir, and that six brings KFC Kodikal strongly back into this game. 27 for the loss of 2 wicket. Half of the job is completed, half of the job is required. That means 27 runs scored, 27 more runs required for the victory. Gitesh from the far end. Right above the wicket, one more lovely shot. What a great shot there from Shakir. Why is called as a robotic of underarm cricket? Why is called robotic of underarm cricket? This is the one reason.
Look at the two strokes is played at one. One stroke is played down deep extra cover. That time, the captain kept one fielder from deep cover point to deep extra cover. Then immediately, Shakir realizing that the fielder is situated in extra cover, and next stroke he played down deep cover point, the vacant area. Outstanding and intelligent cricket there from Shakir, and score jumped into 31 for the loss of 2 wickets. Now 23 runs required, 22 balls remaining. Gitesh, expensive. 2 balls, 10 runs he scored. Looking for the sweep shot, but ball going down the leg stump too far. Wide call by umpire. Frustration and pressure straight away into Sneha Malamar. Gitesh is not effective from the bat. Now from the ball is not really able to contribute. Again, single-handed sweep shot. That is one of his favorite, and played it down to short final leg. And quickly Shakir realizing no need to panic at all after getting boundaries and six. Then he knows that just a rotation of strike is required, and he rotated the strike quite nicely in the previous delivery. 33 now, 21 required for the victory. Chetan, so good in it. As far as the rotation of strike is concerned, is the master. Picked up a single, just allow the ball coming into his bat to up and closing the face of his bat. Gave the direction down to short deep fine leg region for an easy single. 20 required now. This time Shakir reaching for the delivery, didn't got enough bat onto that. Ball is in the air for a while, but that young fielder in the cover point region not really able to reach that. And meanwhile, ample time for Shakir to complete the single. 35 for the loss of 2 wickets. Gitesh bows at the opposite wicket. Chetan across the line of the middle, swinging his bat right in the gap. Towards the deep mid wicket region. Little bends again. The footwork comes into play from the batter fielder in the deep mid wicket region. Mustafa, the fielder there in the mid wicket, and a great job. Once again, the footwork comes into play to stop the boundary, but you cannot stop couple of runs here from both the batsmen. And what an outstanding over. 2 expensive over ball by Gitesh. $16 runs came from that over, and just look at the total score which is scored in the over of Gitesh. 12 runs in the first over, 16 in the second over, 28 runs in 2 overs, which is conceded by Gitesh, one of the top bowler of Sneha Malamar. Whenever the top bowler is become that much of expensive, Gopi, it's very difficult for a team like Sneha Malamar to save the match. And what outstanding batting performance, Gopi, especially the previous over, the way Shakir hit 1 6 and 1 boundary, and it takes completely away from the opposition. But still, Gopi, Sneha Malamar, they got opportunity to bounce back. 1 good over required, and he's got a potential. Kiran bowled the previous over is magnificently, but more than anything else, he need to break the partnership. Exactly, Satish. इस वक्त पार्टनरशिप को तोड़ना जरूरी बन चुका है, और निस्संदेह गीतेश जैसे बेहतर गेंदबाज अगर 2 ओवर में 28 रन प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर निस्संदेह सामने वाली टीम का पलड़ा भारी हो जाता है. तो गीतेश के 2 ओवर को अगर एक्सक्लूड करके देखा जाए, तो बाकी के 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दोनों गेंदबाजों ने प्रदान किए हैं, और यहाँ पर उनका स्पेल जो है काफी महंगा इस वक्त साबित हो चुका है स्नेहा मालेमार के लिए. और यहाँ पर यतीन जिन्होंने अपना पहला ओवर बेहतर फेंका था, जो कि अपना दूसरा ओवर इस वक्त शुरू कर चुके हैं. अब 15 रन और चाहिए, और गेंदें बाकी हैं 16, और शाकिर इस वक्त बेहतर बल्लेबाजी करते हुए. गेंद इस बार ऑफ कटर गेंद थी, गेंद को बल्ले तक आने दिया, हल्के से गेंद को मोड़ दिया. मैं समझता हूँ गेंद उनके पैर से टकरा कर निकली थी. लेग बाय का इशारा, और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़ चुका है 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर. धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त के एफसी को निकलता है ना तो ऊपर द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, डॉट गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई. ऐसे चंद और डॉट गेंदों की इस वक्त सख्त जरूरत है स्नेहा मालेमार को इस मैच में वापस आने के लिए. चेतन सामना करने के लिए तैयार. एक बार फिर से यतीन की गेंदों का ये गेंद, इस बार किरण की गेंद थी, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, विकेट कीपर दौड़ पड़े, लेकिन वहां पर कोई बैकअप नहीं. इस वजह से विकेट कीपर यतीन ने गेंद को नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा. तो 1 रन यहाँ पर मिलेगा बाई के रूप में, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर. 41 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 13 टू गेट नाउ इन रिमाइनिंग 13 डिलीवरीज. और जहां तक सवाल है इस वक्त किरण का, दाहिना तो ओवर द विकेट शाकिर के लिए. इस बार बेहतर गेंद थी ऑफ कटर, और इस बार रनआउट का खतरा, निशाना टकरा चुका है, और मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत यह विकेट यहां पर चेतन का गिर चुका है. बेहतरीन
बेहतरीन गेंद थी इस वक्त, ऑफ कटर गेंद अंदर की ओर आई, गेंद को इस वक्त अंतिम क्षण पर खेलना चाहता, चूंकि ऑफ से कुछ 1 या 2 इंच दूरी पर गेंद निकलती हुई और गेंद जैसे ही शॉर्ट थर्ड मैन पर पहुंची बल्लेबाज शाकिर दौड़ पड़े, लेकिन चेतन इससे पहले कि स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे सीधा थ्रो शॉर्ट थर्ड मैन का फील्डर का फेंका गया हुआ स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ और यहां पर निर्णायक मोड़ पर यह विकेट गिर चुका। तो यहां पर साझेदारी टूट चुकी है और यही एक मौका है इस वक्त स्नेहा मलेमार के गेंदबाजों को कम बैक करने का। यहां पर एक कसे हुए ओवर अगर स्नेहा मलेमार के गेंदबाज फेंकते हैं जिसमें 2 या 3 रन वो प्रदान करते हैं और फिर 1 या 2 विकेट भी वो प्राप्त करते हैं तो निस्संदेह अंतिम ओवर में उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा ये जो ओवर शुरू होने जा रहा है मैं समझता हूं स्नेहा मलेमार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां तक केएफसी कोडिकल का सवाल है उनके लिए भी ये ओवर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस ओवर में कम से कम वो 7 से 8 रन बटोरते हैं। तो यहां पर अंतिम ओवर में 4 या 5 रनों का लक्ष्य उन्हें बनाना पड़ेगा, 4 या 5 रन उन्हें अंतिम ओवर में बनाना पड़ेगा। तो यहां पर इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन, जितने ज्यादा से ज्यादा रन केएफसी कोडिकल के बल्लेबाज बटोरेंगे उतना उनके लिए बेहतर होगा। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा ये जो ओवर शुरू होने जा रहा है दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए रक्षक जो कि गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए और वो इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार शाकिर और शाकिर का जहां तक सवाल है अपने पूरे अनुभव का अनावरण वो यहां पर करते हुए कुल मिलाकर 18 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए ही इज बैटिंग ऑन 18 इंक्लूडिंग 1 6 and a boundary and this is turning out to be a fine innings from Shakir in this match और 41 रन 12 गेंदें बाकी 13 रन चाहिए 13 to get from 12 deliveries. The match is now equally balanced. Runs badly needed for KFC Kodikal. Meantime, dot balls badly required for the batsmen, for the bowlers of स्नेहा मलेमार और इस बीच रक्षक टीम फॉर्चूनेट की ओर से नया ओवर इस वक्त आरंभ करते हुए शाकिर फील्ड का मुआयना इस वक्त करते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ और लॉन्ग ऑफ यहाँ पर नहीं है, एक्स्ट्रा कवर थोड़ा सा स्क्वायर रहता है रात, लॉन्ग ऑन बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, थोड़ा सा स्क्वायर रहता है रात। इस वक्त डीप मिड विकेट और बैकवर्ड स्कोर लेग इस वक्त मौजूद है। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिना तो पर विकेट इस बार टॉप स्कोप लेकिन सीधे शॉर्ट फाइन लेग पर सिंगल हैंडेड स्ट्रोक। मैं समझता हूं खेला था शाकिर ने गेंद की उछाल को पहचानते हुए, लेकिन शाकिर ने जितना पूर्वानुमान लगाया था उससे ज्यादा गेंद उछाल ली। मैं समझता हूं आखिरी क्षण में गेंद उनके टॉप एज पर टकराई थी और शॉर्ट फाइन लेग पर वहां पर लपक ली गई। तो बेशकीमती विकेट यहां पर शाकिर का गिर चुका है और सतीश यहां पर शाकिर का विकेट गिर चुका है। हैव अ लुक एट दिस, देखिए किस तरीके से इस वक्त गेंद को खेला था अंतिम क्षण में विद अ सिंगल हैंडेड, यस, और शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची थी। शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद को उछालना चाहता लेकिन चूंकि टॉप एज पर गेंद टकराई शॉर्ट फाइन लेग फील्डर द्वारा लपक ली गई और ये टर्निंग पॉइंट यहां पर साबित हो सकता है सतीश शाकिर का विकेट, क्योंकि शाकिर एक बेहतर बल्लेबाजी यहां पर कर रहे थे और उनका विकेट गिरने की वजह से अब दबाव कुछ हद तक केएफसी कोडिकल के ऊपर पड़ चुका है। Exactly, Gopi. Why not? Definitely, it's going to be a turning point of this match. If in another quick session they have to pick another 2 wickets, Gopi, definitely the chances here for Sneha Maleemaar to back into this game. Maybe the reason, Gopi, Shakir after getting boundaries and sixes, it looks like almost in a defensive frame of mind. He's not in a same. If he's able to bat in the same rhythm and can get some big shots as well, but he just changes his game plan technique and single-handed stroke, one of his favorite, but same favorite strokes come got a wicket of Shakir as well, and Shakir's wicket Gopi, maybe the gate which is open for Sneha Maleemaar, they have to bowl another 2-3 good overs, good deliveries if they wanted to back into this game. बिल्कुल सतीश, शाकिर को सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनानी चाहिए थी लेकिन उनका मनपसंद स्ट्रोक है जो सिंगल हैंडेड है, वो स्ट्रोक को उन्होंने खेलना चाहा और भुगतान उन्हें करना पड़ा अपना विकेट गंवाने के बाद। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद जाते हुए फील्डर वहां पर मौजूद, तो क्लीन कलेक्शन 1 रन मिलेगा। 42 42 now, 10 balls now remaining, 12 runs now they have to score for victory. What a fantastic match is now progressing here. हकीम एक और अनुभवी बल्लेबाज इस वक्त केएफसी कोडिकल की ओर से इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और इस वक्त फील्डिंग का मुआयना यहां पर करते हुए रक्षक 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में वो फेंक चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार टीम फॉर्चून इनकी ओर से दाहिने हाथ के बल्लेबाज हकीम के लिए और यहां पर 4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। शॉर्ट फाइन लेग, मिड विकेट, एक्स्ट्रा कवर और
शॉट थर्ड मैन, थोड़ा सा स्क्वायर और रक्षक की ओर की अगली गेंद, ये गेंद एब्सोल्युटली गुड वन, दैट्स द लाइन ही हैज टू बॉल इन दिस सिचुएशन, मच स्ट्रेटर लाइन। और इस गेंद को उछालना चाहते थे हकीम, गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और आखिरकार गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज को वंचित करने के बाद। और एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है रक्षक का। तो 9 गेंदें अब बाकी, 12 रन चाहिए और यहां पर धीरे धीरे स्नेहा मालेमार इस मैच में वापस आता हुआ और चंद डॉट गेंदें निस्संदेह केएफसी कोडिकल को और मुश्किल में यहां पर ढकेल सकते हैं और हर गेंद पर रन बनाना इस वक्त जरूरी बन चुका है उनके बल्लेबाजों के लिए। रक्षक दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए हकीम के लिए अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को खेला मिड विकेट पर, थ्रो पहुंचा इस वक्त, हकीम पहुंच चुके हैं। हालांकि गेंद को उछाला था, विकेट को उछाला था अपने हाथों से, ना सिर्फ ना गेंद से, गेंद को थ्रो को रिसीव नहीं कर पाए और जल्द में थ्रो को रिसीव करने के चक्कर में उन्होंने गेंद पर अपने हाथ अड़ाते हुए विकेट चटकाए जरूर लेकिन गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके और यहां पर शकील हकीम बार बार बचते हुए 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। कुल मिलाकर 43 रन बन चुके हैं और यहां पर हकीम का विकेट गिरता तो निस्संदेह दबाव और बढ़ जाता सतीश केएफसी कोडिकल के ऊपर। Exactly, Gopi. Look at that way that the fielder, I think Mustafa, is just return the ball in a half volley. Whenever the throw is coming in a half volley, it's very difficult for the bowler to collect that one. Maybe the throw in a pull straight to the hands of bowler, a certain chance of run out. Definitely it's going to be a big blow for KFC Kotikal if the wickets of Hakim is back into pavilion. Sneha Mala definitely they got the opportunity to back in. Already they back into this game, Gopi. But so far, the Rakshak in the sense of savior, he becomes a savior now for the Sneha Malamar. They bowled very well, but job is not yet over. बिल्कुल सतीश और यहाँ पर बिल्कुल सही बात आपने फरमाया, हाफ वॉली पर थ्रो किया था, अगर फुल टॉस थ्रो करते तो निस्संदेह यहाँ पर थ्रो को रिसीव करने के बाद रक्षक विकेट चटका सकते थे लेकिन मौका अभी भी है, रक्षक तैयार, ये गेंद इस बार टॉप एज, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए लेकिन नहीं, गेंद सीमा लगा से बाहर 6 रनों के लिए। इमरान ने यह छक्का जड़ाया और इमरान इस वक्त हकीम को बताते हुए कि गेंद उनके टॉप एज पर टकराई थी लेकिन विद विंड हवा के रुख के साथ इस स्ट्रोक को खेला था और डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर खड़े हुए थे जरूर, एक वक्त ऐसा लगा कि गेंद को वो लपक लेंगे लेकिन गेंद को वो देखते रहे और गेंद उनके सिर के ऊपर से निकल गई सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो लकी छक्का इस वक्त जुड़ चुका है इमरान के बल्ले से और स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 49 रनों पर, 49 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड जस्ट 5 रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और ये छक्का पूरी तरह अब मैं कहूंगा केएफसी कोडिकल को इस मैच में वापस ला चुका है। तो इस वक्त 7 गेंदें बाकी है, 5 रन चाहिए, 5 रन टू गेट फ्रॉम 7 डिलीवरीज। रक्षक एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को स्कूप करना चाहा, शॉर्ट बॉल पर नॉन स्ट्राइक रेट पर थ्रो लेकिन वहां पर कोई बैकअप नहीं और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है। 50 कम्स अप फॉर केएफसी कोडिकल, अंतिम ओवर बाकी और सिर्फ 4 रन चाहिए और सतीश इमरान का वो छक्का जो लग चुका था रिवर्स शॉट के जरिए, लकी छक्का केएफसी कोडिकल को पूरी तरह इस मैच में वापस ला चुका है। Absolutely, Gopi. It's a lucky 6, but 6 is 6 and you can't do anything for that. But the way that ball is played at one, of course it's a top edge. And once it looks like ball is definitely carried to that fielder, when the fielder is coming to the position, everybody thought that it might be a straightforward catch for the fielder, but because of the direction of the wind, Gopi, that ball is taken away from that fielder, and very important 6 for KFC Kotikal. And unfortunately, because so far in that particular over, Rakshak has done a great job, but sometimes he can't do anything, strokes like that, isn't it? Sometimes you just mentioning about luck is a fundamental ingredient of success, and they got that luck, and they got a very important 6 in that over as well. Because of that 6, Gopi, the match is slow, maybe out of the hands of Sneha Malabar, but not totally. 4 runs still they have to get, and bowler Athenis came into middle. He is the magical bowler, and as far as Sneha Malamar is concerned, he got a run from his bat. Maybe it's a day for him today. If it is his day, he definitely will go into restrict the opposition from 4 runs. बिल्कुल, अगर दिन आज उनका है तो निस्संदेह जैसा कि आपने कहा वो 4 रन रोक लेंगे अंतिम ओवर में। पहली गेंद बेहतर गेंद थी, गेंद की लाइन को समझते हुए ऑफ द बैक फुट गेंद को ड्राइव करिए, पंजों पर उछलते हुए लॉन्ग ऑन पर सेंसिबल क्रिकेट इस वक्त अपनानी है। अंतिम ओवर में केएफसी कोडिकल को 3 रन चाहिए 5 गेंदों पर और यतिन जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी 33 रन उन्होंने बनाए थे, स्कोर 33 रन इन इज बैटिंग
And now he'll be coming to bowl the last over of the match. और 5 गेंदों में चाहिए 3 रन अब विजय के लिए, हकीम के लिए. इस बार स्वीप किया बैकवर्ड स्कोर लेग पर स्वीप के स्कूप के जरिए, और इस चौके के साथ ये मैच केएफसी कोडिकल 6 विकेटों से यहां पर जीत चुका है. 4 गेंदें बाकी रखते हुए सफल होते हुए गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया था. इस वक्त हकीम ने इनटू द विकेट गैप, कोई फील्डर वहां पर तैनात नहीं, और एक बेहतर विजय यहां पर दर्ज कर चुका है इसने केएफसी कोडिकल. लेकिन एक बेहतरीन प्रयत्न इस ओवर में, इस मैच में किया स्नेहा मालेमार ने, लेकिन दुर्भाग्यवशात आखिरकार वो इस मैच को जीत नहीं पाए. तो एक बेहतरीन मैच यहां पर समाप्त हो चुका है, और अगला मैच यहां पर खेला जाएगा श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स और गोरी यंग बॉयज के बीच में. एक और बेहतर मैच, और वो मैच यहां पर शुरू होगा एक छोटे से अंतराल के बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे अजीज दोस्त सतीश के साथ अंग्रेजी में, जब अगले मैच की शुरुआत होगी यहां पर एक छोटे से अंतराल के बाद. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. Now it's time to announce a man of the match, and a man of the match which goes to the man who's popularly known as Robotic Shakir of KFC Kodikal. Just as a man of the match, I request Shakir of KFC Kodikal, please come and collect your man of the match award. I'll ದಯವಿಟ್ಟು KFC Kodikal ತಂಡದ ಶಾಕಿರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಮೇಶ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Hello. So Shakir of KFC Kodikal is awarded as a man of the match for his wonderful innings. Scored valuable runs for his team. Scored 18 valuable runs, and he picked up 2 valuable wickets. He came in a difficult time when his team is 2 for 2, and then takes his team into the victory with bowling, with batting, and he's deserved this man of the match award. Thank you very much, Umesh of Durga Cricketers, for presenting a man of the match award. Tribal Tattoos, they sponsored this man of the match for every matches with the attractive t-shirt.
ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಮನೋಜ್ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಮನೋಜ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂಥ ವಿವೇಕ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. I request the cameraman of King Sports, please report here. Cameraman of King Sports, please report here. ಸೊ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಮನೋಜ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂಥ ವಿವೇಕ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಫಾರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2022. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ದೇವಿನಗರ್ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಯಿ ಶ್ಲೋಕ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು Prabhakar Devinagar civil contractor as well as the president of Sai Slok, and I would like to warm welcome Mr. Prabhakar Devinagar for this wonderful cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2022, and which is played in the memory of
late Punit Rajkumar. Welcome back for the match number 2 of day number final. And what a great start for the day number 3 of this cricket tournament. The Mangalore KFC Kodikal, they came into the second round of this cricket tournament by defeating Sneha Malamar. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬೈಕ್ ಇದೆ, ಕೀ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೀರೋ ಬೈಕ್ ಇದು. ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಸೊ Deepak is on strike now for Gori Young Boys, and from the commentary box, and Kiran will go into start his fresh over. And first over of the power play, left arm down the leg stump, going to be wide. That ball is going down the leg stump further away, and first run comes off here for Gori Young Boys. Gori Young Boys, they came into this tournament with a lot of positive frame of mind. Every team, not only Gori Young Boys, one more extra wide, second wide of this over. Kiran struggled to get line and length in his first 2 deliveries, and we are talking about these two teams, Mangalore Cricketers and Gori Young Boys. Of course, the Gori Young Boys may be the favorite of winning this match as per the predictor, but you cannot underestimate Mangalore Cricketers as well, because so far even they have failed coming into the finals of some cricket tournament, but at least they managed to get into the semi-final each and every time, so that Mangalore Cricketers and Gori Young Boys, both the teams got a 50-50 opportunity to win this match. Again, Kiran bowling away from us. Left arm. Slash that one. Deepak wanted to get that one right from the middle of the bat, but he couldn't manage to get the timing behind the stroke. Deepak is intentional to go over the top to the cover point and extra cover region, but not quite able to get that one right from the middle of the bat. Short third man region, deep third man region, and scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Here is Kiran again, bowling away from us with a short fine leg, short score leg, short mid wicket, short mid on. Short third man, there is a short cow point, short mid off. There is a long off. The fielders are in the deep. Kiran again. Naufal bowling. Naufal facing Kiran. Again, that ball is well within the reach of the batter, angling over the wicket, but he's bowling left hand, so that a little bit confusion sometime for the right-handed batters to judge the line on that. Good comeback there by Kiran, and 3 without loss of any wicket. Again, lofted that one over the top. There's a fieldsman in the deep long off region, so that he have to settle for the single. And that was a confident looking stroke there from Naufal. Lofted that one into long off region. So just a single here, 4 without loss of any wicket in the over number first in progress. Kiran left arm bowling over the wicket. Deepak again down the leg stump, swinging his bat, going for the single. And Kuresh down at short cover fine field. One more very senior most players playing in this Mangalore Cricketers. One more addition to total, 2 more addition to total, 1+1. And the scoreboard now moves on to 6 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Kiran bowling. This time slashed around beautifully by Naufal, right in the gap towards the deep extra cover boundary, and before the fielder from the deep long off run across towards the left and fields the ball just inside the boundary line. Good work there by the fielder in the deep, and Naufal has got ample time to complete a couple of runs. So with that couple of runs, scoreboard moves on to 8 on the board without loss of any wicket, which is offered there by Kiran to Naufal, and Naufal just going after that delivery of Kiran. This time lovely shot. This time I think is no need to run for that. Naufal after delivers that switch hit,
He just lost his balance, but he quickly realizing that he got a maximum bat onto that over the top of that infield. Boundary to finish the over number first. Productive over for Goryang boys. 12 without loss of any wicket. Up to completion of 1 over. For the latecomers, you're watching match number 2 of final day of this prestigious Yuvaratna Trophy 2022. Already the one team which is qualified for the finals of this prestigious cricket tournament in a Group A, 5-star Adur in a local pool. They came into the finals, has got a place in the final for their wonderful performance throughout the tournament. And now we are into the very, very important and excitement day of cricket of this cricket tournament, the final day of cricket. And 2 top 8 teams are clashing here to get the place in the finals of this prestigious cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2022. So from the far end, start of the over number second, starts with the warm-up delivery of the morning. Yajnesh is the bowler, is introduced from the far end. It starts with the delivery which is going further away down the leg stump. Deepak watching the ball till the last moment. Nothing much to do with the delivery. White call by umpire. This time lofted. Oh my goodness. This is a huge 6. Ball travels out of the park for a maximum. And Deepak got that one right from the middle of the bat. Yajnesh tried to bring the ball from around the legs of Deepak, but Deepak just extending his front foot. Look at that one in the replay. And just extending his front foot and got that one right from the middle of the bat. Look at the way the ball is travels. It's a long way down to Deepak. Wideish long on for a maximum. Score jumped into 19 on the board. Very dangerous batsman as far as the left-hand batsman is concerned in the present cricket. He is one of the very good striker of the ball. When he hits it very firmly. And no question of clearing the ground when he hits the ball right from the middle of the bat. Score jumped into 19 without loss of any wicket. Yajnesh bowling from the far end. Right arm over the wicket down the leg stump. Going to be a wide. One more extra is added to total. Scoreboard moves on to 20 on the board. 20 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. So far, Goryang boys are cruising towards some huge total here. Mangalore cricketers have to put some break on the run rate. 20 valuable runs in this power play overs already. Drives that one. Oh my goodness. Kiran there in the short extra cover region. He just thought that ball is just coming along the ground. But at the time of his try to field that one, ball got a little bit bad bounce. But it's all is a part of cricket. You have to tackle with this. You cannot judge immediately. And that unfortunately ball is going over the head of that fielder down to extra cover region for 4. 24 without loss of any wicket. Without loss of any wicket. A very good start given there by the opening the batters of Deepak and of course and then Naufal. Yajnesh is a very young bowler for the side of Mangalore cricketers, but sometimes the condition of the game, especially when you are having a ball like that, training ball, it's difficult for the bowlers. A little opportunity for the bowlers to settle. But batters definitely dominating. Good comeback there by Yajnesh. Seeing that Deepak is shuffled across the line up to try to swing that one. He bowled that very good line almost in the midland of stump and all on the carpet. And Deepak completely missed out delivery from the bat. Yajnesh balls again. Deepak going for the big expensive drive. Missed it completely. One more dotted delivery. Score remains at 24. Not really bother about that run, that dotted delivery. They got 24 valuable runs. A warm welcome to Lakshmi Narayan Achar, proprietor of Vidyakala Cricket, Vidyakala Furnitures, one who donated the bat for the man of the series. Big hand for
Lakshmi Narayan Achar. One more, the white ball signal by umpire. One more addition to total. Scoreboard moves on to 25 now for without loss of any wicket. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್ ಮಾಲಕರು ವಿದ್ಯಾಕಲಾ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. This time lofted at one, down to deep, long off, protection there is the deep, but he just tried to stop that one. Kiran missed it completely. Boundary coming up here. The runs are coming just like a fast flowing waters of the river here for Goryang boys. 29 on the board now without loss of any wickets. Deepak is on fire. 2 boundaries and 1 6 already came from the bat of Deepak. Yajnesh again, left arm over the wickety balls. This time Deepak gets a single there. Kiran is there in the deep, long off. Region fields the ball. 25 comes up, 30 comes up. 15 runs per hour run rate now for Goryang boys. Completion of over number 2. It's 30 on the board. It's a good score on the board for Goryang boys. The power play over, which is really belongs to Goryang boys, especially the Deepak and Naufal really got a very good start from the bat. And Naufal is batting on 7, and Deepak today is looking very explosive from his bat. Scored already 16 runs with the help of 1 6 and 2 boundaries. Now Mangalore cricketers have to think about the restriction of the runs. If you want to restrict the runs, you have to pick the wickets. You have to break this partnership. And Goryang boys just grabbing the opportunity with that both the hands. First power play overs, especially Deepak hitting some big shots in this particular power play overs. Now fielding restriction is off, and fielding spreading out. And want to see the field set. One fielder in the deep fine leg region for Deepak, one at deep bucket square like Quresh, one at deep long on, and one fielder at deep extra cover and long off and long on. Short fine leg, short mid wicket, short gully, almost in a backward point, short backward point Kiran, and one more Kiran senior at short extra cover division. So Deepak facing. Start up the over number 3. Quite beautifully played that one. Deepak. Deepak looks in a comfortable today, as he was not really having that much of runs from the bat in the last 3 tournaments. But certainly is taking this tournament to come back to form its natural rhythm. And today is looking very much composed, very much focused on his technique, his aggressive frame of mind. But certainly more than anything else, the ball which is used for this particular tournament, pretty hard in the nature. Ball nicely coming to the bat. The batsman like Deepak will going to enjoy whenever we're having that kind of balls to be used in this tournament. Ball name, Naufal is back into pavilion. Yatish got a very important breakthrough of Naufal. The first wicket is back into pavilion of Goryang boys. A partnership of 31 valuable runs are back into pavilion now. Broken by Yatish, just like I mentioned earlier. And after that, very expensive 2 overs. If Mangalore cricketers wanted to back into this game, they have to break this partnership, and Yatish got a very important breakthrough. So Prajwal is a new batsman, came into middle. Yatish to continue from the commentary box and away from us.
Right arm over the wicket balls. This time right behind the line of the ball. Prajwal just opening his face of his bat. Just pushes that one down to short. Backward point region to pick a single. You know exactly Prajwal. The Deepak is there in the other end who can hit some big shots, so that he picked a single and just gives a strike to Deepak now. 32 for the loss of 1 wicket. Yatish bowling round the wicket. Bowls beautifully bowled. Slower one. That was really much better to get some slow balls to the strikers like Deepak and Deepak just mistimed that one, but able to get past that bowler, and he picked up a single for that. With the addition of that single, scoreboard moves on to 33 for the loss of 1 wicket in the over number 3rd in progress. This time is looking for the reverse sweep and missed it completely from the bat, and there's no question of any run at all. 33 for the loss of 1 wicket. Good number of crowds out here in this final day of cricket, the Yuvaratna Trophy 2022, and we were expecting some more crowds for incoming matches. This time lovely delivery there from Yatish. Absolutely perfect one. Slight leg cutter, slightly deviating, and Prajwal played with a wrong line, and slowly that was curving, turning, and the wicket number 2 is back into pavilion. So outstanding over completed there by Yatish. He picked up a wicket in that over. 2 wickets, a valuable wicket. That's slashed that one down to deep cow point region, running hard, looking for the second. But Deepak this time away. Confusion, absolutely confusion between Shivaraj and Deepak for the second run. But at last they managed to take back the decision to come back for the second, rightly so, and throw rightly coming into the hands of wicket keeper. And the scoreboard now moves on to 34 on the board for the loss of 2 wickets. From the far end, Sumit brought into attack, is a very good bowler. Sumit can get some help from this ball, because ball is pretty hard in the nature, so that he can get some extra bounce and extra face. They need to utilize that one. Amit from the far end with a short run up. Wide of the crease, beautifully played that one. That was a technically very sound stroke from Shivaraj, and square off the wicket. He played that one square cut beautifully. And that shows the potential of this man, Shivaraj. One of the most beautiful stroke to watch. Square off the wicket, off the back foot, and cuts that one quite beautifully down to deep backward point region for a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 36 on the board for the loss of 2 wickets. Sumit bowling from the far end. Right arm up wicket going down the leg stump, going to be a wide, quicker one which is tried by Sumit in that occasion. Shivaraj tried to swing that one on the onside region. And there is no chance of any run. Sumit from the far end. Again, this time appeal for leg before wicket. Very confident, but might be the ball is just fractionally that ball outside the line of leg stump. That pitch is outside the line of leg stump, so that umpire Vivek is not interested. Vivek is one more umpire for this the final day of this cricket tournament. And scoreboard now moves on to 38 on the board. 39 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Sumit from the far end. Bounce to Deepak. No need to run for that. Absolutely fantastic reverse sweep from Deepak. Got that one right from the middle of the bat. Fine leg inside the ring.
There's no square leg at all, no chance at all once the ball is beats the infield. And with that Mount Disco jumped into 43 now for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Sumit bowling from the far end. This time again Deepak swinging his bat, not quite getting hold of that one properly. Ball went towards the deep backward square leg region. Just a single for him. Good return coming from the field and in the deep backward square leg region. One more addition to total scoreboard moves on to 44 now for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. So far Goryang boys cruising towards some big total here. Shivraj facing Sumit. This time lofted straight down the ground, as straight as an arrow. One bounce over the rope for 4 runs. That kind of cricketing stroke, the sign of the player who can play in overarm cricket as well, because it's one of the stroke in overarm cricket the batsman used to play regularly. And look at that one, right from the middle of the bat, nothing much effort in these strokes, but just coming into the line of the delivery. Lofted at one, straight down the ground, very straight indeed. And the two fielders, just a spectator watching the ball going over the rough, one bounce. 48 for the loss of 2 wicket. And Goryang boys Gopi looks like they are inching towards, cruising towards some big total. And Mangalore cricketers have to do something special from their bowling if they wanted to restrict Goryang boys from the big total. सही बात आपने कहा सतीश, और निस्संदेह कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही अब बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को गोरियांग बॉयज के बल्लेबाजों पर अंकुश लगा सकती है। ये गेंद इस बीच लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई एक रनों का बहाव इस वक्त जारी है, द फ्लोनेस ऑफ रन्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और एक लंबे स्कोर की ओर इस वक्त बढ़ते हुए गोरियांग बॉयज के बल्लेबाज और गेंदबाज इस वक्त यतीश गेंदबाजी प्रारंभ कर चुके हैं। नई ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार दिस इज एन क्लीन हिट, इट्स अ मैसिव वन स्ट्रेट ऑन द रूफ ऑफ द कमेंटेटर बॉक्स स्टैंड, और ये छक्का, ऐसा कहना पड़ेगा, इस छक्के इस गेंद के उछाल को इस वक्त पहचान लिया था, और गेंद को उछाला इस वक्त विद एक्सक्यूजेड टाइमिंग्स, काफी ऊंचा, काफी ऊंधा, एक लंबा छक्का इस वक्त कमेंटेटर बॉक्स के छत पर आकर गिरते हुए, और इस छक्के के साथ द 50 कम्स अप फॉर गोरियांग बॉयज। रियली दैट वाज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रोक एंड plenty of power behind that stroke at the last moment। और जहां तक सवाल है 6 रनों का, तो 6 रन इस वक्त जुट चुका है दीपक के खाते में। दीपक एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए, और एक बार फिर से तैयार, ताइनात राउंड विकेट, ये गेंद एंड इस बार ऑन साइड पर, और गेंद इस वक्त मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। इस बार लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच गैप चुनते हुए उन्होंने गेंद को उछाला था, और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिलेंगे 4। तो दीपक इस वक्त रनों का बहाव जारी रखते हुए, और स्कोरबोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 59 रनों पर। 59 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। 15 balls just he faced and he scored 34 runs into his credit. What a fantastic piece of batting performance. Next time से बाहर, और इस बीच वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 60 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और इसी रन के बहाव को अगर गोरियांग बॉयज जारी रखता है 7 ओवर तक, तो शायद शतक तक भी वो पहुंच सकता है। और इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ताइनात राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार उछाला है, लेकिन इस बार नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट इट फेल शॉर्ट ऑफ 3 fielders towards long off, not quite mid wicket at the last moment, but luckily for the batsman it fell between the 3 fielders at deep extra cover, और यहां पर दो रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। तो he is moving to 36 now with that couple run, और 16 गेंदों का सिर्फ वो सामना कर चुके हैं, और एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार यतीश की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्क्वायर। तो चौके और छक्कों की यहां पर बौछार लगाते हुए दीपक, और इस बार स्क्वायरली गेंद को खेला था लंबा पर, मिडल ऑफ द बैट कनेक्टेड and dispatched it in a style of a deep mid wicket fence for a huge 6.
68 द स्कोरबोर्ड इज नाउ राइजिंग अप टू, और दीपक पहुंच चुके हैं 42 रन पर, 42 ऑफ जस्ट 17 डिलीवरीज. Again, this time he could be out caught. Just we have to wait and see, and taken comfortably. So it's a curtain for the fantastic innings came from Deepak. 42 of just 18 balls he scored, including 3 massive sixes and 2 boundaries. तो जहां तक का सवाल है, ना सिर्फ उनके टीम के खिलाड़ी इस वक्त संतुष्ट हुए हैं, बल्कि मंगला देवी क्रिकेटर्स के खिलाड़ी भी उनकी इस पारी से संतुष्ट है. यतिराज ने उनका अभिवादन यहां पर किया इस बेहतरीन पारी के लिए, और यहां पर यह तीसरा विकेट गिर चुका है, और दीपक एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद पिवलियन वापस लौटते हुए. 42 ऑफ जस्ट 18 बॉल्स, एंड he done his job, and third wicket loss is 68 for 3. Goring was looking in a commanding situation. तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है. एक और विध्वंसक बल्लेबाज अरशद इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, और यतीश की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार रहा, और यहां पर दाहिना हाथ राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, स्पेक्ट्रा वाइड, 1+1 2 runs now added to their total, 70 for the loss of 3 wicket. Goryang boys are now heading towards a huge total now. तो इस वक्त समस्याएं बढ़ते हुए मंगला देवी क्रिकेटर्स के गेंदबाज के लिए. सिर्फ 5वां ओवर यहां पर प्रगति पर 70 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. ये गेंद चिप किया ऑफ द टोज, एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे. डीप एक्स्ट्रा कवर पर 2 रन. इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं. 72 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. जस्ट a 5th over in progress. In fact, 5 overs completed, and after completion of 5 overs they scored 72 runs for losing 3 wickets, with the average of exactly 14.40 runs per over. Next match, NM Mangalore versus Young Fred Surwa, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और 2 ओवर का खेल यहां पर बाकी, और देखना यह है कि इन बचे हुए 2 ओवर में क्या गोरियंग बॉयज अपने शतक तक पहुंच पाता है या नहीं. 28 रनों की दरकार 100 रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए इस वक्त 12 गेंदें बाकी, और अरशद इस वक्त मौजूद. जब अरशद जैसे आक्रामक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हो तो निस्संदेह यहां पर 100 रन तक पहुंचने की संभावनीयता हो सकती है. और यहां पर देखते हैं इन बचे हुए 12 गेंदों में गोरियंग बॉयज के बल्लेबाज अपने 100 रनों के आंकड़े तक पहुंच पाते हैं या नहीं. तो गेंदबाज टीम फॉर्चून एंड की ओर से अश्विन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एंड इट्स ड्रॉप ब्रिलियंटली जस्ट आउटसाइड द 20-yard सर्कल बाय कुरेश. और इस बीच 1+1 2 runs now added to the total, और कुरेश निस्संदेह यहां पर फिजिकली फिट प्लेयर इस ढलते हुए उम्र में भी, और निस्संदेह यहां पर जिस तरीके से उन्होंने गेंद को रोका था काबिले तारीफ है. शॉर्ट थर्ड बैन पर 74 now for the loss of 3 wickets. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट. ये गेंद चेप किया ह्यूज वन, एंड नो डाउट अबाउट दैट. इन फैक्ट इट्स गॉन ओवर द फेंस आफ्टर टचिंग टू द फील्डर्स हैंड एट लॉन्ग ऑन. और 6 रन इस वक्त जुड़ चुका है शिवराज के बल्ले से. 80 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. छक्के और चौकों की बौछार यहां पर लगाते हुए गोरियंग बॉयज के बल्लेबाज, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद एक बार फिर से स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, एंड दिस टाइम इट कट्स इट ऑफ जस्ट इनसाइड द फेंस. गुड पीस ऑफ वर्क मेड बाय किरण एट लॉन्ग ऑफ. जस्ट अ सिंगल रन. 81 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. 6th over in progress. 10 balls now remaining in their innings. लेग स्टंप से बाहर, इस बार गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ. गेंद पहुंची बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. जस्ट अ सिंगल. गुड पीस ऑफ वर्क. गुड रिटर्न केम स्ट्रेट ओवर द स्टंप्स, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 82 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. तो शिवराज बैक ऑन स्ट्राइक, और अश्विन की गेंदों का सामना करते हैं. बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली गुड वन. जस्ट चेंज ऑफ पेस
बहुत स्लोवर लेग कटर द लास्ट मोमेंट और बल्लेबाज गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहते थे, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर दामोदर के हाथ में। हालांकि विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटकाया, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित था। किंग स्पोर्ट्स पर यह श्रृंखला लाइव टेलीकास्ट इस वक्त की जा रही है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस श्रृंखला का सीधा प्रसारण यहाँ पर देख सकते हैं, जो YouTube पर इस वक्त की जा रही है किंग स्पोर्ट्स द्वारा एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट। ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और गेंद पर उछालने के प्रयास में चूकी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। शिवराज एक बार फिर से सामना करते हुए ये गेंद उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडल गेट। गेंदबाज के हाथों में गेंद पहुंची, बल्ले के भीतरी किनारे पर टकराने के बाद, बल्लेबाज के पैरों पर टकराने के बाद और इसी के साथ ओवर नंबर 6 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 82 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 overs and now just the last over remaining in the innings. Meantime, for the next match, young friends, I request all the players of young friends Urva and NM Mangalore to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. तो किरण ना इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ अपने शतक से 18 रन दूर इस वक्त गोरियंग बॉयज। 18 runs far from the century mark और इस वक्त अरशद अपना बल्ला इस वक्त ठीक कराते हुए विकेट कीपर द्वारा, क्योंकि ऐसा कहना पड़ेगा बल्ला बैट का हैंडल इस वक्त कुछ हद तक ऊपर आ चुका है और उस हैंडल को इस वक्त वो नीचे करते हुए ग्रिप जिसे कहते हैं और हैंडल के ऊपर जो कवर होता है उसे ग्रिप कहते हैं, इलास्टिक कवर। और जहां तक सवाल है इस वक्त रबर का कवर जो होता है और यहां पर उस ग्रिप को ठीक करने के बाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा किरण। पहली गेंद इस बार ह्यूज वन, इट वेंट ऑन द रोड, इन फैक्ट इट्स ए ह्यूज वन और ऐसा कहना पड़ेगा। और गेंद सीधे सामने इस वक्त जा चुकी है एक टिप्पे के बाद होटल के अंदर, मेरे ख्याल से इट वेंट इनसाइड द दुर्गा प्रसाद होटल। तो इस बार जो भी वहां पर कुछ खा रहे होंगे निस्संदेह उन्हें कुछ हद तक परेशानी यहां पर जरूर होगी, जो होटल के अंदर इस वक्त जो उपहार का ग्रहण कर रहे हैं। शायद गेंद उनके पेट पर भी जाकर गिर सकती है, ऐसे कह नहीं सकते। तो अरशद इस वक्त गेंद सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर से लंबा ऑफ पर और गेंद को इस वक्त यहां पर लपक लिया गया है। तो यहां पर निस्संदेह दुर्गा प्रसाद होटल के मालिक जरूर खुश होंगे कि अरशद का विकेट गिर चुका है, लेकिन अगली गेंद पर शायद गेंद फिर से वहां पर जा सकती थी और अरशद इस गेंद पर बच जाते हैं तो निस्संदेह दुर्गा प्रसाद के मालिक अपना शटर डाल देते थे अरशद आउट होने तक। तो यहां पर अरशद का विकेट गिर चुका है और सबसे ज्यादा राहत वहां पर उनके मालिक को यहां पर मिल चुकी है मेरे ख्याल से, और यहां पर चौथा विकेट गिर चुका है। इट्स 88 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड जस्ट नाउ 4 balls remaining in the innings. 4 गेंदें इस वक्त बाकी। Just 12 runs far from their victory. In fact, just 12 runs far from their century mark. इस बार गेंद को ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिड विकेट और रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन मिलेगा ओवर थ्रो, लेकिन बल्लेबाज ने दूसरा रन लेना नहीं चाहा, करना नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद। चिप किया एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस। 1 more 6। और शिवराज का जहां तक सवाल है, वो ऐसे तकनीकी प्लेयर है जो स्ट्रोक्स को एफर्टलेस खेलते हैं और इस स्ट्रोक को आपने देखा होगा, राइट बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल एंड प्लेड दैट वन एफर्टलेसली डाउन टू वाइड लॉन्ग ऑफ फॉर 6 runs। 95 नाउ, 2 balls now left in their innings। किरण की गेंद शिवराज के लिए ड्राइव किया, down the ground, down to long off, not more than a single। 96 now और अंतिम गेंद अब उनकी पारी का यहां पर बाकी। 4 रन चाहिए अपने शतक
के मार्क तक पहुंचने के लिए अंतिम गेंद में, और करना इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद चेप किया लॉन्ग ऑन पर, नॉट क्वाइट मिडली गेट, इन फैक्ट ही गेट्स अ सिंगल, कम बैक फॉर द सेकंड, इन कम्स द थ्रो एंड दिस टाइम जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर सिग्नल। कोई इशारा नहीं तो करना दूसरा रन पूर्ण कर चुके। सो द इनिंग्स इज अप, दे स्टिपुलेटेड ओवर्स completed, 98 for the loss of 4 wicket and 99 the target now for Bangladesh cricketers. So a stupendous task in front of Bangladesh cricketers set by Gori young boys. 99, just one short of 100 they have to score in the stipulated 7 overs, and as far as the asking run rate is concerned, exactly 14.14 runs per over they have to score for victory. 14.14.5 runs per over they have to score for victory, the required run rate for them at this situation. 99 they have to score in the stipulated 7 overs, and their innings now going to starts within just short while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ, जब बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की पारी की शुरुआत यहां पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। So welcome back. Thank you very much, Gopi. And it's really the runs of the mountain of runs in front of Bangladesh cricketers to win the match. Exactly 99 runs required for the victory for Bangladesh cricketers to win this match. And wait to see how well Bangladesh cricketers will going to get this 99. How well they managed to climb this mountain of runs from the far end. Start of the first runs. There's some lovely shot. Yatiraj clearing that one. 1 bounce over the row for 4 runs. He is also one of the best and explosive batsmen as far as the power play is concerned. Yatiraj, if able to talk with his bat, I think they can manage to get that 99. But 1 boundary is not enough. But we have to get some boundaries and sixes in each and every over if they want to win the match for Mangalore cricketers. Yatiraj has got a positive start now with his offered outside the run of off stamp, one of his favorite area and the strongest zone as well down at extra cover and cow point region. He got the boundary then there in that region. Again, a quicker one there from Ansar. You know exactly giving room to Yatiraj. Certainly it's going to be asking for trouble. So that he's just following him. Ball a little bit down the leg stump. Yatiraj managed to get the single here.
And with the single scoreboard now moves on to 5 on the board without loss of any wicket. What an explosive knock which is played by Deepak, scored 42 valuable runs, and afterwards Shivraj is joining the party, scored 22 valuable runs, and Ashad played one massive stroke, just like more than anything else, my friend Gopis enjoyed that 6 when ball is just landed in front of Hotel Durga Mahal, and some entertainment for the cricket lovers from the commentary of Gopi. So 5 without loss of any wicket. Wait and see how Mangalore cricketers will going to get some big strokes here. Meanwhile, Prashant looks like is a new face in the playing 11 of Mangalore cricketers. Looks like he's from ARD, and wait and see how he will going to justify in the place of Mangalore cricketers playing 11. Ansar from the far end, around the wicket, balls outside the line of off stump, try to reach that one, but not really got that one from the bat. Wicketkeeper behind the stump missed it completely. Vivek not missing opportunity to signal as a bye. One more addition to total, 6 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. The monumental, absolutely the mountain of France, one of the highest total score of this particular tournament, Yuvaratna trophy, 98 by Gori Young Boys. This time outside the line of off stump too far. Once Yatiraj wanted to sweep the ball, quickly realizing that ball is just moving away from him, further away, outside the line of off stump, and he just gets his bat away from the line, and wide signal umpire. 7 without loss of any wicket. Ansar balls. This time Yatiraj wanted to sweep that one, intentionally to clear the infield down to the square leg region, but again he missed it completely from the bat. 8 without loss of any wicket. Ansar from the far end. So far it's only one boundary which is came from the bat of Yatiraj in the first delivery of this over, but so far he's bowled very well. Ansar went for the reverse sweep. Prashant missed it completely. Good comeback, absolutely good comeback, and again this time Prashant just looking for improvisation. Even the target is difficult, but he need to try for that, and 1-2 bound big hits can hittable, and if bat sensibly. Ansar Prashant went for a big swing off the bat. Again he missed it completely. Leg by call by umpire. Good comeback there, Ansar. Completion of over number first, chasing the big total of 99 to win this match. The Mangalore cricketers are 9 without loss of any wicket. And that means another 90 runs required for the victory in 6 overs. So a lot of discussion is going on here along with the captain of Gori Young Boys, Karna. Already I mentioned about Karna. We have one flex there in the name of Kedau, the movie flex. The movie which will go into coming soon with the 2 languages, Kannada and Hindi. And Karna will go into act in a leading role in this particular movie that will go into release soon. It's good news here for the cricket lovers. Good news for the Underarm cricket lovers as well. Seeing that one of our favorite cricketer acting in this leading role in the movie Kedau will go into coming soon. And not only the Karna, but Atif of NM Cricketers Mangalore is also acting in this particular movie Kedau, and that film from Pradeep Nayak. So once again I request each and every lovers, this time laughed at Prashant. He just justifying why he is selected for Mangalore cricketers. Ball is landed just over our commentator roof. Magnificent struck from Prashant, picking up the line and land so quickly and right from the middle of the bat, and the ball just landed into the commentator's roof for a huge 6. 15 without loss of any wicket, just like what Arshadis did. The same kind of potential this man has got, the powerfully driven. Shishant got a punishment in the first delivery of the over number 2. Prashant again, right arm over the wicket. This time Prashant drives that one. Shishant balls and Prashant drives that on down deep cow point region for a single.
with that single scoreboard was answer 16 on the board. Entertainment day of cricket, surely, because the nature of the ball and the ball which is used for this particular cricket tournament, the training, which is ball is coming very nicely to the bat. At the same time, the hardness of the ball, it makes the batting paradise, especially in a UCG cricket ground. And again, Mangalore cricketers not really given up. They knows that they can get the big total. They can chase the big total if they keep on batting like this time. Yatiraj lofted down to long on region and one bounce. I think so. I wait for the umpire signal whether the ball is clear the boundary line or not. And fielder then the deep long on is tried his level but to take the catch, but ball is after hitting his hand, and the ball just landed inside the boundary line, gone over the rough, one bounce. So just I want to see in the replay exactly that ball is one bounce over the rough for 4 runs. So Yatiraj is on fire. He's got 2 bounds, second boundary from his bat, 20 without loss of any wicket. Shishant bowling away from us. Right arm over the wicket. Sam chip that one. Ball is in there. Fielder there in the deep extra cover region. Oh, drops the catch. Shivaraj there at the deep extra cover region. Ball is in there for a long time. Got a very good position. Maybe that the rays of sun is hitting his high, so that he couldn't manage to judge the catch. Ball is just hitting his to farm. Then ball is out of his hand. And Yatiraj has got a life. This time, oh, that was a huge one. This is a Yatiraj for you. Oh, my goodness, my word. What a shot there from Yatiraj. This is now standing cricketing stroke here from Yatiraj. The magnificent struck. Little bit down the leg stump. Yatiraj with the full face of the bat. One of the best entertainer once he get going, Yatiraj. He's been a fantastic striker of the ball, especially in front of wicket. Is a kind of batter who can clear any kind of ground. So 28 on the board now. Shishant getting punishment here. Shishant bowls again, now going for the expansive tries, bowled him, clean him up. That's what really happening in cricket. Immediately when the batsman hitting the ball, bowler wanted to bounce back with one good delivery. Yatiraj looking for one big shot, missed it completely. The line is so good in irrigation. Not really. That ball is around the bat of Yatiraj. Little bit is shortening the length and getting a little bit extra turn for that delivery. Yatiraj's innings is comes to an end. I request all the players of NM Cricketers Mangalore, as well as of course NM Cricketers Mangalore, they completed their signature. I request all the players of Young Friends Suruva, kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. So 28 now for the loss of 1 wicket, and 99 is going to be a target. Another 71 more runs required for the victory in 5 overs. So 5 overs, that means 30 balls remaining, 71 runs required for the victory. Definitely it is going to be a huge ask, but not impossible in cricket. Ashad brought into attack. Prashant still there in the middle. Already got 1-6 in the previous over. I wouldn't see what kind of the batting he will going to display in this particular over of Ashad. The left-hand bowler to left-hand batter. Oh, that was a delivery which he wanted to bring from outside the man of leg stump. That ball is really deviating, coming into around the legs of Prashant, but Ashad is not happy with the decision. That ball is turning and beats Prashant outside the line of leg stump. White call by umpire. 29 for the loss of 1 wicket. Prashant tries that run powerfully down to deep long off region. There is a fielder in the deep long off, but ball is running between the 2 fielders. Little bit misunderstanding between deep long off and deep long on fielder. Deepak thought that the Shishant will go into
collects the ball, and Prashant thought that Deepak will go to collect the ball, and because of the misunderstanding between two fielders, ball is passed over the boundary line for 4 runs. With that, boundary scoreboard moves on to 33 now for the loss of 1 wicket. Prashant facing Ashad. Ball him, clean him up, quicker one. Ashad quickly realizing that bowling slow delivery to Prashant, it's definitely going to be asking for trouble. So he bowled a one very good quick delivery in the negation, beaten by the pace, and that ball defeats the bat of Prashant. The wicket number 2 is back into pavilion of Mangalore Devi cricketers. 33 for the loss of 2 wickets. So new batter, slowly walking towards the middle. Dhanush. Wait and see how Dhanush will going to contribute here. Other than Damodar is a new batter. One more very good striker of the ball, Damodar. And Ashad is a successful bowler. Oh, he's fell down, lost his balance, but here is a one more wicket is back into pavilion. Not really bother about even this lost his the balance while delivering the ball wide of the crease, but he got a wicket here. Back to back 2 wickets here for Ashad. That means he's on hat-trick. 33 for the loss of 3 wicket. Mangalore Devi cricketers now looking in trouble. For the next match, I once again request 2 teams, NM Cricketers Mangalore, already they reported here. I request young friends who are players, please complete your signatures as soon as possible for the next match. Kiran, one more senior most player, a very good striker of the ball, especially is a very strong spare of the wicket. He can dominate because just like what the batters of Gori Young Boss did, he can get some big shot. This time look at Ashad here, absolutely surprised the batsman with that quicker delivery there from Ashad. He is a very different kind of bowler, very difficult to judge sometime, mixing up the delivery very well. Here is Ashad again, slower one. Look at that one, appeal for leg before wicket, but in fact is outside the line of off stump. Shuffled across the line, Kiran. That's why that ball suddenly hits him outside the line of off stump. 33 for the loss of 3 wicket. Ashad again. Balls. This time Kiran well behind the line of the delivery. Melvin, one more experienced campaigner for Gori Young Boys, fields the ball down at short mid-off region. Good over there from Ashad. Excellent over. Just a boundary, but he picked up 2 valuable wickets. 3 overs completed. 3 after completion of over number 3. It's a 33 for the loss of 3 wicket. And before the next over will going to commence, it's time to ask Gopi to take over the microphone in our national language. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो जहां तक सवाल है 33 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद, और यहां पर पहले 2 ओवर में बेहतर शुरुआत की थी यतिराज और प्रशांत ने, और उसके बाद यतिराज का विकेट गिरा और प्रशांत का भी विकेट गिरा। 3 विकेट गिर चुके 33 रनों पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। लंबा सफर अभी भी तय करना बाकी। तो 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति, और चौथा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ। नौफल इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। दामोदर इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर किरण, और कुल मिलाकर 66 रन चाहिए। 66 नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 4 ओवर्स।
विद रिक्वायर्ड रन रेट ऑफ एग्जैक्टली 16.5 रन पर ओवर। पहली गेंद यहाँ पर शुरू हो चुकी है और एक रन पहली गेंद पर रन से कोई नहीं बना और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 33 रनों पर, 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार है। ये गेंद दामोदर के लिए उछाला लेकिन नॉट क्वाइट मिलेंगे, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। 34 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर, 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और जहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का, तो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही उन्हें मंजिल तक पहुंचा सकते हैं और उससे भी ज़्यादा बेहतर कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही उन्हें यहाँ पर अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है। और इस बीच गेंदबाज तैयार, नफल फुल टॉस, गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 34 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ मोड़ा, डीप मिड विकेट पर नॉट मोर देन सिंगल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और 2 ओवर में 28 रन प्रदान करने के बाद, पहले 2 ओवर में 28 रन प्रदान करने के बाद एक बेहतरीन वापसी गोरियंग बॉयज के गेंदबाज यहां पर कर चुके हैं। अगली गेंद पैरों के जरिए गेंद को रोका था, हाफ स्टॉप ऑन इस फॉलो थ्रू मेड बाय द बॉलर नफल और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 36 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 5 overs had been bowled and now 63 more runs now they have to score for victory, and in overall calculation it's going to be 4 overs in 3 overs now remaining in their innings. 22 runs exactly per over, the required run rate for them at this situation, and this is an absolutely difficult task. अरशद गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दामोदर सामना करते हुए इस वक्त। इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 37 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। अरशद ये गेंद चूंकि शॉर्ट फाइल की दिशा में, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और अरशद स्वीप करना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट किरण द्वारा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर, 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। Gone for a mighty heave and plumb in front. One more wicket fallen, Damodar departs and now it's 38 for 4. तो नए बल्लेबाज, अत्यंत अनुभवी बल्लेबाज मंगला देवी क्रिकेटर्स की ओर से खुरैश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और इस बीच अरशद की गेंद कुरैश के लिए बेहतर गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा क्योंकि गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। हालांकि विकेट कीपर करना ने गेंद को थ्रो किया था नॉन स्ट्राइक रन पर, लेकिन वहां पर निशाना चूका और गेंद को बैकअप करते हुए गेंदबाज ये गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, गेंद पहुंची गली की दिशा में और यहां पर रन आउट पे चूक चुका है। तो इस बीच अपील करते हुए विकेट कीपर करना कि गेंद कुरैश के हाथों से टकरा कर निकल चुके, लेकिन अंपायर ने कहा कि जी नहीं, सिर्फ बाई है
और इस बार आउट घोषित करते थे, गेंद उनके हाथों से टकराकर निकल चुकी थी और हाथ से टकराकर निकल चुकी थी कहना पड़ेगा। 38 for 5। 5 overs completed, 38 for the loss of 5 wickets. तो 2 ओवर का खेल बाकी और 2 ओवर में चाहिए 61 रन। 61 to get first ball and lost his stumps. One more wicket fallen. 38 for 6 now. Eleven balls now remaining. 61 to get from 11 balls. Almost 11 sixes required in the last 11 deliveries for victory. रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ निकाला, बैकवर्ड थर्ड मैन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक और इस स्ट्रोक के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 42 रनों पर। 42 now, 57 to get now from 10 balls. The last chance now in front of the batsmen of Mangalore Devi cricketers. 10 sixes required in the last 10 deliveries. अगली गेंद चूंकि विकेट कीपर के हाथों में। ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರೆಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ನಿಶಾಂತ್ ಬಾರೆಬೈಲ್ ಇವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ತಂಡದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. इस बीच 1 रन मिला. 43 now for the loss of 6 wicket. नफल चिप गया लंब ऑफ पर, मिड ऑफ पर कहना पड़ेगा. एक और विकेट गिर चुका है. 43 for 7 now. So 43 for 7 now, 7th over in progress, and Gori Young Boys now they are heading towards to their victory. Next one from the bowler again, chip kiya, clean hit and it's gone over the fence. It fell just short of a fence, I think so, and declaration came from umpire, it's a boundary. 47 for 7 now. Good struck came from the bat of Ashwin. In fact, it's a Kiran, the batsman, who hit a boundary. He picked that one and finds the gap as well. और जैसे ही मैंने अश्विन का, किरण ने घूम कर देखा कि जी मैंने ये चौका को लगाया है, आप मेरा नाम लीजिए. तो यहाँ पर तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 47 रनों पर. किरण अच्छे खासे स्ट्रोक्स लगा लेते और एक निचले क्रमांक में एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं. ये गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त खेलना चाहता, नॉट क्वाइट मिड विकेट. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 47 for the loss of 7 wickets. 52 more runs now they have to score for victory in 9 balls. Driven, not quite mid wicket, single in the face of overthrow. 48.
Just 2 balls now remaining, I beg your pardon. And 51 to get from 2 balls. Steer kiya down to gully and gets in a single. 49 now and रन से दूसरा नहीं लेना चाहता है किरण खुद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं उनकी पारी की अंतिम गेंद का इस वक्त सामना करने के लिए 49 for the loss of 7 wickets. The last ball of the match is now coming up. दीपक का किरण के लिए मैच की अंतिम गेंद लेकर तैयार ये गेंद चिप किया लंका पर और ये कैच छूट चुका है 1 रन मिलेगा 50 comes up for Mangaladevi cricketers in the last ball of their innings and they lost the match by 48 runs. So Goryangba scored 98 in 7 overs. Meantime Mangaladevi cricketers scored exactly 50 in the stipulated 7 overs and a comprehensive victory for Goryangba by 48 runs and with that victory they are through to the next round of this competition. Deepak of Korean boys for his explosive knock of 43 runs and on behalf of Deepak, Kiran will go into collect little collection. This is a representation memento. Mangaladevi cricketers, thank you very much to coming here and taking part in this Yuvaratna Trophy 2022 and all the best Kiran for the next tournament. Thank you. Now I request Deepak. Deepak is a man of the match. I request Kishore of Sai Slok will going to present this man of the match award with the t-shirt which is sponsored by Tribal Tattoos for each and every man of the match. Every match is man of the match. So congratulations Deepak for your explosive and wonderful knock of 43 runs, one of the highest individual score of this cricket tournament, and he's got some entertainment for the cricket lovers by playing some enterprising cricketing strokes.
I request Team Sneha Balaga as well as Team Elegant players, please get ready. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಸ್ನೇಹ ಬಲಗ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. At the same time, I request young friends who are the players, kindly request you to complete the signatures as soon as possible. ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಾದ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಕ್ ಓವರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು
ಅಲ್ಲೇ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
So the match starts now between Team Elegant versus Sneha Balaga Kunjatbail. And I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for toss. So news is here from the center that the captain of Team Elegant, after won the toss, he elected to field first. And the match number 4 of the day 3 of Yuvaratna Trophy 2022 is now coming up live exclusively right in front of you within just a short while. Welcome back once again after a break of 1 hour. We are back into this Yuvaratna Trophy 2022, proudly organized by Team Fortune Mangalore in the memory of late power star Punit Rajkumar. And Team Elegant takes on Sneha Balaga Kunjatbail, umpire Vivek, and at Squalag umpire Roland Pinto. The straightaway signal coming from umpire Vivek, and everything is ready here for the first over of the power play. Right arm over the wicket, Jayaram. This time ball is in there. Wicket keeper drops that, but wait for the umpire signal. Umpire, oh, that was a really a sudden chance for the wicket keeper to take the catch. No signal coming from umpire. That means it's going to be a little bit top edge of the bat of Jairam in the negation. Wicket keeper behind the stump, Santosh, is tried his level best to take the catch. Maybe he was a little bit late to react to that catch, so that he couldn't manage to hold that one. And Jairam straight away is got a life in a first delivery of the over number first. Shabir bowling right arm
over the wicket to left-hand batter Karthik. This time outside the line of half-time, too far. So that wide call by umpire. Second run for Sneha Balaga. Kunjat Bail, 2 without loss of any wicket. Shabir again, bowling with a short run up. Right arm over the wicket, he bows. Oh, that was a big wide, but very good take there from Santosh. Excellent take. That was really wide outside the line of half time. 2 for outside the line of half time. And Santosh gathered that one quite beautifully behind the stump. And one more addition to total in the form of extra. 3 without any loss in the over number first in progress. Shabir bowls again, one more wide. He's struggling to get his line and length. 3 wides already in this over for Shabir. So Sneha Balaga getting some runs in extras. 4 without loss of any wicket. 7 overs game. Bowling this time extra bounce. When Karthik went for the extra cover drive, he got a little bit extra bounce. So that wicketkeeper Santosh gathers the ball quite neatly, and there is no chance of any run at all. Karthik bowls. This time drives that one. Karthik drives that one down to deep long on. There is a protection for him in the deep long on. So Karthik have to settle for the single for that. 5 without loss of any wicket in the over number first in progress. Jairam, it's a very experienced, a very good striker of the ball. Facing next delivery, balls. Oh, that was again one more wide. Good piece of fielding there by Riaz, down at short third man. But a good, not really good bowling here from, not at all a good bowling from Shabir in that occasion. So 4th time in this bowl at that wide delivery. 6 without loss of any wicket in the over number first in progress. Shabir bowling from the commentary box, and this time Jairam just giving the direction, just like left-hand batters playing that one, steering that one down to third man region. Good change of line there by Shabir, seeing that Jairam is a free meditated switch it is attempting. So he's just cleverly changing the face, changing the line of the delivery. One more addition, 7 without loss of any wicket in the over number first in progress. So the final day of this prestigious cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2022. Last 2 days, which is Thursday and Friday. The very good game of cricket. Witnessed some excellent performance. And in the Group A, that local group, the team which is qualified for the final, 5-star Adur, under the captaincy of Asif Adur, they came into the finals. And the winner of this Group A and will certainly go into clash for the title, Yuvaratna Trophy 2022 in the final. Beautifully bowled, perfect delivery. So Karthik has no clue in that occasion for that delivery, which is almost around the legs, back into the batsman, and the ball hits the off stump of Karthik. Wicket number first is back into pavilion, and 7 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. I request the batters, new batsman, please come fast. The Bharat is the new batter, so I request the fielding team and both the teams. I requested captain complete your 7 hours quota within 30 minutes. Bharat bowling with the Bharat is a batter. Shabir bowls, and Bharat picked up a single by hitting the ball pretty hard into the ground. Got single down to short extra cover region. Riaz the fieldsman there in the short extra cover region fields the ball. So first over completed, and after completion of first over, Sneha Balaga Kunjat Bail got 8 valuable runs by losing a wicket of Karthik. Is out in the bowling of Shabir. The bowled out, scoring just a single run. And so far, it's a really good going here for Sneha Balaga.
In the first over, they got 8 valuable runs. The second over of the power play will going to start from the Sri Rama Bhajana Mandira end. Riaz, the experienced bowler for the side, will go into ball from the far end. Mid off, short cover point Abhilash, short third man. There is a field span there in the deep extra cover. Mid on, up in the circle, wideish long on, short mid wicket, short square leg, short fine leg. This time they went for a single quickly down to mid on region, and with that single score now scoreboard was on to 9 on the board without for the loss of 1 wicket. Jairam back on strike now. It's going to be a very good contest between Riaz and Jairam. Riaz is a very good bowler. It's a economical bowler for a long time for NM Cricketers Mangalore. He represents Kudroli Young Boys as well, his home team. And in this particular tournament, he representing for Team Elegant. Beautifully bowled, excellent delivery. Chance for a lot. Santosh shying at the stumps, missed the stumps completely, and they got opportunity to come back for the second as well for in the form of overthrow. A very good running between the wicket in the relegation. Santosh, I think if he hits the stumps, that is definitely the opportunity of getting result in his favor. But ball missed the stumps, and opportunity for the batters to come back for the second in the form of overthrow. 11 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Jairam back on strike. Riaz will go into ball next delivery. Going for the big expansive shot there from Jairam, not quite getting hold of that one properly. The intention to go over the top of mid-off fielder, mid-off up in the circle. That's why Jairam not really happy with himself. The line of the delivery pretty good to play such kind of cricketing stroke, but he missed it completely. Riaz balls. This time Jairam played that reverse sweep quite well, but he couldn't manage to get the placement right as a short third man fielder fields the ball. One more addition to total. 12 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Riaz bowling from the far end, right arm over the wicket, he bowls, tries that one quite beautifully right in the gap. Long chase here for the fielder in the extra cover before he's run across towards his right, and ample time for the batters to complete a couple of runs. Very good placement there from the batter Bharat in relegation. Get through between cover point and extra cover, and got a valuable couple of runs. 14 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Riaz balls, drives that one powerfully down to mid short extra cover region. Not enough timing in that stroke there for Bharat. One more over completed. Completion of over number 2. Sneha Balaga, Kunjat Bail are going in a very good run rate. 7.5 runs per over. 15 for the loss of 1 wicket in the over number 2. Of course, of completion of over number 2. 7 overs game, 5 overs remaining. Wait and see, we'll go into ball that third over. The discussion is going on here. Abhilash, not Abhilash, is just a number 8 brought into attack. Nikit to Bharat. Captain Riaz of Team Elegant setting a field here. Team Elegant lost their match in JD Trophy 2022 earlier, which is played at SVS Cricket Ground, Bandwal, against Team Matrix. And in this particular tournament, they came in, of course, needed some positive frame of mind. Not easy to come out from the defeat. Not that much of level of confidence when you are facing a loss. So first delivery, Nikit ball big wide, far away outside the line of off stump. 16 for the loss of 1 wicket. Nikit back to his bowling mark. With a shot on up, right arm over the wicket, he bowls. This ball, lovely delivery, beautifully ball. Chance of run out in the Stone Strikers, and not confident looking
stroke there from Bharat in the delegation. He tried to push that on the offside region. Luckily, that ball is nipped back into the batsman quite sharply, and luckily got a bat onto that. One more addition, 17 for the loss of 1 wicket. Nikhil balls. Again, the big wide, spectre wide, and defeats everyone. Wide plus boundary, 5 gifted runs here for Sneha Balaga, Kunjat Bail. Really, it was a lucky one. Not a good bowling there from Nikit. Bowled a quicker one, faster one. And Riaz started to, Riaz tried to stop that one from his legs. By doing that, I think the ball just defeats his leg and went towards the deep third man boundary for 4 runs. With that boundary score jumped into 22 now for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Everything is going now in a favor of Sneha Balaga, Kunjat Bail. There's some enjoying extras rather than the runs from the bat. Altogether double figure extras out of 22. Now it's a 23. Jairam picked up a single by playing the reverse sweep down to short third man region. 23 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Bharat tries a beautiful stroke down to deep extra cover region, right from the middle of the bat. A little bit off with his offward outside the line of stamp, and Bharat quickly into quickly drives that one down to deep extra cover. One more delightful stroke. 24 for the loss of 1 wicket. Chip that one right beautifully right in the gap. Jairam finds the gap down to deep wideish long off region before the fielder from the deep extra cover and long on. Conwell from deep long off region to run across his left. Ample time for Jairam to get a couple of runs. 26 for the loss of 1 wicket. Runs are coming very freely here for Sneha Balaga, Kunjat Bail. Nikit balls. This time good piece of wicket keeping there by the Santosh, but here is umpire rightly so called that a white. One more extra is added to total. 28 for the loss of 1 wicket. So many extras conceded there by Team Elegant. Highly indisciplined bowling performance. 27, 11 extras out of 27 runs. Just see that, exclude that 11 runs from 27. I think that definitely it's going to be disaster to see that only 16 runs which is came from the bat, and all are extras which is helping opposition team Sneha Balaga to get some good score. Nikit bowling away from us, right arm over the wicket to Jairam. Quicker one, again the wide delivery, good collection behind the stump by Santosh. One more wide. The very good wicket keeper actually, Santosh is very experienced, got a lovely technique of gathering the ball. He's got a very good eye, and the movement of his hands is so good. And here he is again, right arm over the wicket. He bowls, drives that one powerfully, but not quite getting that one. Jairam not really getting the timing behind that stroke, and he picked up a single down to short mid wicket region. 29 for the loss of 1 wicket. Prolonged over there from Nikit so far. The big over in the form of number of deliveries, even in the form of number of runs in this over. It's considering so many runs. Nikit again bowling away from us. Right arm over the wicket, he bowls. This time tries that, and again straight to the hands of Abhilash. Makes up a chance of run out, and Jairam not really responding for that run. I think it's not a mistake of the batsman Bharat, because the pummel, there was a little bit pummel from the fielder at short extra cover. Jairam almost stick with this decision that he will not respond for that run, and it's too late for Bharat, because after he starts his run, came towards an onside again, quickly realizing Jairam is not responding for the run, is going back, and it's too late for him. So Bharat's innings comes to an end. Disappointment. He looks very good in the middle, timing the ball very well, getting some runs as well from his bat. So 3 overs completed after completion of over number 3. It's 29 for the loss of 2 wickets, and now 4 overs remaining in their innings of Team Elegant. A little correction of Kunjat Bail, Sneha Balaga.
Roshni is a new batter. Came into middle, and Jairam is in strikers and over completed. Riaz will going to continue from the far end. No change in bowling from the far. Riaz from the far end. Passing umpire Roland Pinto to Jairam. Jairam reverse sweeping that one. It's quite nicely down to short Tournament region for easy single. 30 comes off here for Kunjat Bail. 34 the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Team Elegant need to restrict some runs in remaining deliveries. Riaz bowling right arm over the wicket. Wicketkeeper fails to collect the ball. By call by umpire. One more addition to the total. Difficult one, especially when the ball is outside the line of leg stem. As far as the wicket keeping is concerned, one of the difficult job to gather the ball outside the line of leg stem. 31 for the loss of 2 wickets. Beautifully balled. Quicker one. Just following the batsman, seeing that Jairam is going for the big shot. He's just following him. Bowled around his legs. Quick incoming delivery there from Riaz. So no addition to total. 31 for the loss of 2 wickets. Riaz, experienced campaigner. Bowling from the far end. Beautifully ball, absolutely perfect one. Looks like he got a little bit outside edge of the bat as well. And wicketkeeper behind the stump, Santosh managed to stop the ball. 31 for the loss of 2 wickets. Riaz so far has been outstanding in this over, keeping Jairam very quiet. Again he went for the reverse ape, appeal for leg before wicket umpire asking Riaz, how can I give you the leg before wicket decision, because you are coming right in front of me. So that for me it's very difficult to judge leg before wicket. And no damage done. Jairam out of the strike. And new batsman Roshni will go into face Roshan. Drives. One more single. Addition to the total. 33 for the loss of 2 wicket. Roshan is off the mark with the single. So over number 4 completed. After completion of over number 4, it's 33 for the loss of 2 wicket. Another 3 overs remaining in their innings, and wait and see how many runs they will go into score in their remaining 3 overs. And before the next over will go into commence, it's time to change in commentary box as well. I once again would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. Welcome, Gopi. धन्यवाद सतीश. So 4 overs completed. The equal battle is now on. 33 for the loss of 2 wicket. और 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ. शबीर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद बेहतर गेंद थी. इस वक्त लगभग गेंद बैक लेग पर टकराई, लेकिन कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और 1 रन का हिसाब. आई थिंक इसको इनसाइड एज ऑन दैट, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. It's 34 for the loss of 2 wicket at the start of the 5th over. In fact, और गेंदबाज शबीर इस बीच एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए. जयराम इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए इस वक्त तैयार. ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहे, विकेट कीपर के पहुंच बाहर, रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन इस बीच मिलेगा बल्लेबाज को. इससे पहले की गेंद को स्वयं शॉर्ट फाइन लेग फील्डर आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड करे. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. तो 35 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. दाइना तो द विकेट रिवर्स शॉट इस वक्त गेंद को खेल दिया डीप कवर पॉइंट की दिशा में. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 36 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस फॉर ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಇವರುಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ತಂಡದ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್.
और जहां तक सवाल है यहाँ पर 37 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका, 2 विकेट के नुकसान पर। पांचवां ओवर यहाँ पर प्रगति पर। गेंदबाज इस वक्त तैयार, शबीर था तो पर विकेट गेंद को चिप किया, गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद जाती हुई लंग ऑफ पर और वहां पर इस कैच को लपक लिया गया है। तो लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे, हालांकि उन्हें कुछ दौड़ जरूर लगानी पड़ी, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी और आखिरकार इस कैच को वो लपकने में सफल। और इसी के साथ ये विकेट नंबर 3 यहां पर गिर चुका है। 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। Next match, the big match is now coming up. Gori Young Boys will take over KFC Kodikal. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो यहाँ पर विकेट गिर चुका है और पांचवा ओवर इस वक्त प्रगति पर और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 37 रनों पर। नए बल्लेबाज हरीश इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए रोशन। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी। जयराम की पारी पिछले गेंद पर समाप्त हो चुकी है। लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा लपक लिए गए 12 रन उन्होंने बनाए। ही स्कोर 12 रन इनटू स्ट्रेट by Jairam. After being playing a good knock, he is backing to pavilion, caught by long off fielder of the bowling of Shabir in the previous delivery. और इस बीच शबीर गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ताइना तो बढ़ता विकेट रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद हवे में लेकिन फील्डर काफी पीछे। गली क्षेत्र पर एक रन बल्लेबाज को मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 5 ओवर्स हैव बीन बॉल्ड। और मैं समझता हूं अंतिम 2 ओवर में एक बेहतर कमबैक कर चुके हैं इस वक्त टीम एलिगेंट के गेंदबाज। तो सिर्फ 8 रन अंतिम 2 ओवर में उन्होंने प्रदान किए और 2 विकेटें भी प्राप्त करने में सफल। और बराबर का संघर्ष यहां पर जारी। 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 5 ओवर्स कंप्लीटेड एंड नाउ इट्स 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। Still 2 overs left in their innings and let's see how many runs they are making in this remaining 2 overs. 2 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं कितने रन और यहाँ पर स्नेहा पलगा कुंजत बैल के बल्लेबाज और जोड़ पाते हैं। अभिलाष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए बाएं हाथ की गेंदबाज इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार रोशन। और ओवर की पहली गेंद लेकर यह गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 39 रनों पर। 39 for the loss of 3 wicket at the start of the 6th over in fact। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार छिप गया है and that isn't a clean hit, it's gone and sticking to the flex of team fortune at long on for 6 runs। That is an outstanding struck, just caught that one right from the middle of the bat and he dispatched it in a style over long on fence for 6 runs। Perfect struck came from the bat of रोशन और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रनों पर। तो ऐसे चंद और करारे स्ट्रोक्स की इस वक्त जरूरत स्नेहा पलगा कुंजत बेल को अपने रन की गति को एक्सेलरेट करने के लिए। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मिलेगा इस बीच। इससे पहले कि लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाता और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 46 रनों पर। इट्स 46 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस फॉर स्नेहा पलगा कुंजत बैल। और अभिलाष इस वक्त तैयार। ऑफ कटर गेंद को हल्के से खेल दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद निकलते हुए कवर पॉइंट पर थोड़ी सी मिस फील्ड और बल्लेबाज इस वक्त दूसरा रन नहीं मिलेगा और यहां पर विकेट गिर चुका है। कम बैक फॉर द अननेसेसरी सेकंड रन एंड बिकॉज ऑफ दैट वन ऑफ देम लॉस्ट हिज विकेट। 47 for 4 now in the over number 6 and the batsman departed is Harish for 1 and now they are 47 for 4 after in the over number 6 in progress।
शाज SH शाज इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर, और जहां तक सवाल है रनों का तो रन्स इस वक्त मिलेंगे एक लेग बाय के रूप में। 48 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि छठा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं रोशन, जो कि काफी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए अभिलाष की गेंदों का सामना करते हुए इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, फील्डर काफी पीछे मौजूद, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। रोशन खुद स्ट्राइक यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं, नॉन स्ट्राइक रन पर रुक चुके हैं, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 49 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 49 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। अभिलाष, ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, absolutely perfect one, much straighter line, and the ball went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and 6 overs has been kept on, and 49 for 4 after completion of 6 overs, and now just the last over remaining in their innings. एक बेहतरीन अंपायरिंग का पैनल इस श्रृंखला के लिए नियुक्त किया गया। श्रीमान रोलैंड पिंटो, जिन्हें 37 वर्षों का तजुर्बा है, इनके सारथ्य में श्रीमान श्रीरज और श्रीमान विवेक अंपायरिंग का किरदार बाखूबी यहाँ पर अदा करते हुए, और निश्चित रूप से यहाँ पर उरुवा क्रिकेट मैदान में जो प्रतिष्ठित श्रृंखला यहाँ पर चल रही है युवरत्ना ट्रॉफी 2022 के नाम पर, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति कर चुके हैं टीम फॉर्च्यून और लेट पावर स्टार, दिवंगत पावर स्टार पुनीत राजकुमार, इनकी मधुर याद में इस श्रृंखला का आयोजन यहां पर किया गया है। और यह श्रृंखला का तीसरे दिन का चौथा मैच यहां पर प्रगति पर, और यह श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करती हुई दाहिना तो ऊपर द विकेट, अगेन चिप गया है, एफर्टलेस एंड इट्स गॉन मेनी माइल्स, इट्स अ बिगी। Have a look at that stroke, absolutely effortless this time. जिस तरीके से गेंद को उछाला था, ऐसा कहना पड़ेगा, गेंद पर सिर्फ बल्ला अड़ाया था और गेंद चल गई विद द विंड, और गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। बेहतरीन छक्का इस वक्त लग चुका है रोशन के बल्ले से, और इस छक्के के साथ वो अपने इरादों को और बुलंद कर चुके। एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार प्रकाश गेंदबाज, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, 1 रन मिलेगा। 56 अब तक 56 रन बन चुके हैं यहाँ पर 4 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर यहाँ पर प्रगति पर प्रकाश रोशन के लिए, काफी आक्रामक इस वक्त नजर आते हुए बल्लेबाज रोशन। यह गेंद एक बार फिर से बेहतर गेंद थी, शॉर्ट मैन पर रियाज ने गेंद को फील्ड कर लिया 20 गज के दायरे के अंदर, लेकिन आई थिंक इट्स गॉट अ बैट ऑन दैट, इट्स आउटसाइड टेक ऑन दैट, एंड सिंगल रन एडेड टू द टोटल in the face of bat, and the scoreboard moving up to 57 for the loss of 4 wicket। जबकि 7वां और अंतिम ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। प्रकाश गेंदबाजी करते हुए गेंद को ड्राइव किया, और इस बार गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर, स्वयं गेंदबाज पहुंचे, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाया। स्कोर बढ़कर इस 1 रन के साथ पहुंच चुका 58 रनों पर। इट्स 58 for the loss of 4 wicket in the over number 7 and the last in progress in their innings। रोशन once again back on strike, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और दाहिना तो ऊपर द विकेट प्रकाश की गेंद रोशन के लिए, आक्रामक स्ट्रोक, दमदार स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा नॉन स्ट्राइक रन पर, लेकिन यहां पर जब तक विकेटों पर निशाना दागते गेंदबाज थ्रो को रिसीव करने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड बढ़कर पहुंच चुका 60 रनों पर। 60 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 2 गेंदें अब बाकी, और जहां तक रोशन का सवाल है 21 रन 21 रनों पर वो इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त सिर्फ 12 गेंदों पर सामना करने के लिए तैयार, कदमों का इस्तेमाल करते हैं, आगे निकले, चार्जिंग डाउन द विकेट एंड लॉफ्टेड दैट वन, आई थिंक इट माइट बीन कट्स ऑफ जस्ट इनसाइड डिफेंस एट लॉन्ग ऑन। इस बार यूजिंग हिज फीट, जिस अंग्रेजी में कहते हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले थे, गेंद को उछाला था। मैं समझता वहां पर मुश्किल सा मौका जरूर था, कोशिश की थी इस वक्त लॉन्ग ऑन फील्डर ने, लेकिन गेंद को वो लपक नहीं पाए, और इस भी 2 रनों का इजाफा। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नॉट कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज प्रकाश तैयार रोशन के लिए, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, विकेट कीपर चुके, और 1 रन का इजाफा, 2 रन का इजाफा, 1 + 1 2 runs now added to the total, and with that couple run the scoreboard is now moving up to 64 for the loss of 4 wicket। Still the last ball remaining, and Roshan is now off the strike। स्ट्राइक लेते हुए शाज, प्रकाश की गेंदों का, यह गेंद अच्छी गेंद, एब्सोल्युटली बेटर वन, एंड loses his wicket in the face of ball in the final delivery of their innings। So the stipulated overs of
Sneha Balaga, Kunjat Bail finished and they finished with 64. They finished well with 54, 64 for the loss of 5 wickets after the completion of 7 overs. And now the target for Team Elegant is 65 in 7 overs. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And let's see, can they reach the target or not. And as far as the required run rate is concerned, exactly 9.30 runs per over. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And let's see, can they reach the target or not. 65 the target for them. And the inning starts within a just short while. Till then, we are taking a short break, and we'll be back right after the short break with myself when the innings of Team Elegant will going to begin right after the short break. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಟಿಕಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Right, 65 the target for Team Elegant, and their innings now going to begin. The first ball of their innings is now coming up. Shot well by Riaz, and he gets an bounty for that. पहली गेंद पर पॉजिटिव स्टार्ट इस वक्त वो कर चुके हैं. गेंद को स्वीप किया था इस वक्त बैकवर्ड स्कोर लेग पर
स्क्वायर लेग फील्डर के बाईं ओर से और गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा की दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतर शॉट और बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुके हैं चौके के जरिए एलिगेंट। जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है एलिगेंट का 65 रनों के लक्ष्य तक का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतर आरंभिक शुरुआत। ये गेंद रियाज के लिए एक बार फिर से दिस टाइम गोइंग फॉर अ मैक्सिमम बाउंड्री एंड अ 6 और रियाज अपने गतकाल के वैभव को यहां पर वापस लाने की पूरी कोशिश में, तो चौका और छक्का यहां पर लगा चुके हैं और अपने इरादों को वो साफ कर चुके हैं कि पावर प्ले का फायदा इस वक्त उन्हें उठाना है। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए जगदीश, तो रियाज इस वक्त 2 गेंदों पर 10 रन बटोर चुके हैं 500 स्ट्राइक रेट की औसत से और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार जगदीश की गेंदों का। देखना है कि जगदीश किस तरीके की गेंदबाजी पर यहां पर करते हैं। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती है, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंद को विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे फील्ड कर लिया और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 10 रन 90 रन से नुकसान के। एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने तो पर विकेट रियाज के लिए ड्राइव किया। इस वक्त मिड ऑन फील्डर को बीट करते हुए गेंद निकल चुकी है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए और यहां पर फील्ड कर सकते थे गेंद को मिड ऑन फील्डर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद से उन्होंने अपनी नजरें हटा ली और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई सीधे सीमा रेखा को पार करके 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 14 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। व्हाट अ स्टार्ट फॉर टीम एलिगेंट। ये गेंद नेक्स्ट स्टेप से स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर। रन नंबर 15th came in this over. And once again the Jagdish, here he comes, right arm over the wicket, bowls Dainat over the wicket, full toss, pull that one and I think it could be he finds the gap as well. It's a big one और यहां पर गेंद अंतिम क्षण में उछाल ली थी और गेंद को जिस तरीके से पुल किया था ऑफ द बैक फुट और ऐसा कहना पड़ेगा फुल पेस ऑफ द बैट और गेंद को पुल कर दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बैकलिफ्ट और गेंद विकेट एरिया पर जा गिरी है इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 21 रन अगेन एंड दिस टाइम ही फाइंड्स द गैप एज वेल। आई थिंक सो नो, इन फैक्ट इट कट्स इट ऑफ जस्ट इनसाइड डिफेंस बाय द फील्डर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। सो फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड। So what a terrific start made by Team Elegant, chasing the victory target of 65. Now Riaz scored 22 runs in the first over and because of that they made absolutely a terrific start. Now 43 runs now they have to score for victory in remaining 6 overs. That means in 36 deliveries and straight away right after 1 over the asking run rate is now coming down to exactly 7.17 runs per over right from 9.30 runs per over at the beginning of their innings. सीधे पारी की शुरुआत में रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए था 9.30 और पहले ओवर के समाप्ति के बाद सीधा वो रन रेट उतरकर आकर इस वक्त रुक चुका है 7.17 रन प्रति ओवर पर और ऑल बिकॉज ऑफ दिस मैन रियाज जो कि पहले ओवर में गेंदबाज की धज्जियां यहां पर उड़ा चुके हैं 22 रन जोड़ चुके हैं और एक बार फिर से स्ट्राइक उनके पास। अंतिम गेंद पर सिंगल उन्होंने लिया था और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार टीम फॉर्च्यून एंड की ओर से पुनीत और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार रहा। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, इस बीच रन से नहीं मिलेंगे और हालांकि नन्ना स्ट्राइक रन के बल्लेबाज ने जो 2 कदम आगे जरूर बढ़ाए थे लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद वहां पर फील्ड की जा चुकी है शॉर्ट विकेट पर रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। पुनीत लंबे रनअप के जरिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त प्रगति पर टीम एलिगेंट की पारी में। दाहिना तो ऊपर द विकेट, यह गेंद रियाज के लिए, इट्स अ बिग हिट, इट वेंट आउट ऑफ द ग्राउंड इन फैक्ट और गेंद सीधे टकरा चुकी है
मैदान के बाहर जो बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, उसके दीवार पर और वापिस मैदान के अंदर आ चुकी है। जो जो खिड़की वहां पर है, उस इमारत के खिड़की यानी ग्लास पर टकराने के बाद गेंद यहां पर वापस आ चुकी है। वो खिड़की के ग्लास पर गेंद टकराई थी, आईने पर, और छक्का इस वक्त जुड़ चुका, लंबा छक्का रियाज के बल्ले से 28 रन और 2800 रन रियाज के खाते में इस वक्त जा चुके हैं। तो इस वक्त वो मैच को जल्द से जल्द समाप्त करने के प्रयत्न में, और इस भी तैयार। पुनीत की गेंद, यह गेंद एक बार फिर से गेंद को उछालना चाहा, लेकिन he just wanted to play that one too early at the last moment. बॉल गेंद आई कुछ हद तक धीमी बाद में बल्ले पर, फलस्वरूप गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और गेंद सीधे फॉलो थ्रू में फील्डर ने गेंदबाज ने गेंद को फील्ड कर लिया। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 28 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए कुल मिलाकर 3 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी हैं, और रन से इस वक्त चाहिए 37। 37 more runs now they have to score for victory in remaining 33 deliveries. रियाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। पुनीत की गेंद उछाला, 1 behind 6 to the fence. So Riyaz looking on fire. 32 now without loss, and all the runs gone in the account of Riyaz. तो एक अतिरिक्त रन है, यानी 31 रन इस वक्त रियाज बना चुके हैं, और यहां पर वो गेंदबाजों पर हावी होते हुए तो रियाज के पास ही स्ट्राइक है, और अब तक नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने एक भी गेंद का सामना नहीं किया है। जो एरिस है, जो कि नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज है, सिर्फ रियाज के स्ट्रोक्स को वो नॉन स्ट्राइकर पर खड़े होकर देखते हुए। और पुनीत एक बार फिर से तैयार, यह गेंद इस बार गेंद को खेला, बाउंड्री। 36 and 35 runs into the account of Riyaz. So what a terrific piece of batting performance. निस्संदेह रियाज की ये बल्लेबाजी उनके गतकाल के वैभव को यहां पर याद दिलाती हुई। एक वक्त ऐसा था जब रियाज गोरी यंग बॉयज का प्रतिनिधित्व किया करते थे, तब ऐसी बल्लेबाजी वो किया करते थे, और यहां पर टीम एलिगेंट में आने के बाद काफी दिनों के बाद वो अपने फॉर्म को रिटेन यहां पर करते हुए एक धुआंधार पारी यहां पर खेलते हुए। और एक बार फिर से पुनीत तैयार, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर चिप किया, नॉट क्वाइट मिडल गेट, ही गेट्स एट लीस्ट सिंगल, इन फैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड बट वोंट गेट इट। 37 नाउ, second over completed. So what a fantastic reply. This is an absolutely outstanding reply. 37 for 1 after 2 overs. 37 without loss after 2 overs. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಫೀಕ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ತಂಡದ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. So back to this game, 37 without loss, 38 more runs now they have to score for victory. 28 in fact more runs now they have to score for victory, and first time the asking run rate is now coming down under 6 runs per over. 5.60 runs per over at this situation, the required run rate for them, and 30 balls remaining in their innings. तो रियाज बैक ऑन स्ट्राइक. अब देखना है कि रियाज के बल्लेबाजी पर अंकुश यहां पर लगाने के लिए गेंदबाज कौन सा अस्त्र यहां पर इस्तेमाल करते हैं. जयराम इस वक्त नए अस्त्र के रूप में इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए रियाज पर अंकुश लगाने के लिए. और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए. और इस बीच पहली गेंद लेकर इस वक्त जयराम तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रियाज इस वक्त सामना करते हुए. तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ उनकी पारी में. ऑफ कटर गेंद, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन दिस टाइम. एक्स्ट्रा क्विकर गेंद इतनी ज्यादा तेजी के साथ अंदर की ओर आई कि रियाज गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए. बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद पहुंची और इस बीच बल्लेबाज को यहां पर रन नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 37 रन बिना किसी नुकसान के. 37 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. एक बार फिर से जयराम की गेंद फुल टॉस, उछाला एंड 6 रन्स.
एक और छक्का, जूसी लॉलीपॉप फुल टॉस और कबूल किया और स्ट्रोक खेलने के बाद इशारों से कहा कि जी शुक्रिया और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर। रियाज पहुंच चुके हैं 42 रनों पर। ही इज बैटिंग ऑन 42 नाउ आउट ऑफ देयर टीम्स टोटल ऑफ 43। और इस बीच गेंदबाज की ये गेंद उछालना चाहा रियाज ने, बेहतर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ रन्स नहीं मिलेंगे। रियाज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान इस वक्त और वो खुद समझ नहीं पाए कि गेंद को वो क्यों कनेक्ट यहां पर नहीं कर पाए और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट मैन पर। बेहतर गेंद थी गेंदबाज जयराम के। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार तैनात ऊपर तक विकेट। ये गेंद इस बार क्लीन हिट एंड वन मोर बिग 48, जस्ट टू शॉर्ट ऑफ 50। और इस बीच तालियों से अभिवादन करते हुए इस वक्त दर्शक और समर्थक टीम एलिगेंट के। 16 बॉल्स जस्टी फेस्ड और यहां पर 2 रन चाहिए सिर्फ 50 रन पूर्ण करने के लिए। ओह गुड वन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, परफेक्ट ऑफ कटर, अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया अंतिम क्षण में और गेंद सीधे एक्स्ट्रा कवर पर इस वक्त फील्ड कर ली गई है। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो रियाज मैं समझता हूं शायद उनके बल्ले में यहां पर दरार आई है। बैट पर क्रैक इस वक्त आया है तो बल्ला इस वक्त बदलने के लिए वो पेविलियन की ओर बढ़ते हुए। So just straight away coming back to the knock of Riyaz और जहां तक सवाल है उनका तो देखिए किस तरीके से उन्होंने स्ट्रोक को लगाया था। चौका छक्का डॉट, चौका छक्का सिंगल, उसके बाद फिर डॉट, फिर छक्का डॉट, 2 चौके, चौका चौका, एक छक्का डॉट छक्का, यानी कुल मिलाकर 18 गेंदों पर 48 रन, 17 गेंदों पर 48 रन। और देखना यह है कि वो इस मैदान पर दूसरा फास्टेस्ट 50, उर्वा क्रिकेट के मैदान में दूसरा फास्टेस्ट 50 यहां पर पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो देखना यह है कि अगली गेंद पर जयराम क्या करते हैं। यह गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, गेंद को इस वक्त लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर फेंकी थी, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ द 50 कम्स अप, 50 विदाउट लॉस एंड रियाज इज नाउ बैटिंग ऑन 48। इस बार लॉन्ग ऑन पर एक रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, ऑफ द स्ट्राइक यहां पर हो चुके हैं। 51 नाउ एंड रियाज इज नाउ मूविंग अप टू 49। और एक बार फिर से रियाज के हाथों में स्ट्राइक का। तो इस वक्त ओवर्स फेंके गए हुए 3, लेकिन ताजुब की बात यह है कि 3 ओवर में एक भी गेंद का सामना आरिस ने नहीं किया है। तो 3 ओवर पूरा रियाज सामना कर चुके हैं और 3 ओवर में 49 रन अपने बल्ले से वो बटोर चुके हैं। 51 रन कुल रन संख्या उनकी टीम का अब दिखाई देता हुआ। अब 14 रन और चाहिए विजय के लिए। ही इज बैटिंग ऑन 49 इन जस्ट 18 डिलीवरीज। तो अब गेंदबाज टीम फॉर्चून एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए हरीश, और देखना यह है कि वो इस ओवर में क्या करते हैं। रियाज फील्डिंग में जमावट का इस वक्त मुआयना यहां पर करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार हरीश की गेंदों का, अपने 19वें गेंद का सामना करने के लिए तैयार। तो इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रियाज के लिए स्टीयर किया, दैट्स इट, 50 कम्स अप फॉर रियाज। और निस्संदेह इस वक्त सारे खिलाड़ी और दर्शक जो मैदान पर मौजूद है तालियों के साथ उनका अभिवादन करते हैं। न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि सामने वाले टीम ऑपोजिशन साइड जो कि स्नेहा बड़ागा कुंजत पेल के जो खिलाड़ी है उन्होंने भी आकर इस वक्त रियाज का अभिवादन किया इस बेहतरीन पारी के लिए। 50 ऑफ जस्ट 19 deliveries, second fastest 50 in this ground in the history of UCG. So 12 गेंदों पर 50 रन संतोष ने बनाते। संतोष पंटवाल का जो रिकॉर्ड है वो इस मैदान पर अभी भी कायम है और रियाज बने दूसरे
अर्धशतकधारी, तेज अर्धशतकधारी इस मैदान पर 19 गेंदों में 50 रन वो पूर्ण कर चुके हैं। ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर खूबसूरती के साथ निकाला, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए रनों की बौछार यहां पर लगाते हैं और पहली गेंद पर आरिस ने गेंद को इस वक्त मोड़ दिया। और ताजुब की बात यह है कि आरिस उनके साथी रियाज का अर्धशतक पूरा होने के बाद उन्हें अपनी पहली गेंद का सामना करने का मौका यहां पर मिला है। 56 अगली गेंद बेहतर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 9 रन चाहिए, 9 टू गेट नाउ इन रिमाइनिंग 3+ ओवर्स। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि एक बार फिर से गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। सिर्फ चौथा ओवर और निस्संदेह एक धमाकेदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए रियाज टीम एलिगेंट के लिए। यह गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त खेल दिया बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल और 57 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के। 57 विदाउट लॉस और रियाज इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक। और देखना यह है कि अगली गेंद पर वो क्या करते हैं, क्या वो करारे स्ट्रोक्स खेलते हैं, क्या सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हैं, देखना पड़ेगा अगली गेंद पर। और इस वक्त गेंदबाज हरीश, ये गेंद रियाज के लिए एंड ही गॉट द रीड ऑफ रियाज नाउ। परफेक्ट ऑफ कटर डिलीवरी एंड एट लास्ट a quick firing knock, absolutely explosive knock came to an end from Riaz, a magnificent knock of 50 runs in just 20 deliveries, and after being done his job he is back into pavilion। और स्नेहा बलगा कुंजत बैल के खिलाड़ी इस वक्त उनको अभिवादन करते हुए और शेक हैंड करते हुए और निस्संदेह वो इस वक्त अपने प्लेयर्स डगआउट की ओर लौटते हुए और उनका स्वागत यहां पर करते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी और टीम एलिगेंट के समर्थक सपोर्टर्स। बेहतरीन पारी। तो पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। 57 for 1 और अब चाहिए 8 रन विजय के लिए, जबकि ओवर्स नंबर 4 यहां पर पूर्ण हो चुका है। तो जिस किसी को भी इस वक्त चने की जरूरत हो, कृपया वो चना चबाएं। इस वक्त हमारे एक काबिल दोस्त जनाब सिद्दीक इस वक्त आपके पास आएंगे चना लेकर, कटले जिसे तुलु या कन्नड़ में कहा जाए। तो उनसे वो आप चने ले लें, लेकिन उससे पहले पैसे दे दें और पैसे देकर चने खरीदें। और कृपया सिद्दीक जी को आप सिद्दीक जी की सहायता करें। Again the lofted down to long off and this time is gone. One more wicket fallen. So 57 for the loss of 2 wicket. तकनीकी तौर पर बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं अभिलाष, जिनका आगमन यहां पर होता हुआ। और यहां पर स्कोर रुक चुका है 57 रनों पर। तो अगला मैच एक बेहतर मैच, वन मोर गुड मैच इज नाउ कमिंग अप राइट आफ्टर दिस मैच। Gori young boys will take over KFC Kodikal in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please get ready for the next match। तो यहां पर 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ताइनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। गेंद अच्छी गेंद थी, पैरों पर टकराई, अपील नकार दिया। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और संतोष थे बल्लेबाज और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 58 रनों पर। 5वां ओवर यहां पर प्रगति पर। 5th ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। अभिलाष सामना करने के लिए तैयार। 17 गेंदें बाकी उनकी पारी में, सिर्फ और सिर्फ 7 रनों की जरूरत। जस्ट 7 रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 17 बॉल्स इन फैक्ट। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाहा और गेंद बल्लेबाज के पहुंच से बाहर, विकेट कीपर के हाथों में। वाइड का इशारा। 59 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज जयराम गेंदबाजी करते हुए, लगभग ओवर पिच गेंद थी, हाफ वाली पर आई, गेंद को इस वक्त ड्राइव कर दिया और गेंद को जब तक फील्ड किया जाता लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था अंतिम क्षण में अभिलाष ने इस बीच और 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 60 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। जस्ट 5 टू गेट नाउ फॉर विक्ट्री इन 16 बॉल्स। ये गेंद ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को स्कूप कर दिया इस वक्त संतोष ने। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है और रियाज जिस तरीके की बल्लेबाजी करके गए हैं
उससे इस वक्त लक्ष्य बिल्कुल आसान यहां पर हो चुका है। सिर्फ 4 रनों की दरकार विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी हैं 14। और ये गेंद परिवर्तन के तौर पर लेग स्पिन गेंद, लेग स्टंप से बाहर, वाइड, 62, 61 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 62 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, इन फैक्ट जस्ट 3 टू गेट। तो अगली गेंद पैरों पर टकराई, विकेट कीपर के हाथों में, अपील को नकार दिया। एक गेंद अभी भी बाकी। अगले मैच में गोरी यंग बॉयज ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है केएफसी कोडिकल के खिलाफ। और यहां पर इस ओवर में अंतिम बार जयराम लेग स्टंप से काफी बाहर, सिंगल हेडेड इन द फेस ऑफ वाइड, 63 नाउ, जस्ट कपल ऑफ रन्स नाउ, दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और इस बीच जयराम अपनी ओर की अंतिम गेंद, इस बार फ्लाइटेड है, गेंद को इस वक्त उछालना चाहा लेकिन गेंद स्पिन होती हुई अंतिम क्षण में लगभग जमीन के सहारे निकली बल्लेबाज के पहुंच से बाहर, और इस बीच रन्स नहीं मिला। ओवर नंबर 5 कंप्लीटेड, इट्स 63 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड नाउ जस्ट 2 रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 2 ओवर्स। So 50 runs scored in 20 deliveries, and this is an absolutely outstanding batting performance from Riaz। और सिर्फ 2 रन चाहिए इस वक्त विजय के लिए, 2 ओवर का खेल यहां पर बाकी। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए यशोधर, 12 गेंदों में सिर्फ 2 रन चाहिए, विजय के द्वार पर इस वक्त खड़ा हुआ टीम एलिगेंट। संतोष सामना इस वक्त करते हुए, क्लोजिंग फील्डर सिलिमिड ऑफ और सिलिमिड ऑन इस वक्त मौजूद है, जबकि शॉर्ट मिड विकेट भी तैनात है। ये गेंद संतोष के लिए, टॉप एज, गेंद पहुंची बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, एक रन मिलेगा और दूसरा रन भी यहां पर मिलेगा। और इन 2 रनों के साथ द कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री केम इन द फेवर ऑफ टीम एलिगेंट बाय 8 विकेट्स विद 11 balls to spare in their innings, and with that victory they are through to the next round of this tournament, defeating Sneha Balaga Kunjatbai by 8 wickets. So a fantastic knock came from Riaz, 50 of just 20 deliveries, and undoubtedly because of that he bagged the man of the match award। और बिना किसी जज के मैं इस वक्त उनको बुलाऊंगा इस वक्त स्टेज पर मैन ऑफ द मैच का खिताब यहां पर स्वीकार करने के लिए। ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ರಿಯಾಜ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದಂತ ರಿಯಾಜ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। And also I request the captain of Sneha Balaga Kunjatbai to please report to the stage immediately to get the memento from our organizer। ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ ಕುಂಜತ್ಬೈಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। So the next match, one more big match is now coming up. Gori Young Boys will take over KFC Kodikal. Gori Young Boys, after won the toss, they elected to field first, and the match starts now with the shot pile. Match number match number 5 of the day is now going to start, and that match starts with the shot pile. Till then, we're taking a short break, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the next match will going to begin with the just short pile. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. So now in presenting memento for the captain of Sneha Balaga Kunjatbail. At the same time I request Riaz of Team Elegant, please come and collect your man of the match award for your explosive knock and first 50 of this cricket tournament.
Riaz, Team Elegant, Captain Riaz, please report here. So here is Riaz, is collecting a man of the match from Prashant Kunjatbail. A wonderful knock and a big hand for Riaz for his explosive knock. One of the best knock of this tournament, scored first 50 of this tournament as well. And what a fantastic knock, and good to see Riaz after a long time is came back to his natural rhythm. The same Riaz you have watched in a previous last 2-3 years, but the same Riaz we are witnessed here in this fantastic Yuvaratna Trophy 2022. Congratulations Riaz for your wonderful knock, and you are just entertaining the cricket lovers for your fantastic knock of 50, and better luck for the next match as well. Now it's going to be a high voltage match. Gori Young Boys takes on KFC Kodikal. Absolutely, it's one more very good matches as well. Both the teams now they're in a really very good track, and some players are in a very good track and they're in a very good rhythm. And seems to be this match is going to be a very exciting match. So wait and see the kind of competition between these two top ranking teams of the South Kenda district. After Young Friends Surva, they out of this competition. Now all the opportunities gate is opened for the teams like Gori Young Boys and KFC Kodikal, NM Cricketers Mangalore may be the favorites now, but Team Elegant once again sending strong message here with the bat of Riaz that we are also in the competition. Please don't neglect us. The Team Elegant is definitely going to be one more team is look out for in this competition of prestigious Yuvaratna Trophy 2022. So from the far end, it's all as always. Ansar will go into start the proceedings, and Tazuddin is on strike. Ansar right now over the wicket. Tazuddin swept that one straight to the hands of square leg. Prajwal there in the right position, but not a good placement here from Tazuddin. Disappointment end here for him. He's not really having a very good season from the bat. So that is a little bit promoted in this particular cricket tournament that he can come back to his natural form. And but again he's a little bit disappointed. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. At the same time, you have to keep that one very down. If you want it to go over the top, you have to put some power in that sweep shot. Not a sweep, not a slog stroke, not a slog sweep shot, but that ball is half-hearted sweep shot coming from the blade of Tazuddin, so that square leg fielder making no mistake at all at square leg. Umpire Roland Pinto shaking hand with Shivaraj because he knows that he is the only one century getter in the Metro Trophy, I think so, with the tournament which is organized by Shivaraj has got 100. It's in a UFC trophy. Yes, UFC trophy. I think Sadiq who got 100 in a Metro Trophy, which is organized by Roland Pinto. So from the far end, Ansar. Bowls this time, chance of got behind. Arshad got the wicket. Arshad got a catch, and Ansar got a two massive wickets here for Ansar in 2 consecutive deliveries. Dream start here for Gori Young Boys. Look like the body language looks to be pretty good here for Gori Young Boys. After they got some senior players back into this playing 11, especially the Shivaraj. Then of course even they lost
service of Suhail Mohammad Billy because he's injured yesterday at Bantwal when he was batting and looks like it a twisted ankle, and even it's injuries for his knee as well. Now even though I think the Shivaraj inclusive of Shivaraj and then Arshad definitely will going to strengthen the batting and bowling department of Gori Young Boys, and looks like they are definitely there in the competition and becomes a favorite along with the KFC Kodikal. That's why I am mentioned this competition going to be very, very interesting. Both the teams has got opportunity, but as like what really happened in the previous match for KFC Kodikal, same thing is happening here in this match as well. 2 wickets fallen without scoring any run. That means Ansar is on hat-trick. Chetan is on strike. Can he become the hat-trick here? Hat-trick getter here. Oh, beautifully bowled, but ball just going down the leg stump. Chance of run out in the non-strikers and well, but no one there to collect the throw from the field. Excellent delivery there from Ansar. Of course, that ball is doing too much. Ball is just doing too much. That ball is just nipped back into the batsman, but a very good shot. But little bit that the ball is shaping towards outside the line of leg stump, and Chetan just survived from that delivery. Beautifully bowled there by Ansar, and everybody thought that when ball is wrapping out his legs, where everyone is gone up, thought it might be a hat-trick here for Ansar, but certainly umpire Shiraj exactly the right decision. That ball is just jagging back too much. And that's why, because of that too much turn in the delivery, that ball just going down the leg stump, just an inches that ball going down the leg stump. Ansar to Shakir, hero of the previous match, facing his first delivery. This time served that one right in the gap down to deep mid-wicket region. Chase here for Karna before he is run back to collect the ball down at the deep mid-wicket region. Ample time here for Shakir to come back for the second run. Coming back to Shakir, what innings is played against Sneha Malamar. Once the match is out of the hand, then he's just came in and delivered one fantastic knock for his team, especially in 1 over against the Gitesh over. It takes the match away from the opposition. Again, the situation asked him to play one more good innings. This time again, the ball a little bit outside the line of leg stump. He wanted to play a big sweep shot and powerful sweep shot in mass. That's not a orthodox sweep shot, but he wanted to put some power in this sweep shot. Maybe the intention is to get that one right from the middle of the and get past that short fine leg division fielder, and there is no contact with the bat. 3 for the loss of 2 wicket. Ansar from the far end. Right arm over the wicket. This time, good piece of fielding there by Naufal. He's a fantastic in that region, short fine leg region. We're always very quick. He saves so many runs in this region at the short fine leg region. Good over there from Ansar after completion of over number first. Shackling start here for KFC Kodikal, managed to get just 4 runs by losing 2 wickets. Now, the bowling department is a little bit worried factor for Gori Young Boys is that they are the main strike bowler, Fayaz. He is already represented for his home team, 5-star Adur, and that's why it's going to be a big blow as far as the bowling department of Gori Young Boys is concerned, as they're not really getting the service of Fayaz, who already played for 5-star Adur, and his team came into the finals of this prestigious Yuvaratna Trophy 2022. So that the change in bowling, the new bowler has been introduced from the commentary box, and just the number exactly the 100. Afrid is the bowler. Afridi bowling from the Afrid, right arm over the wicket bowls. Oh, Spectra! Oh, look at that save there from Nafal. Absolutely fantastic. And round of applause coming from the spectators. Why not? He's saving certain boundary. This is what the kind of commitment I already mentioned in the previous over also when he was fielded that one. He's one of the fantastic fielder in that region. You cannot get better than that. That's what I want to see it in the replay. The effort of that Naufal. Definitely the crowd here is enjoying his fielding effort, and even those who are watching in YouTube channel
King Sports providing this. Definitely they will going to provide a perfect angle where the Naufal is able to stop that boundary, diving to his right, stopping certain boundary. Absolutely, that will going to lift the spirit of other players. Now again, Afraid bowling away from us. Right arm over the wicket to Chetan. And that was a fantastic, absolutely perfect one, quicker one. Chetan just watching the ball. He really surprised that how quickly that ball is came into the hands of wicketkeeper. Maybe sometimes it's a surprise because the new name, the new face, they doesn't know what kind of bowler you are going to face. And definitely that way he got a lot of pace in his bowling. Afraid bowling with a short run up away from us. Right arm over the wicket, he bows reverse sweeping that one straight to the hands of fielder. Chance of run out, a wide throw coming from the fielder Yuvaratna in that occasion. Shakir is a very good runner between the wicket. He's a very good judger of the run as well. Even the ball is went straight to the hands of Yuvaratna, but the fact that Shakir runs very quickly between the wicket and no question of getting out in the form of run out, but certain single here for Chetan and for his team. 7 for the loss of 2 wicket. Every kind of competition we are expecting from these two teams, which is really has got a potential of coming into the next round of this prestigious Yuvaratna Trophy 2022. Afridi bowling away from us. Right arm of the wicket, Shakir drives that one down to deep long on protection there in the deep, so that no question of any extra run. Shakir almost settled that he is definitely going to get only single for that, and that brings Chetan into strike. Now scoreboard moves on to 8 on the board for the loss of 2 wicket in the over number second in progress in fact. Afraid. So far after that he bowled a wide delivery, but he bowled very well after that 2 deliveries. This time again one more wide. This time he's down the leg stump too far. Might be that was a fine surface in bowling crease. It looks like a little bit creating the problem for some bowlers when you're putting your boot in that the place. Might be the ball, the skidding there. And Afraid once again back to his bowling mark with a short run up. Pass umpire Roland Pinto. Right arm over the wicket, beautifully ball. One more very good delivery indeed. Well within the reach of the batter. Chetan going for the expansive extra cover drive, but quickness of the ball beats Chetan. It's a very good striker of the ball, but against the pace of this bowler, certainly it's going to be a very difficult one to go for the extra cover drive. 9 for the loss of 2 wicket. Afraid with a short run up. Balls beautifully bowled, but this time I think impact of the line, but even umpire has got evidence enough that Chetan has got a bat onto that, and he's got a bat onto that, so no question of leg before wicket in relegation, so that Chetan got a single for that. 10 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress. So far he bowled 2 wides, but still he managed to get some good deliveries along with that. Now Shakir back on strike now. Wait and see how the kind of technique he will going to implement. Oh, look at that one. Fantastic delivery there. I think he's a perfect replacement for Fayaz. Gori Young Boys has got a perfect replacement for Fayaz. Just like Fayaz, he's got some rhythm, he's got some pace in his bowling, and line and length is so impressive. Of course, he bowled 2 wides in that over, but still he managed to control the flow of the run of for the opposition. So 2 overs completed, completion of over number 2. KFC Kodikal are 10 for the loss of 2 wicket. They're going exactly at the rate of 5 runs per over. Now, after that power play, it's going to be very interesting to see that the kind of field set, the kind of bowling change, and at the same time, I want to see the kind of technique from these 2 batters to get some runs on the board. Of course, the first 2 overs go belongs to Gori Young Boys. The captain won the toss, elected to field first. Yesterday's JD Trophy 2022 and little disappointment end for Gori Young Boys. They faced the defeat against NM Cricketers Mangalore because of one decision which is definitely going to be becomes very costly. After winning the toss, they elected to field first, and NM Cricketers Mangalore managed to get 40 to 45 runs exactly. At the one stage, Gori Young Boys cruising. They're 17 in 2 overs without losing any wicket. And after that, once the floodlights are on,
and the wickets are started to stumble, and Atif of NM Cricketers Mangalore picked up a hat-trick wicket in that particular match, and then Gori Young Boys of course downfall started in that the match, and they lost the match. But here different condition, different ball game here. This time lofted that one just over the top of the cover point region before the fielder of cover point to run back answer to field the ball in the deep cover point region. Ample time for the batters to complete a couple of runs. Not quite control over that stroke there from Chetan. Of course, intention is to go over the top. He gone over the top, but not really having that much of timing behind the stroke. That's why Ansar managed to complete a couple of runs. Ansar managed to fields the ball just inside the boundary line. Again, looking for the expansive shot, but Chetan not happy with himself because the line is not that much of easy to hit the big shot, because Ashad bowling a sharp incoming delivery for Chetan. This time again, appeal for leg before wicket, but might be that the ball is just going down the leg stump. At the same time, they look at the front foot of Chetan. He's touching his front foot too far, and try to hit the slog sweep shot, and he missed it completely. 12 for the loss of 2 wicket. Ashad from the far end. Right arm wicket tries that one again. Problem continues from the far end as well. Ashad this time is lost his grip and lost his balance as well. Fell down, but no damage done. One more run added to the total. Scoreboard now moves on to 13 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. In our commentary box, changing in a scorer, Ashwin doing the job in place of Swastik as a scorer. Again, a little bit down the leg, some chance of run out in the Karna! What? Really? There's a golden opportunity is missed out. Not in the picture, Chetan. He's just given up. Karna just running to his friend, tried to hit the stump, missed the stumps completely. Chetan survives from the run out. 14 for the loss of 2 wicket. Arshad so far is very bowled, a very quiet over indeed. Chetan is on strike. Reverse sweeping that one quite nicely in the gap, but protection is given for him for the reverse sweep down at deep third man region. So he has to settle for the single. One more good over there from Arshad. Absolutely perfect over. That's the kind of over which is required for Gori Young Boys, but KFC Kodikal struggle continues here to get the runs, to get some big shots. 3 overs is a very quiet over. 14 for the loss of 2 wicket. And now 4 overs remaining in their innings. They got 8 wickets in hand. They got Shakir is in the middle. Chetan is in the middle. 15. 15. A little bit correction in the scoreboard. 15 on the board for the loss of 2 wicket. Now last 4 over remaining. 24 deliveries remaining. And wait and see how much Shakir and Chetan will go into score here. So far Chetan is quiet. Shakir is also quiet. Didn't got enough strikes. Shakir, he got only 5 deliveries out of that 18 deliveries. He scored 5 runs. Coming back to Chetan, he played some deliveries. Got 5 runs from his bat. But now KFC Cortical, certainly they will go into look for acceleration of run rate. Just seeing the batting department of Gori Young Boys, they scored highest total score of this tournament, 98 runs against Mangalore cricketers. Now Afridi going to bowl his second and last over of his quota. Right arm of wicket, improvisation straight to the hands of fielder. Down at short third man region, making no mistake at all. So Chetan's wickets back into pavilion. The wicket number 3, and Gori Young Boys suddenly required the breakthrough here, because both the experienced campaigner, they played an excellent innings in the previous match. Now Chetan, a little bit disappointment and looking for reverse sweep improvisation, and maybe the intention of him is to play that one very fine, down to fine third man region, but not really able to keep it down. Now, good striker up the ball. Nawaz came into middle for KFC Kodikal.
Afraid so far has been an invention in the bowling department of Gori Young Boys, just capitalizing the opportunity which is given to him. The first over is very, very economical. Now he's bowling his second and last over of his quota. Fourth over of the innings of KFC Kodikal. Afraid. Boss Nawaz now tries that and powerfully down to deep long on. I already mentioned he's one of the very good striker of the ball, very good striker of tennis ball, hitting the ball quite nicely. One more addition to total with the addition of that single scoreboard moves on to 16 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. 4 men in the offside, 5 men in the onside here for Shakir. Right arm over the wicket. This time again, wicketkeeper fails to collect the ball, defeats everyone. Ball running out to deep third boundary once again. Excellent piece of fielding there from Naufal. Again, look is how quick he is been. Once that ball defeats the wicketkeeper's hand, ball is ballooning up, went quickly down to short third man. He's in the fine leg region, and look at that how quickly he is going back and fields the ball. Excellent piece of fielding there from Naufal. 17 for the loss of 3 wicket. Afridi bowls. Look at the face in his bowling. Absolutely, he's not giving any chance for the batters to think. Even Naufal has got no clue about that delivery. The fastest one, quicker one. And the batsman just watching the ball goes into the hands of wicketkeeper. 17 for the loss of 3 wicket. From the commentary box and Ashad. Little correction. Misfield there by Yuvaratna. Sometimes it's happening. Maybe he was trying to take that one in the pull. And maybe that ball came into him in a half volley. And so that he couldn't manage to gather the ball neatly. And ball just missing his hand and got a single. Nawaz got a single. Although a little correction. Yes, now. Nawaz got a single. 18 for the loss of 3 wicket. That brings Shakir into strike now. Shakir, very, very important player for the side of KFC Kodikal. Different attitude, different technique we will going to implement. And he's facing next delivery. And good judgment, absolutely good judgment. Seeing that ball is little bit going down the leg stump, just getting himself away from the line. And going down the leg stump, one more outside the line of leg stump. 19 for the loss of 3 wicket. Afridi with a short run up. Buzz umpire Roland Pinto. Right arm over the wicket he bowls. Tries that one. Shakir again down to deep long on. And Captain Karna will not really bother about the single. You know exactly, the Afridi did a great job here. Absolutely great job. I think he's just grabbing the opportunity here, Afridi, being the new face. Opportunity has been given for him to command the ball and bowl beautifully. So 4 overs completed after completion of over number 4. KFC Kodikal searching for the right track, still struggling in the middle in the form of run rate. 20 for the loss of 3 wicket. And Gopi, and again, it's one more very good game. Both the teams suddenly it's a fantastic contest as far as the last day of this cricket tournament is concerned. Both the teams really has got some very good players in the side as well. Gori Young Boys today looking in a different body language. Some senior players coming into that side as well. That will definitely going to galvanize the level of the confidence as well for the players. But so far I think the bowlers did a great job. And especially that the new bowler, Afrid, is just grabbing the opportunity. 2 overs, just 10 runs. And 1 wicket, and outstanding comeback for him in this Gori Young Boys playing 11 squad. बिल्कुल सतीश, टोटली डिफरेंट टीम लग रही है कल से गोरी यंग बॉयज। जो कल बंटवाल में जो टीम थी यहाँ पर अगर देखा जाए उस टीम से कुछ अलग यहाँ पर लग रही है। हालांकि कुछ नए चेहरे यहाँ पर दिखाई देते हुए और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा संतुलित टीम है। जब मंगलादेवी क्रिकेटर्स के खिलाफ उन्होंने 98 रन बनाए थे, इस बार पहली गेंद को उछाला लेकिन काफी ऊंचा और गेंद सीधे सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है। जो तो ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, जिस विकेट की काफी देर से तलाश थी
गोरी यंग बॉयज को वो विकेट यहां पर मिल चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा जूसी लॉलीपॉप गेंद इस गेंद के जरिए बल्लेबाज को ललचाया था कि बल्लेबाज शाकिर आक्रामक स्ट्रोक खेले और इस लालच में वो आ गए, लेकिन गेंद को बिल्कुल कनेक्ट करने में ठीक तरह से वो असफल, काफी ऊंचा उछाला और डीप मिड विकेट पर इस कैच को लपक लिया गया। तो यहां पर शाकिर का विकेट गिर चुका है सतीश। तो मैं समझता हूं ये शाकिर का विकेट का पतन एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक यहां पर साबित हो सकता है KFC कोडिकल के लिए। Exactly, Gopi. In this particular situation, Gopi, it's definitely going to be a big blow because Shakir is a kind of batter who can play a long innings. Of course, so far he's been a little bit struggling to get some runs on the board, especially in the form of boundaries and sixes. He's not really getting some big shot. That's why I think it's a result of the frustration from the batter because he's not really getting some runs from his bat. And he got full toss. That full toss surprised him because he was not expecting the full toss from Ashad. Once the full toss came to him, he just throw his bat, not really looking for the timing of the stroke. That's what's happening here. Sometimes it's happening in cricket, Gopi. You are not getting wicket for the good deliveries. Sometimes if it's a luck in your favor, you will get wicket for the juicy lollipop, juicy full toss delivery as well. And that's happened to Shakir in this occasion. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर गेंद काफी ढीली थी जैसा कि आपने कहा, लेकिन इस ढीली गेंद का फायदा वो नहीं उठा सके और यहाँ पर गेंद को उन्होंने उछाला था, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा थोड़े पहले वो बल्ला अड़ा गया, गेंद थोड़ी बाद में आई और फलस्वरूप गेंद और बल्ले का कोई संपर्क तो हुआ लेकिन ठीक तरह से नहीं और टॉप एज पर गेंद टकराने के बाद हवा में उछली और गेंद सीधे लपक ली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर। तो शाकिर का विकेट यहाँ पर गिर चुका है। इस वक्त शाकिर की उपस्थिति जैसा कि आपने कहा सतीश बेहद जरूरी थी क्योंकि 3 विकेट यहाँ पर गिर चुके थे। शाकिर एक ऐसे बल्लेबाज है जैसा कि आपने फरमाया जो लंबी पारी खेलने की क्षमता यहाँ पर रखते हैं और उनका विकेट का गिरना यहाँ पर KFC कोडिकल के ऊपर KFC कोडिकल की परेशानियों को और बढ़ा चुका है। ये गेंद इस बार गेंद स्टंप्सों पर टकरा कर इस वक्त निकल गई। स्वयं विकेट कीपर करना हैरान रह गए कि वहां पर बेल्स के डिस्टर्ब नहीं हुए और इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बचते हुए। तो बल्लेबाज थे इस वक्त नवाज जो इस गेंद पर बच चुके हैं और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अरशद ये गेंद धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडली गेंद, सिर्फ 1 रन मिलेगा। और निस्संदेह सतीश आपने कहा बिल्कुल आज गोरी यंग बॉयज की देह भाषा बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग लगती हुई। जब उन्होंने मंगलादेवी क्रिकेटर्स के खिलाफ 98 रन बनाए थे तभी समझ में आ गया था कि वो आज अपने श्रेष्ठ लय में है और उस श्रेष्ठ लय को वो यहां पर इस मैच में भी बरकरार रखते हुए फलस्वरूप KFC कोडिकल जैसी बलिष्ठ टीम यहां पर रनों के लिए कड़ा संघर्ष करती हुई। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा हकीम ने, स्क्वायर लेग पर पहुंची गेंद, 1 रन का इजाफा 22 लेकिन ना KFC कोडिकल के पास अभी भी वक्त है बाउंस बैक करने का। बचे हुए 2.2 ओवर में यानी 14 गेंदें बचे हुए, इन 14 गेंदों में कम से कम 30 से 35 रन उनके बल्लेबाज बटोरते हैं तो एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा कर सकते हैं। और यहां पर अगली गेंद के लिए तैयार, गेंद को उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रन पर। कम से कम 50 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा KFC कोडिकल के बल्लेबाजों को अगर उन्हें गोरी यंग बॉयज के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर दबाव डालना है तो कोशिश इस वक्त जरूर कर रहे हैं और बल्लेबाज। और इस बीच ये गेंद अरशद की शफल और गेंद को रोका गया बेहतर तरीके से शॉर्ट फाइन लेग पर नौफल द्वारा। एक बार नौफल बाईं ओर जा चुके थे लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि गेंद उनकी दाईं ओर आ रही है, गेंद को रोक लिया इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 5 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 5 overs completed, 24 for the loss of 4 wicket. The problems are now still continuing here for the batsmen of KFC Kodikal. Still in overall calculation, it's going to be 2 overs left in their innings. और NM Mangalore और टीम एलिगेंट के बीच अगला मैच यहां पर खेला जाएगा। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। तो यहां पर संघर्ष जारी है इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए और गेंदबाज इस वक्त नौफल गेंदबाजी पर उतरते थे। हालांकि सोहेल बिल्ली कल चोटिल हुए थे, कल रात को बंटवाल में जो क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान और यहां पर उनके अनुपस्थिति में गोरी यंग बॉयज यहां पर खेल रही है लेकिन संतुलित टीम यहां पर नजर आती हुई। कुछ नए खिलाड़ियों की
शामिल आती यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ पर अपने काबिलियत क्षमता के अनुसार उनके गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए हकीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं हकीम केएफसी कोडिकल की ओर से। पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, इनफैक्ट नो कॉन्टैक्ट द बैट एंड बॉल एट द लास्ट मोमेंट and a single run added to the total in the face of bye, and with that single run the scoreboard moving up to 25 for the loss of 4 wicket। यहाँ पर एक साझेदारी पार्टनरशिप निभानी है, न सिर्फ तेज साझेदारी बल्कि एक आक्रामक बल्लेबाजी भी यहाँ पर दिखानी है क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों को। और नौफल इस वक्त दाहिना ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए नवाज के लिए ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी अलोंग द कार्पेट, बिल्कुल जमीन के सारे आई ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहता ऑन साइड पर, चूंकि पूरी तरह गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। डॉट गेंद और यहाँ पर हर गेंद के लिए संघर्ष, हर रन के लिए संघर्ष यहां पर करते हुए बल्लेबाज केएफसी कोडिकल के गेंदबाज नौफल एक बार फिर से तैयार। नवाज के लिए यह गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद लेकिन सही गेंद घोषित, कुछ हद तक ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और आखिरकार गेंद इस वक्त फील्ड कर ली गई है विकेट कीपर द्वारा, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। दो बेहतर गेंदें नौफल इस ओवर में फेंक चुके, एक बार फिर से तैयार दाहिना ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को जगह बनाते हुए खेलना चाहा, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, निशान ना चूका वरना निस्संदेह नवाज की पारी पर पर्दा गिर सकता था यहां पर। तो एक रन मिलेगा, 26 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका, 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और यहां पर नौफल कुछ सलाह मशवरा लेते हुए इस वक्त विकेट कीपर अरशद से, जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी है अरशद, इस वक्त वो विकेट कीपिंग करते हुए। और नौफल एक बार फिर से तैयार दाहिना ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, गेंद पहुंची शॉट फाइनल की दिशा में, अरशद के हाथों में गेंद, लेकिन वहां पर जब तक अरशद गेंद को कलेक्ट कर रहे हैं बल्लेबाज के पास मौका था एक रन तेजी के साथ पूरा करने का। 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। तो एक गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी है और गेंदबाज इस बीच तैयार दाहिना ओवर द विकेट, चिप किया, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, एक बार फिर से नवाज द्वारा। और इस बीच नवाज को मिला सिर्फ एक रन और एक बेहतर ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। नौफल की 5 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 overs, and still the batsmen of KFC Kodikal are now searching for the right track. Last over now remaining in the rings, and let's see how many runs they are making in this remaining last over with the help of 6 wickets. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो देखना यह कि इस अंतिम ओवर में कौन से गेंदबाज यहां पर गेंदबाजी शुरू करते हैं। और गेंदबाजी पर इस वक्त लगाया जा रहा है अंसार, जो कि इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। एक और प्रमुख गेंदबाज गोरी यंग बॉयज की ओर से मोर्चे पर इस वक्त लगाए जाते हुए टीम फॉर्च्यून एंड की ओर से। तो ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार नवाज इस वक्त सामना करते हुए। और इस अंतिम ओवर में जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है केएफसी कोडिकल के लिए, तो कुछ करारे स्ट्रोक्स इस वक्त उन्हें लगाने ही होंगे जो चौके या छक्के के रूप में परिवर्तित हो। और यहां पर देखते हैं इस अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तो ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार अंसार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज नौफल इस बार नवाज के लिए गेंद को उछाल दिया लंबोल पर और गेंद सीधे स्ट्रेट हिट एरिया पर एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट स्मैश बैक just over the bowler's head, finds the gap as well between long off and long on into the straight hit area at long on fence for a boundary। तो चौका इस वक्त जुड़ चुका है नवाज और केएफसी कोडिकल के खाते में। और इसी तरीके के चंद और स्ट्रोक्स की इस वक्त जरूरत है केएफसी कोडिकल को अपने रन की गति को इस वक्त एक्सेलरेट करने के लिए। गेंदबाज अंसार स्ट्रेट अवे इस वक्त दबाव उन पर। यह गेंद इस बार फिर से एक बार हेलीकॉप्टर शॉट खेला लेकिन नॉट क्वाइट मिडली गेंद, गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर, गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया। और इससे पहले की गेंद को वो फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 33 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और जहां तक
सवाल है इस श्रृंखला का। तो तृतीय क्वार्टर फाइनल मैच इस श्रृंखला का यहाँ पर खेला जाता हुआ गोरी यंग बॉयज और केएफसी कोडिकल के दरमियान। दाहिना तो ओवर द विकेट अंसार की गेंद हकीम के लिए ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्कोर लेकर डीप मिड विकेट के बीच 4 रनों के लिए। गेंद लेग स्टंप से बाहर थी और ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करते समय उनके एक हाथ से बल्ला जरूर फिसल गया कुछ हद तक, लेकिन गेंद को सही तरीके से कनेक्ट करने में सफल और गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो रन से चाहिए इस वक्त केएफसी कोडिकल को इस अंतिम ओवर में, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और इस बीच 3 गेंदों में 2 चौका इस वक्त प्रदान कर चुके हैं अंसार। एक बार फिर से तैयार, बेहतर गेंद थी एब्सोल्यूट लॉन्ग द कार्पेट, शॉर्ट बैन पर 1 रन मिलेगा और हकीम इस वक्त दौड़े काफी धीमी गति से, लेकिन अंतिम क्षण में 1 रन पूरा करने में सफल बाई के रूप में। 38 नाउ, जस्ट कपल ऑफ बॉल्स नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स, सिर्फ 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। और इस बीच नवाज स्ट्राइक पर आ चुके हैं, अंसार की गेंदों का सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस बार नवाज के लिए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, फील्डर वहां पर कोई नहीं, शॉर्ट फाइन लेग से फील्डर छोड़ कर आए, गेंद तक जब तक पहुंचे वो थ्रो करें। विकेट कीपर के हाथों में चतुर सोच के साथ इंटेलिजेंट थिंकिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, बल्लेबाज ने 2 रन यहां पर बटोर लिए और स्ट्रोक के साथ ही दौड़ पड़े थे। अंतिम क्षण में लेग बाई जो कि पैर पर टकराकर गेंद निकली थी इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, और जैसे ही बल्लेबाज ने भापा की वहां पर कोई फील्डर नहीं है, तेजी के साथ पहला रन पूर्ण किया और दूसरा रन पूर्ण यहां पर कर चुके हैं। तो अंतिम गेंद द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप, 40 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और अंसार तैयार नवाज के लिए, दाहिना हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी एब्सोल्युटली गुड वन, डॉट बॉल टू एंड द ओवर। शायद इस उम्मीद के साथ उन्होंने गेंद को छोड़ी थी कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा तक ऑप्शन से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। सही गेंद, बेहतर गेंद और बेहतर गेंद के साथ अंसार अपने ओवर की समाप्ति कर चुके हैं। सो द इनिंग्स इज अप, द स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड एंड दे फिनिश्ड विद 40 फॉर द लॉस ऑफ 4 wickets in the stipulated 7 overs, and now the target for Gori Young Boys is 41. Just under 6 runs per over they have to score for victory. That means in exactly calculation it's going to be 5.85 runs per over they have to score for victory. They have to score 41 runs in the stipulated 42 deliveries with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और कुल मिलाकर अब देखना यह कि बल्लेबाज गोरी यंग बॉयज के इस लक्ष्य तक पहुंच पाते या नहीं। तो सतीश निस्संदेह अंतिम ओवर बेहतर रहा जिसमें 13 रन बने, 2 चौके अंतिम ओवर में लगे और उस ओवर की बदौलत एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा कर चुका है। और ऐसा कहना पड़ेगा केएफसी कोडिकल के पास ना सिर्फ बल्लेबाजी में गहराई है बल्कि सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप भी है और वो अपने क्षमता के अनुसार पहले ओवर से ही गेंदबाजी करते हैं। तो निस्संदेह गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव आ सकता है, लेकिन जहां तक गोरी यंग बॉयज का सवाल है मैं कहूंगा गोरी यंग बॉयज के पास भी सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है और अपने क्षमता के अनुसार राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उनके सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं, पावर प्ले का फायदा उठाते हैं। तो निस्संदेह यहाँ पर केएफसी कोडिकल के बल्लेबाज गेंदबाजों के ऊपर दबाव आ सकता है। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये द्वितीय सत्र यहाँ पर एक बेहतर रोचक होगा। यहाँ पर क्यों सतीश, आप क्या कहना चाहेंगे? Exactly, Gopi. Why not? Just you're mentioning about the last over, productive over, and because of that 13 runs which is came from that last over, and KFC Kodigal captain must be satisfied with that. At last they managed to get some fighting total, not a winning total. This is a fighting total. Seeing the nature of the ball and seeing the informed batsmen of Gori Young Boys, the previous match, Deepak scored 43 valuable runs, and here you have to get 41. And that 141 one individually scored by Deepak. And that shows the batting strength of Gori Young Boys, Gopi. But it's not happening in every matches. You have to see which opposition they're going to play. And of course, against Mangalore cricketers, Deepak played a very good explosive knock. The 2 very good knocks all together in this particular day. One explosive knock. One came from Deepak, the 43 runs, and another one Riaz of Team Elegant scored a 50, and 2 excellent knocks which came from very good batters. Now 41 to get in stipulated 42 deliveries, just under 6 runs per over required run rate here for Gori Young Boys. And I think Gopi KFC Kodigal, and once again it is testing time for the bowlers, how well they manage to defend, because we can see that it's a batting paradise.
It's not a bowling paradise. This is a batting paradise. The batters are dominated most rather than the bowlers. But there is some help for the bowlers as well if they able to exploit the condition. Exploiting the condition means ball is hard in the nature. Ball nicely coming to the bat as well. But at the same time, the quicker bowler, one who can bowl very quickly, then they can create the problem for the batsmen as well. So that's what really required the bowlers of KFC Kodikkal. They have to get some wickets in early. They have to get some wicket early breakthrough. At the same time, they have to get some economical overs. Shakir, I think, is the perfect start for KFC Kodikkal to start with the first over of the power play. But this is not a good start. Let's start with a wide delivery outside the line of off stump. Wide signal by umpire, and Gori Young Boys started their journey. I request Team Elegant as well as captain of NM Cricketers Mangalore to sign the official chart as soon as possible. This time Difak looking for the expansive drive, not quite getting hold of that one properly, because line of the delivery outside the line of off stump. His intention to play that one down to deep, wide-ish long on, but he mistimed that one, so that he able to get the single. 2 without loss of any wicket in the over number first in progress. Shakir just watching the field set. Right arm over the wicket he bowls. They beautifully bowled half volley, but not in that half volley means it's a difficult half volley. Almost in a Yorker length. Line is outside the line of off stump, and batter completely missed that one. Now fall. This time full toss delivery. Lofted that one into the stage. What a shot! Just a full toss, what we are talking about earlier, Gopi. The same full toss, Shakir misjudged and just got out. And same Shakir is bowling here. He bowled a full toss, but now fall taking a full advantage of that delivery. Maybe Gopi, I think, is just looking for the quicker delivery. While doing that, ball is not really able to keep it down. This time now fall lofted, but there is a fieldsman there next to cover. Shakir is back with the wicket. This is the potential of some good bowlers. Immediately after he got a punishment, very next ball he got a wicket. This is the beauty of cricketers. This is the beauty of Shakir as well. He is a kind of the player who can bounce back at any time. But I think, Gopi, it's not a wicket-taking delivery. Outside the line of off stump, it's width is offered, but placement is not right. He can play that on a little bit square down to cover point, backward point as well. But he's choosing one of the fielder outside the circle. There is only 2 fielders. He's choosing one fielder out of that. बिल्कुल सतीश, उतना कुछ खास बेहतर गेंद नहीं था. गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही था. ऐसा करना पड़ा कि गेंद तक पहुंचे थे. जस्ट लीनिंग फॉर दैट. और गेंद तक पहुंचकर उन्होंने गेंद को इस वक्त उछाला था, लेकिन प्लेसमेंट गलत था. और मैं समझता हूं शाकिर ने इंटेलिजेंट थिंकिंग के साथ ये गेंदबाजी की थी. वहां पर फील्डर तैनात किया था वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान, और गेंद को ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर फेंकी थी कि नौफल उस लालच में आ जाए. और नौफल जो कि उस लालच में आ गए, गेंद पर उन्होंने स्ट्रोक खेला जरूर, लेकिन प्लेसमेंट गलत था और वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर गेंद को लपक लिया गया. तो यही खासियत है शाकिर की. वो एक न सिर्फ एक चतुर बल्लेबाज के रूप में माने जाते हैं, बल्कि चतुर गेंदबाज के रूप में भी वो जाने जाते हैं, और इसका उदाहरण उन्होंने इस गेंद पर दिया. Exactly, Gopi is a very intelligent cricketer. This time a shot lofted, gone, and is gone into the fence. Now it's going to be entertainment for the cricket lovers. Arshad is joining the party. Immediately his partner is back into pavilion, and now Arshad joining the party, hitting 1-6, and score jumped into 14 for the loss of 1 wicket. Again Shakir bowls. Arshad wanted to repeat that one. 1-6 and 1 catch. 1-6 and 1 catch. 2 wickets for Shakir, 2 sixes for Gori Young Boys, and scoreboard moves on to 14 for the loss of 2 wickets. Outstanding cricket going on here, Gopi. But I think Gori Young Boys not really bothered about that 2 wickets, because he knows that they got 14 valuable runs. Once they got start here, they can be really the favorite of winning this match. बिल्कुल सतीश, छक्का विकेट, तो 2 छक्के 2 विकेटें गिर चुके हैं. और जैसा कि आपने फरमाया, 2 विकेटें जरूर गिर चुके हैं नौफल और अरशद के रूप में, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है. 14 रन वहां पर बन चुके हैं, और उन 2 छक्कों के लिए अरशद को 200 रुपए मिलेंगे और नौफल को 200 रुपए मिलेंगे. क्रिकेट के सबसे बड़े फैन श्रीमान नंदन कुलशेखर इनकी ओर से, जो कि उन्होंने इनाम घोषित किया है 200 रुपए हर छक्के के लिए नौफल और अरशद को. तो आपका
हृदयपूर्वक अभिवादन करते हैं और आपका प्रोत्साहन भविष्य में ऐसे ही मिलते रहे खिलाड़ियों को। तो यहाँ पर सतीश 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और मैं समझता हूँ एक बेहतर शुरुआत पहले ओवर में 2 विकेट खोने के बावजूद गोरी यंग बॉयज कर चुका है। Exactly, Gopi. Coming back to Nandan Kulshekar, hope he will going to announce some cash prizes for commentators as well in future. Wait and see. 14 for the loss of 2 wicket, and yes, Gopi, the 14 runs is definitely going to be a good start here for Gori Young Boys. They lost the wicket. Shakir picked up 2 valuable wickets, but in this condition, the more than the wicket, I think it is a small format of games. Now Gori Young Boys can be favorite because the sensible, now just a sensible batting required here for Gori Young Boys to win the match. But at the same time, KFC Kodikal, they have to pick the wicket. They have to pick the wicket. At the same time, they have to bowl some economical overs. Chetan from the far end, bowling right arm over the wicket. Ball to Yuvaratna. Yuvaratna just try to whip that one on the onside region, but ball just passing between his bat and pad, just under the bat, I must say. That ball is passed and there is no possibility of any run. 14 for the loss of 2 wicket. Another 27 more runs required for the victory. This is over number 2 in progress. That means 35 deliveries remaining to get that 27 runs to win this 27 runs to win this match. This time a top edge ball is in there, but safely landed after one bounce collected by the deep backward square leg region fielder. So that and Chetan is not happy with the fielder. He's just thinking about why not he is not trying for the catch. Of course, when the situation like this, you have to try for the catch, but I don't think it's that much of easy for the fielder in the deep backward square leg to run front and take the catch. 15 for the loss of 2 wicket. Now Deepak back on strike now. This is the second and last over of the power play. Chetan is on attack. Batsman is on strike outside the run of half time. Very good delivery indeed. Very good line indeed. Without moving his feet, Deepak wanted to reach that one outside the run of half time. Just to follow that line, missed it completely. Wicketkeeper behind the stump, and there is no chance of any run. Much required dotted delivery from Chetan in this over from the far end. And is bowling right arm around the wicket. He bowls this time, slashed that one again, got outside edge of the bat. Good piece of fielding there by the Nawaz, because on fielder is coming right across him, but still he managed to get the ball from his hand, tried to make a run out, but no one was done. 16 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd in progress. A lot of fans, lot of followers for both the teams. Gori Young Boys, of course, one more very popular team. They got a lot of fans. Even KFC Kodikal as well. They're in a very good winning track in this particular season. As Chetan bounds right arm over the wicket to Yuvaratna. Drives that are not quite intended, as he wanted to play that one down to extra cover region. Because of that missed timing, he got a single down to deep long on. But it's not a question of how the runs are coming, but it's very important for Gori Young Boys to need to rotate the strike. And look at the Gopi, absolutely fantastic to see that crowd here. It was a really jam-packed, isn't it? Everywhere you can see that crowd enjoying the game of cricket. That's the beauty of UCG cricket ground. Each and every time where there was a one prestigious cricket tournament, they're backing up with a big number. 17 for the loss of 2 wicket. Chetan from the far end, right arm. Balls nicely driven right in the gap. Long chase here for the fields. Rashmit running back, and before he collects that one down to deep extra cover region, ample time for Deepak to complete that couple of runs. No need to panic, no need to hurry at all here for Gori Young Boys. They got enough run the first over, so that now it's 19. 5 runs came from that over, Gopi. It's 19 for the loss of 2 wicket. Now 5 overs remaining, 30 balls remaining. Out of 30, they have to get 22 runs to win this match. What do you think, Gopi? It's having that kind of hard nature in the ball. Less than ball run is required. Just 22 to required from 30 deliveries. I think Gori Young Boys might be there in a driver's seat of winning this match. But one thing is sure is, Gopi, KFC Kodikal dealing with some excellent winning track in this particular season. So that I think Gori Young Boys, maybe they are in a driver's seat of winning this match, but they cannot underestimate this 22 against a team like KFC Kodikal. बिल्कुल सतीश, इस ऋतु में KFC कोडिकल का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, खासकर इस मैदान में। और मैं समझता हूं इस वक्त तख्ता जरूर भारी लगता हुआ गोरी यंग बॉयज का 22 रन बनाने, और गेंद का स्वभाव जो सख्त गेंद, स्टिफ गेंद इस श्रृंखला में इस्तेमाल की गई है,
इस स्टीव केन के नेचर को देखते हुए ये कहना जरूरी है कि ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पर लक्ष्य ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और केएफसी कोडिकल के पास कुछ सशक्त गेंदबाज और भी है जो मैच का पिक्चर यहाँ पर बदल सकते हैं और गोरी अफगाज को बिल्कुल चौकन्ने भरी बल्लेबाजी यहाँ पर करनी होगी। Absolutely, Gopi. That's a very good move there by the captain of KFC Kodigal to ask this, the wicket-taking bowler. Ashwit didn't got an opportunity to bowl in the previous matches, but this time I think he's certainly required. The gamble have to play in this particular match, and captain of KFC Kodigal brought this man Ashwit into attack now. Second time in this right arm. Wicket lofted that one, but straight to the hands of a deep mid wicket. Now, Gopi, it looks like the gamble is working out. Just like I mentioned earlier, you cannot underestimate KFC Kodikal. They got the potential of bouncing back. Shivaraj, nothing much wrong with the stroke, Gopi, because the flighted delivery, maybe that was one of the weapon of Ashwath. Quite deliberately is given some flight into that delivery, inviting Shivaraj to go for the big shot. Shivaraj just taking the invitation from that bowler, hit that one. Placement is not right. At the same time, I think maybe in the afternoon getting that distance is going to be very difficult in UCG cricket ground. बिल्कुल सतीश, यही तो अश्वित की खासियत है। गेंदबाज को वो ललचाते हैं गेंद को फ्लाइट टॉस करने के बाद कि वो आक्रामक स्ट्रोक खेले, और यहाँ पर इस लालच में आ गए थे शिवराज। गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन अगेंस्ट द विंड और खासकर ऑन साइड पर उर्वा क्रिकेट मैदान पर दोपहर के वक्त स्ट्रोक खेलना, ऑन साइड पर स्ट्रोक्स खेलना कुछ हद तक कठिन होता है क्योंकि गेंद ऑपोजिट डायरेक्शन पर आती है, विरुद्ध दिशा से आती है। अगेंस्ट द विंड आपको स्ट्रोक खेलना पड़ता है, तो यहाँ पर गेंद अपने रफ्तार को खोती हुई डीप मिड विकेट पर लपक ली गई। और मैं समझता हूँ शिवराज को ऐसे स्ट्रोक खेलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 30 गेंदों पर 22 रन बनाने, यहाँ पर सेंसिबल क्रिकेट अपनानी थी, लेकिन अश्वित की दाद देनी होगी कि उन्होंने शिवराज को ललचाया और उनका विकेट यहाँ पर प्राप्त किया। Absolutely, Gopi, and that definitely that Shivaraj's wicket is going to be a big wicket because he's a very cool customer, isn't it? The perfect player in a perfect position when there is only rotation of strike is required for Gori young boys. But I think it's a very good breakthrough here for KFC Kodikal. There's a lofted, juicy one. Oh my goodness! Only thing to say here for Deepak is thank you very much, Ashwit, for that short pitch delivery. What a great shot! But I think it's a poor delivery. That was absolutely short pitch. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर देखिए इतना समय था बल्लेबाज को कि वो स्ट्रोक थ्रो खेल सके। इस बार गेंद को उन्होंने डाला था, लेकिन बल्लेबाज के पास काफी समय था कि अपने आप को संभाल सके और गेंद को खेल सके डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस बार उसी तरह का स्ट्रोक दोहराना चाहता, लेकिन गेंद के धीमेपन को देखते हुए अपने स्ट्रोक्स को यहाँ पर रोक लिया। तो पहला विकेट गिरा था छक्के के बाद, दूसरा विकेट गिरा छक्के के बाद, और तीसरा विकेट गिरा और उसके बाद छक्का इस वक्त लग चुका है। तो यहां पर छक्के और विकेट का नाता है इस मैच में सतीश। Absolutely, Gopi. Very good statistics in that occasion. And one more run in the form of extra, in the form of wide, and with that addition of that single scoreboard was on 27 for the loss of 3 wicket. Lovely delivery. That was really required from Ashwit. Beautifully bowled. Slide with the leg cutter in the occasion. Deviation for him. And Samraz, the batsman, missed it completely. 200 rupees for Deepak once again from Nandan Kulshekar. And this time chipped that one quite beautifully by Samraz, quite deliberately. Exactly. Fielder is in the edge of the boundary line. The safe stroke to play. Down to deep long off. One more good over going in favor of Gori young boys, chasing 41 to win this match. And 3 overs completed. 28 for the loss of 3 wicket. And meanwhile, I request 2 teams, NM Cricketers Mangalore as well as Team Elegant, kindly request you to complete the formalities of signatures and please complete the tossing ceremony as well. Now, 4 overs remaining. 24 deliveries remaining, and out of 24 deliveries they have to get another 13 runs to win this match. 13 runs required from 24 deliveries. Now it looks like the Gori young boys, they are in a driver's seat of winning this match. But cricket, just like my friend Gopi is mentioning about, cricket is game of glorious uncertainty. We cannot say anything in cricket.
Now umpire, after looking at the bat of Samras, maybe is asking to change your bat. Samras. So yes, he wanted to change his bat. He's going towards the pavilion. And coming back to these two teams, especially whenever it came this particular matches, that was understandable why this number of crowds gathered here. They knows that the Goryang boys, one of the top performer, even KFC Kodikal, and after winning the STC trophy earlier in the season, they won, and they won UFC RRP Memorial Trophy, World Cup of Underarm cricket, and even they won the Sauharda Trophy at Krishnapur, having that much of titles behind them. Maybe they came into this tournament and this particular match is a favorite, but crowd gathered here because by seeing the performance of Goryang boys in the first match, where they batted, where they got into this tournament, started the tournament with a big number of runs, 98. They knows that this is not an easy afternoon lunch for KFC Kodikal. They knows that this is going to be the good match in front of them, and that's why this number of crowds are witnessing this match between Goryang boys and KFC Kodikal. बिल्कुल सतीश, हालांकि केएफसी कोडिकल में 3 बेहतर खिताब इस श्रृंखला में जरूर जीते जैसा कि आपने कहा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की बल्लेबाजी बांग्लादेवी क्रिकेटर्स के खिलाफ गोरियांग बॉयज के बल्लेबाजों ने की थी, 98 रन बनाए थे, तो उसके बाद लोगों को लगा, प्रेक्षकों को लगा कि गोरियांग बॉयज में आज उनकी टीम में कुछ है, तो इस वजह से क्यों ना इस मैच को मुआयना किया जाए। और मैदान पर देखिए किस तरीके से खचाखच यहाँ पर प्रेक्षक भरे हुए हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए गोरियांग बॉयज के बल्लेबाज। Absolutely, Gopi. Maybe that little bit disappointment here for KFC Kodikal, the followers. But match is not yet over. 29 for the loss of 3 wickets and 12 runs required for the victory. And Tazuddin, and after a long time, he's got an opportunity to bowl and experiment here from the captain of KFC Kodikal. Need to be, because they needed the wicket rather than going for the economical over. I think the only one chance here for KFC Kodikal to pick the wickets of Goryang boys. But Goryang boys, now it's both the batsmen quickly realizing that no need to panic at all, and they're just studied the innings and rotating the strike here. And keeping the wickets in hand is so important here for Goryang boys. From the far end, right arm over the wicket, Tazuddin bowls this time. Oh, ball him, clean him up. Again, just like we mentioned about, sometimes it's very difficult to get the wicket for the good delivery. This is not that much of good delivery to take the wicket, but I think Samraz himself played with the wrong line, and maybe that ball after deflecting his legs and hits the stumps. Wicket number 4 is back into pavilion. Will it going to be the turning point of this match, Gopi? I don't think, but still there's 6 wickets in hand. Karna walking towards the middle, and coming back to Karna, I think in these days is not only is become a popular in cricket, but even in the field of movie as well. And it's very good to see that he's playing a major role in a film called Kidao. And here's one more interesting announcement. If Karna will go into hit 6 to that banner, the Kedao banner, where he was acting in this, he will get 500 rupees, which is announced by Kishore of okay, Naveen and Kishore announcing 500 each. That means 1,000 rupees. But now he's in striker's end. You have to come towards that hand if you wanted to hit the wickets. Wait and see. Can hit the reverse stroke. He's a very specialist in a reverse stroke as well. This time up that one, waits and field. Good piece of fielding. Absolutely good fielding there for Nawaz. Just like what Naufalis did for Goryang boys. The same kind of effort there from Nawaz in the short fine leg division. With that single, scoreboard moves on to 31 for the loss of 4 wickets. Now 10 more runs required for the victory. And Goryang boys looking in a commanding position. They're definitely there in a winning track, but cricket, everybody knows this is a funny game. From the far end, Tazuddin searching for the wickets. Round the wicket he bows. This time reverse saving that one, rocketing towards the fence. The moment that ball left the bat of Deepak, look at that ball. Went like a tracer bullet. Score jumped into 35 for the loss of 4 wickets. Deepak is in hurry. Just 6 runs required for the victory.
Nandan Kulshekar is very quiet now because only boundaries came and expecting 100 rupees because he gave 200 for 6. At least half of that required for the boundary. Oh, beautifully bowled. Absolutely good one. Defeating the defense of Deepak in the second. Extra turn here for Tazuddin. So over number 4 completed, chasing 41 to win the match. Gori Young Boys absolutely they are in the top. 35, that means Gopi 6 runs required for the victory. And they got 3 overs to spare. They got 6 wickets in hand. What do you think? सोचने की कोई बात नहीं है, आईने की तरह साफ है यहाँ पर। 6 रन चाहिए 3 ओवर्स में, और ऐसा कहना पड़ेगा जहां तक केएफसी कोडिकल का सवाल है सतीश, यहाँ पर उन्हें चमत्कारी गेंदबाजी ही अब उन्हें इस मैच में वापस ला सकते हैं। लेकिन मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, और जहां तक सवाल है 6 रनों का, तो एक घातक गेंदबाजी अगर यहां पर केएफसी कोडिकल के गेंदबाज करते हैं तो निस्संदेह वो यहां पर इस मैच में वापस आ सकते हैं। लेकिन संभावनीयता सिर्फ 5%, 95% गोरी यंगबाज के पक्ष में है। Exactly, Gopi Karna trying for the 6 to his banner, but this time he getting a boundary. No, yes, he got a boundary now. Still the opportunity is there to hit the plex of Kedau. And he got a boundary for that, 39. Now 2 runs required for the victory. Suddenly Karna will go to aim that 1,000 rupees, more than that the flex. And here is again the full toss. He hammers, but missed that banner, and he finished the match in a style. The ball is went little bit squarer. Once he hoisting it over, it looks like ball is will going to hit this banner, but ball missed it a long way. And 45 comprehensive victory of Gori Young Boys, defeating one of the defender. Okay, one of the favorite of coming to the finals of the prestigious cricket tournament, KFC Kodikal, out of the tournament, and Gori Young Boys are definitely they got a comprehensive victory. Congratulations, Gori Young Boys, for your wonderful performance. So now it's time to announce a man of the match of this the match. So man of the match goes to Arshad of Gori Young Boys for his excellent 2 overs, conceded 7 runs and picked up 1 wicket. And the economy is definitely going to be fantastic of Arshad. 3.5 runs per hour is run rate economy he conceded. So I request Arshad of Gori Young Boys, please come and collect your man of the match award. I request Prabhakar, President of Sahi Slok, will going to present man of the match. At the same time, I request KFC Kodikal captain, please report here to collect your memento from our organizer for the representation for this Yuvaratna Trophy 2022. At the same time, Nandan Kulshekar will going to present the cash prize, those who are hit the sixes of Gori Young Boys, one of the big follower of Underarm cricket and big fan of Gori Young Boys as well, Nandan Kulshekar.
already given. So thank you very much, Nandan Kulshekar, for your support for the players. Now Ashad will going to collect a man of the match award for his wonderful display of bowling. So big hand for Ashad, and got 1 6 as well, and got 1 wicket and bowled 2 very good overs. At the same time, I request KFC Kodikal, captain of Sai Slok, for the representation. Hard luck, Chetan. Winning and losing is part of cricket. Today, I think, is a day which belongs to Gauri young boys, and everything is going in their favor. 45 for the loss of a little correction. Next match, NM Cricketers Mangalore takes on Team Elegant. One more good match coming up. We'll take a short break. After a short break, Gopi will going to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಡುಪ, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಡುಪ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. Dhanyawad Satish. So the last quarter-final match of this competition is now going to begin between Team Elegant versus NM Mangalore. One more good match is now coming up. So NM Mangalore, after won the toss, they elected to field first, and because of that, the openers of टीम एलिगेंट आर द क्रीज. रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज हैं इस वक्त मुजीब. दाहिना हाथ ओवर द विकेट. पहली गेंद स्वीप करना चाहा, चूंकि एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में. जहां तक रियाज का सवाल है, पिछले मैच में कुंजत बैल क्रिकेटर्स के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर 50 रन झड़े थे, तो उस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त चाहिए अगर टीम एलिगेंट को उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है. तो ये गेंद बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, मुजीब की ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच इस श्रृंखला का यहां पर शुरू हो चुका है एनएम बैंगलोर और टीम एलिगेंट के बीच में, और इस मैच की विजेता टीम अगले मैच में द्वितीय सेमीफाइनल मैच में गोरी यंग बॉयज का मुकाबला करेगी. और देखते हैं इस मैच में कौन विजय दर्ज करता है यहां पर. तो इस बीच अंपायर विकेटों को सही करने के बाद यहां पर अपने स्थान पर लौट चुके हैं. मुजीब 2 बेहतर गेंदों को फेंकने के बाद अपनी तीसरी गेंद लेकर तैयार. ये गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त रियाज ने. मिड विकेट की दिशा में 1 रन मिलेगा. क्लीन कलेक्शन और थ्रो पहुंचता हुआ स्ट्राइकर एंड पर, और इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन पर, यानी रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है टीम एलिगेंट के लिए. और मुजीब इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए. एरिस इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई. पावर प्ले यहां पर जारी, और बाएं हाथ के बल्लेबाज एरिस इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. मुजीब
एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, दाहिने हाथ के बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप पर आती हुई गेंद पैरों पर गेंद टकराई थी, बैक टू द बॉलर की दिशा में आई, अपील जरूर लेकिन नकार दिया अंपायर सीरज ने, क्योंकि गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती थी और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की जरूरत यहाँ पर टीम एलिगेंट को, जिस तरह की शुरुआत उन्होंने की थी रियाज की बदौलत पिछले मैच में कुंजत बैल क्रिकेटर्स के खिलाफ, उसी तरीके की शुरुआत की इस वक्त जरूरत यहाँ पर अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होना है तो दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, थोड़ी सी मिसफील्ड के बाद फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 2 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, पहला ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है और मुजीब एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, रियाज इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक और रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है दाहिने हाथ की गेंदबाज मुजीब की गेंदों का और मुजीब दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस चिप किया है लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर थे उन्होंने कोई गलती नहीं की, ऐसा कहना पड़ेगा, ऑफ द टॉस गेंद को चिप किया था, मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी और गेंद को उन्होंने स्कूप जरूर किया लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और सही तरीके की तरकीब यहां पर अपनाई गेंदबाज मुजीब ने, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर को उन्होंने तैनात किया था और मिडल लेग स्टंप पर गेंद को फेंकी थी और इस लालच में आते हुए कटर ने इस गेंद को, इस वक्त रियाज ने इस गेंद को स्कूप किया था ऑफ द टॉस लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर इस कैच को फील्डर द्वारा लपक लिया गया। तो पहला विकेट यहां पर गिर चुका है और पहला सफल ओवर मुजीब का यहां पर समाप्त हो चुका है। सिर्फ 2 रन इस ओवर में उन्होंने प्रदान किए, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन उन्होंने प्रदान किए पहले ओवर में और सतीश निस्संदेह रियाज का विकेट गिर चुका है। रियाज से काफी उम्मीदें थी, जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने कुंजत बेल क्रिकेटर्स के खिलाफ पिछले मैच में किया था, इस मैच में भी वो उस तरीके की बल्लेबाज की उम्मीद थी लेकिन यहां पर उनका विकेट गिर चुका है और अब ऐसा कहना पड़ेगा इस विकेट के पतन के साथ रियाज का जो विकेट गिर चुका है, परेशानियां इस वक्त कुछ हद तक बढ़ चुकी है टीम एलिगेंट के लिए। Exactly, Gopi. It's a big wicket, a wicket of Riaz, because the way he batted in the previous match is definitely played some enterprising cricketing stroke. He just entertained the crowds here, and the expectation is very high from Riaz, and that's the only reason, because maybe Gopi he couldn't manage to handle the pressure, because once he gets runs in your bat, then the expectation is very high from your teammates, your fans, and you are the fans of the followers as well. So handling that pressure is so important, Gopi. In that particular dismissal, we can see that he wanted to get some big shot, but couldn't manage to get what he wanted to be. But against NM Cricketers Mangalore bowling department, Gopi, against the bowling of Mujib, it certainly is going to be asking for trouble to going for the big shot, and he faced the penalty for that. बिल्कुल मुजीब जैसे गेंदबाज के खिलाफ स्ट्रोक्स खेलना, करारे स्ट्रोक्स खेलना उतना आसान नहीं है और पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर इसका उदाहरण हमने देखा, रियाज का विकेट वहां पर गिरा और यहां पर अब रियाज का विकेट गिर जाने के बाद जो दबाव यहां पर क्रिएट हो चुका है, निर्माण हो चुका है टीम एलिगेंट के ऊपर, देखना यह है कि क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज संतोष और एरिस मिलकर उस दबाव को किस तरह हटा पाते हैं। और इस बीच गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं रियाज, पहली गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की और उन्होंने गेंद को फेंकी थी ऑफ स्टंप से काफी बाहर की और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार संतोष के लिए, रिवर्स शॉट गेंद को खेला, शॉर्ट थर्ड पर गेंद का इंतजार करते हुए फील्डर, और जब तक वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन यहां पर प्राप्त करने का। 5 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। एक साझेदारी पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त जरूरत है टीम एलिगेंट को। इस वक्त रियाज का विकेट गिर जाने के बाद ये गेंद रियाज की गेंद बेहतर थी, इस वक्त स्ट्रेटर गेंद थी, स्ट्रेटर लाइन के साथ आई थी और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूकी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एरिस इस वक्त एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार रियाज की गेंदों के एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए रियाज अपनी अगली गेंद लेकर तैयार था। इन राउंड द विकेट, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह चुके विकेट कीपर चुके और गेंद जब तक शॉर्ट मिड विकेट पर स्वयं गेंदबाज द्वारा फील्ड हो बाई के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, एक धीमी प्रगति यहां पर करता हुआ टीम एलिगेंट टॉस हारने के बाद एनएम मैंगलोर के खिलाफ पहले बल्लेबाजी पर उतराता हुआ 6 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। संतोष इस वक्त तैयार रियाज की गेंदों का सामना करने के लिए दाहिने तो ऊपर विकेट, ये गेंद आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा प्लम्ब इन फ्रंट और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है।
गेंद उनके बैक लेग पर टकराई, लाइन पर टिप्पा खाए, मिडिल स्टंप को केंद्रीकृत कर आते हुए और अंपायर विवेक को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। सही निर्णय और इसी के साथ दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और अब ऐसा कहना पड़ेगा टीम एलिगेंट आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल। तो जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो यह श्रृंखला जो कि टीम फॉर्चून ने इस श्रृंखला की प्रस्तुति की है, युवरत्ना ट्रॉफी 2022 के नाम पर दिवंगत पावर स्टार पुनीत राजकुमार जो कि एक नामी हस्ती है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में, कन्नड़ा फिल्म इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक जाने जाते हैं, उनकी स्मृति में, उनकी याद में इस श्रृंखला का आयोजन यहां पर किया गया है। और निस्संदेह यह श्रृंखला का आज तीसरा और अंतिम दिन और चतुर्थ क्वार्टर फाइनल मैच इस श्रृंखला का यहां पर प्रगति पर टीम एलिगेंट और इस श्रृंखला के चौथे सेमीफाइनलिस्ट के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है टीम एलिगेंट और एनएम मैंगलोर के बीच में। तो इस बीच गेंदबाज रियाज गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। आदिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और आदिल दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद अच्छी एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, अंतिम क्षण में गेंद की तेजी को भापते हुए गेंद को इस वक्त रोकना चाहा लेकिन रोक नहीं पाए, विकेट कीपर भी गेंद को समझ नहीं पाए और गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार सफल होते हुए गेंद कौन साइड पर स्कूप करना चाहा था लेकिन चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। और इसी के साथ एक और बेहतर ओवर अगर एनएम मैंगलोर के पॉइंट ऑफ व्यू या अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ 4 रन प्रदान किए रियाज ने और 2 ओवर की समाप्ति के बाद ऐसा कहना पड़ेगा टीम एलिगेंट अभी भी अपनी सही राह को तराशता हुआ। इट्स 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। तो जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, दिवंगत पावर स्टार पुनीत राजकुमार की मधुर याद में इस श्रृंखला का आयोजन किया गया है। और जहां तक पुनीत राजकुमार के बारे में कहा जाए तो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने 1976 में बिट्टद हु जो कन्नड़ा मूवी जो थी उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड राष्ट्रीय पुरस्कार उन्होंने अर्जित किया था। और एक मधुर गाना भी उसमें आता है, बिस्ले इरली मले बरली काडली मेडली अलेवे। तो ये गाना उस 70वें दशक के उत्तरार्ध में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की थी और उसके बाद कई बेहतर फिल्में उन्होंने की थी, जैसे वसंत गीता 1977 चलिसुव मोडगळु, फिर उसके बाद 2 नक्षत्रगळु और ऐसा कहना पड़ेगा यारिवनु द सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जिसके बारे में पहले भी 2 दिन पहले जिक्र कर चुका था, फीचरिंग श्रीनाथ एंड सरोजा देवी। उस फिल्म में उन्होंने काम किया था। उनके साथ पुनीत राजकुमार एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट जिन्होंने एक बेहतरीन अभिनय उन्होंने दिया था। और इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद पहुंची सिलिमिट ऑफ और ऑफ कोर्स उस बेहतरीन फिल्म को कौन भूल सकता है, भूमि के बंदा भगवंता, जिसमें लोकेश ने नायक के तौर पर बतौर नायक के रूप में काम किया था, जिसमें श्री कृष्ण का पात्र बाल कृष्ण का जो किरदार था वो पुनीत राजकुमार ने निभाया था। और उसके बाद उन्होंने कमबैक किया था अपने 15वें या 16वें वर्ष में उनके पिताजी के साथ डॉक्टर राजकुमार परशुरामा, तब उनकी उम्र थी 15 या 16 साल, तो कमबैक किया था उन्होंने। और उसके बाद अचानक 10-12 वर्ष उन्होंने संन्यास ले लिया और वंस अगेन ही मेड अ कमबैक एज अ हीरो इन अपू व्हिच वाज रिलीज्ड इन 2001 और 2002 आई थिंक सो। और उसके बाद बेहतरीन फिल्मों का सिलसिला वो जारी रखते हुए गए, बेहतरीन फिल्में देते गए और कन्नड़ा फिल्म इतिहास के एक बेहतरीन कलाकारों में से जाने गए और इस बार कलाकारों में से एक जाने गए और इस बार इनको खेला था सिलिंग मिड ऑफ पर एक्स्ट्रा कवर पर। निस्संदेह बतौर नायक बतौर हीरो अगर कहा जाए तो अरसु बेहतर फिल्म थी उनके, उसके बाद मिलाना वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन और उसके बाद कई बेहतर फिल्में आई जैसे परमात्मा कहना पड़ेगा और पृथ्वी आईपीएस, इट वाज बेस्ड ऑन द बल्लारी गणिगारी के उसके ऊपर जो फिल्म निर्भर थी, रियलिटी बेस्ड, तो बेहतर फिल्म थी। इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती और गेंद पहुंची सीधे शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एंड ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मूवी चक्रव्यूह, वाइड का इशारा
तो इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार, ड्राइव किया इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। तो उनकी अंतिम फिल्म थी पुनीत राजकुमार की युवरत्ना, तो उस फिल्म के नाम के ऊपर इस श्रृंखला का खिताब का नाम भी रखा गया है, युवरत्ना ट्रॉफी 2022। सिर्फ एक फिल्म अब उनकी रिलीज होनी बाकी है, जेम्स, और वो फिल्म शायद ये महीने के अंत में या फिर अप्रैल में रिलीज होगी। तो हम बेसब्री से इंतजार करेंगे उस फिल्म का। और मैं सर्व सिनी प्रेमियों, क्रीड़ा प्रेमियों से दरख्वास्त करता कि उस फिल्म का वो वीक्षण करें थिएटर्स में। तो यहां पर गेंद को खेल दिया, कवर पर गेंद पहुंची और यहां पर ये विकेट गिर चुका है। 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट के नुकसान पर 11 रन। और यहां पर द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर द बैट्समैन ऑफ टीम एलिगेंट। तो इस वक्त ऑन ट्रैक, राइट ऑन द ट्रैक, राइट ऑन टारगेट कहना पड़ेगा गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज एनएम मैंगलोर के। और जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, तो एक और बेहतर बल्लेबाज, तकनीकी तौर पर बेहतर अभिलाष इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। और जो कमी इस वक्त नजर आ रही है साझेदारी की, देखना यह है कि अभिलाष क्रीज पर मौजूद एक और बल्लेबाज आदिल के साथ मिलकर क्या वो कमी को मिटा पाते हैं, क्या वो कमी को पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, मुजीब एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए। और इस वक्त तो गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज आदिल, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो दाहिने हाथ ओवर द विकेट, मुजीब गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए क्रीज के कोने से गेंद ड्राइव किया, इस पर स्क्वायर ऑफ द विकेट इनटू द गैप, 1 रन मिलेगा। इस बार गेंद का पीछा करते हुए आतिफ, शायद जब तक वो गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। और ऐसा कहना पड़ेगा अभी भी रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए टीम एलिगेंट के बल्लेबाज। तो मुजीब इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी से गेंदबाजी के रणतंत्र के बारे में, और वो इस वक्त एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिलाष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, मच स्ट्रेट लाइन एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर। 1 more successful over in NM Bangalore's point of view came to an end. 3 overs completed, it's 12 for the loss of 3 wicket. And now still the batsmen of Team Elegant searching for the right track. 12 for the loss of 3 wickets after completion of 3 overs. तो 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और चौथा ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार आतिफ। और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज आदिल के लिए। और आतिफ का जहां तक सवाल है, पिछले रात जो गोरियंग बॉयज के खिलाफ मैच खेला गया था, क्वार्टर फाइनल मैच, उसमें आतिफ ने हैट्रिक विकेट प्राप्त करते हुए गोरियंग बॉयज को पराभव किया था उनकी टीम एनएम क्रिकेटर्स ने। और उस मैच में आतिफ ने हैट्रिक विकेट चटकाए थे, और यहां पर उसी तरीके की प्रदर्शन की उम्मीद में वो यहां पर गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, जो श्रृंखला पिछले रात बंटवाल में खेली गई थी जेडी बॉयज ट्रॉफी के अंतर्गत। और यहां पर गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, निशाना दागा, निशाना चूका, और गेंद जब तक बैकअप हो एक्स्ट्रा कवर पर बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। और जहां तक सवाल है इस वक्त फील्डिंग प्लेसिंग का, तो इस वक्त अभिलाष स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अभिलाष के लिए डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर को 20 गज के दायरे के अंदर तैनात किया गया है, और एक्स्ट्रा कवर फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर तैनात इस वक्त किया गया है। लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त तैनात, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक फील्डर मौजूद। 4 खिलाड़ी कुल मिलाकर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। एक्स्ट्रा कवर
गली शॉर्ट थर्ड मैन और स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान एक फील्डर मौजूद। तो आतिफ अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 14 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर और टीम फॉर्चून एंड की ओर से आतिफ की ओर की अगली गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद दक्षिण बॉलिंग की दिशा में और इस बार बेहतरीन क्रिकेट ऑन द फॉलो थ्रू। जैसे ही गेंद को कलेक्ट किया आतिफ ने निशाना दागा नॉन स्ट्राइकर एंड पर और बल्लेबाज आदिल क्रीज से बाहर निकल आए थे। जब वो अपना इससे पहले कि वो बल्ला अपना बैट अपना क्रीज पर रखे निशाना सीधे स्टंप्सों को बिखर कर ले जाता हुआ आतिफ का और बल्लेबाज का बल्ला हवा में था। द बैट वाज इन द एयर व्हेन द स्टंप्स आर अप्रूटेड बाय बॉल थ्रो फ्रॉम आतिफ और यहां पर चौथा विकेट गिर चुका है। 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर परेशानियां और बढ़ चुकी है कहना पड़ेगा अब टीम एलिगेंट के लिए। तो अपनी क्षमता अपनी एबिलिटी के अनुसार इस वक्त गेंदबाजी करते हुए एनएम मैंगलोर के गेंदबाज फलस्वरूप रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए बल्लेबाज टीम एलिगेंट के। तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। सचिन नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, अभिलाष स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और आतिफ इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी। गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर रन से लेना चाहते थे जरूर, लेकिन जैसा ये अभिलाष ने देखा कि नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रहे रन चुराने में, तो उन्होंने अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए अंतिम क्षण में और इस तरह से कोई क्षति नहीं। और एक बार फिर से आतिफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद अच्छी गेंद थी। इस वक्त गेंद तक पहुंचना चाहा और वाइड का इशारा, विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क भी नहीं था और 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। एंड द स्कोर बोर्ड इज नाउ बॉलिंग अप टू 16 नाउ विद दैट कपल रन्स एंड 4th ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर आ चुके हैं। सचिन सामना करने के लिए तैयार। नंबर 6 बल्लेबाज यहां पर टीम एलिगेंट को जरूरत है एक लंबी साझेदारी की और देखना यह है कि अभिलाष और सचिन मिलकर उस कमी को यहां पर पूरा कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल डीप कवर पॉइंट मौजूद, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन तैनात और आतिफ अगली गेंद के लिए तैयार। फ्लाइट एट फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 17 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। दिन धीरे धीरे ढलते हुए दोपहर की ओर शाम की ओर इस वक्त दोपहर से शाम की ओर इस वक्त ढलता हुआ और 3:20 यहां पर बच चुके हैं और इस श्रृंखला का चतुर्थ और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर खेला जाता है। रिवर्स शॉट इस बीच अभिलाष द्वारा डीप कवर पॉइंट पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर। रन ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज मैंगलोर के। तो आतिफ काफी लंबा ओवर उनका प्रगति पर, इस ओवर में सिर्फ 3 सही गेंदें अब तक वो फेंक चुके हैं और अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद, एब्सोल्युटली टेरिफिक वन, मच स्ट्रेट लाइन केम अलोंग द कार्पेट, बिल्कुल जमीन के सहारे आई और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और 1 बॉल टू लेफ्ट। तो 18 रन, सिर्फ 1 गेंद बाकी है, माफ कीजिए इस ओवर में और आतिफ तैयार। ये गेंद इस बार स्वीप करना नहीं, गेंद को छोड़ दिया अंतिम क्षण में, देखा कि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है और इस बार ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन पूर्ण कर चुके। कोई बैकअप वहां पर नहीं, आतिफ इस तरफ आ गए थे और 2+1 3 रन नाउ एडेड टू द टोटल। तो अभी भी आतिफ अपनी सही लेंथ और लाइन को यहां पर तराशते हुए और जो शॉर्ट फाइन लेग फील्डर ने थ्रो किया था बिना देखे नॉन स्ट्राइकर एंड पर आतिफ इस वक्त उनको डांटते हुए कि भैया आपको थ्रो करने से पहले वहां पर देखना चाहिए था कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर फील्डर बैकअप कर रहा है या नहीं। तो यहां पर 3 रन न मिले वाइड के रूप में 21 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। आतिफ एक बार फिर से तैयार, दाहिना ओवर द विकेट, ऑफ कटर गेंद, हल्के से गेंद को पैडल स्वीप कर दिया, डीप स्कोर की दिशा में गेंद पहुंचते हुए 1 रन का इजाफा, दूसरा रन नहीं मिलेगा और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 4 overs completed, 22 for the loss of 4 wicket, exactly 5.5 runs per over the present run rate. The present run rate is now progressing here for them. And still 3 overs left in their innings. तो 5वां ओवर यहां पर शुरू होने वाला है। तो सतीश आइए आपको माइक्रोफोन पर बुलाते हैं। 4 ओवर, the 4 overs belongs to the bowlers of NM Mangalore और 3 ओवर का खेल बाकी।
तो 3 ओवर में मैं समझता हूं कम से कम 25 से 30 रन जरूर बटोरने होंगे, कम से कम 50 के आंकड़े तक यहां पर पहुंचना होगा टीम एलिगेंट के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एनएम के बल्लेबाजों पर दबाव डालना है जब वो गेंदबाजी पर उतरेंगे। तो यहां पर जहां तक 50 रनों के आंकड़े तक पहुंचने का सवाल है, इस जोड़ी को इस वक्त क्रीज पर टिकना बेहद जरूरी बन चुका है, क्योंकि अभिलाष और सचिन क्रीज पर मौजूद है। और उनमें से खासकर अभिलाष के बारे में अगर कहा जाए तो अभिलाष एक बेहतर पारी खेलने की क्षमता रखते हैं, कुछ आक्रामक स्ट्रोक भी वो लगा लेते हैं और पारी के अंत तक वो क्रीज पर टिकते हैं। तो निस्संदेह मैं समझता हूं टीम एलिगेंट 50 रनों के आंकड़े तक पहुंच सकता है। माइक्रोफोन पर आइए सतीश। Thank you very much, Gopi. So NM cricketers Mangalore, after winning the toss, elected to field first. Everything is going in their favor. The bowlers are really so far able to put some break on the run rate of Team Elegant. Not only they got break on run rate, but they picked up 4 valuable wickets. The wicket of Riaz, Harris, and of course the wicket of Santosh and Adil. And this time lovely shot just over the top of that backward point fielder. Long chase here for the fielder. Still the one fielder from out of 3 is able to cut it off. But before that, it's a very good running between the wicket between these two batters. And Abhilash and then Sachin run very well between the wicket, and they got 3 valuable runs. So Tanvir, after a long break, is once again back into his team. NM Cricketers Mangalore, one more very experienced campaigner. Tanvir, the very useful bowler, he's really contributed from his bowling, especially in the successful season, the last season. He produced some very important over for NM Cricketers Mangalore. So whenever we're getting some senior players in the side, then automatically we can see that different body language here for NM Cricketers Mangalore. They got Mansoor at short extra cover, one more experienced player. Now Tanvir bows. This time loose delivery, and he got a top edge ball ballooning high up in there, and comfortable catch here for deep long on fielder. I think Gopi, it's definitely going to be the hittable delivery. That was short pitch down the leg stand. Might be that surprise Abhilash, because he's not really expecting that kind of short pitch delivery. Maybe the extra bounce in the negation, because Abhilash is a little master. He's a short as his height is concerned. When you're coming that much of height, it might be the hittable delivery for the batters who got almost 5 feet, above 5 feet. They can hit that one down to deep mid wicket and deep backwards corner. Because of that height is not that much of suitable for the batter like Abhilash. That's why I think he couldn't manage to take advantage of that short pitch delivery. But I think it's just surprised the batsman, that delivery. बिल्कुल सतीश, और अभिलाष काफी छोटे कद के खिलाड़ी है, लगभग 5 फीट हाइट के, और गेंद लगभग उनके कंधों के ऊंचाई पर आई थी। अगर करीबन 5.5 या 6 फीट ऊंचाई का खिलाड़ी होता तो शायद गेंद को डिस्पैच कर सकता था। बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को उन्होंने खेला था अंतिम क्षण में, और गेंद टॉपेज पर टकराई थी और हवा में उछलती हुई लॉन्ग ऑन पर लपक ली गई। तो मैं समझता हूं अभिलाष का विकेट यहां पर गिर चुका है, तो अभिलाष की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी थी, टीम एलिगेंट के लिए। जैसा कि मैंने माइक्रोफोन आपको सौंपने से पहले फरमाया था, तो यहां पर उनका विकेट गिर जाने के बाद एक बार फिर से दबाव टीम एलिगेंट के ऊपर बढ़ चुका है, और देखना है कि इन बचे हुए 2+ ओवर्स में 5 विकेटों की मदद से बल्लेबाज उस दबाव को किस तरह हटा पाते हैं और कितना ज्यादा रन यहां पर बटोरते हुए इन बचे हुए 2+ ओवर्स में। Exactly, Gopi, and the partnership, and not only partnership, Gopi, but at the same time they needed some the acceleration of run rate as well. But this kind of runs definitely going to be a bonus here for Team Elegant, as Tanvir bowled wide outside the line of off time, not really getting that much of turn what he's expecting from that delivery, and left arm he bowls around the wicket to Sachin. Sachin drives that one along the stroke. They went for the single out of the reach of Mujib there in the short mid on region, and before that deep long on region fielder to come across towards his right to field the ball. Ample time for the batters to complete the single. 27 for the loss of 5 wicket. Very hard to combine the runs in against the disciplined bowling performance of NM Cricketers Mangalore. Left arm bowls, this time tip that one side to the hands of Mansoor. Loose stroke played there by the batter Prakash. Nothing a stroke, nothing a push. Half-hearted push there from Prakash. Pays the penalty for that. Maybe he was just not able to
read the turn of Tanvir's delivery, because sometimes Tanvir brings the ball from long way outside the line of off stump. Maybe he thought that this delivery can hit that one down to deep cover point region, but seeing that ball just coming into him, he just checked the stroke and given some match catching practice for Mansoor there at short extra cover region. And Gopi, once again, I would like to special thanks to you for the information wall about your given about Punit Rajkumar. Thank you very much, Gopi, because this is really required, the information, because this tournament is played in the memory of late Punit Rajkumar. And once again, special thanks to you on behalf of all cricket lovers for Gopi for that all this information. Absolutely, he has got special the skill, one must say, and thank you very much. Being the partner of him for a long time, it's proud to me. Again, lovely delivery, Flum, absolutely Flum in front of wicket. That was a fantastic delivery from Tanvir, one of his weapon, Gopi. And still I remember when he was started his career for Hanuman cricketers, we both played so many matches with Tanvir. He is a strike bowler, and Tanvir is always a very difficult ball to tackle. Whenever they bowling that kind of line and length, he's got opportunity to jagging back into the ball, into the batsman. This is a really fantastic one here from Tanvir. Ball beauty of the delivery, and wicket number 7 is back into pavilion. And coming back to Punit Rajkumar, Gopi is not only the very good actor, but he's a very good playback singer as well, and he's a very good producer as well. And of course, he was one of the television presentation. He done a very good television presentation as well. And Kannada Kotyadipati is one of his best anchor he did in that television. This time again, this looks to be the wicket number. Oh, what a catch! Mansoor there at short extra cover region, and Tanvir has got a hat trick. I think it's the second hat trick of this tournament. And Tanvir, what a tournament he's got! What a comeback tournament here for his team, NM Cricketers Mangalore, being the senior most. The player of the side after Mansoor, I think he is the one senior most player in the present playing 11, and he's just justifying why he is a very good player for the side of NM Cricketers Mangalore, and absolutely fantastic to see that. So 27 for the loss of 5 wicket. 5 overs completed. Tanvir got a hat trick, the second hat trick of this tournament. And now from the far end, Riaz is brought into attack from the far end. Nitin is a new batsman from the far end. He's in a striker's end. From the far end, Riaz will go into ball the over number 6 of the innings of Team Elegant. 27 for the loss of 8 wicket. Team Elegant really struggling to get some runs. Lovely delivery start with us. Just look at the deviation. The slower one, slow leg cutter from Riaz, and the tail-ender Nitin couldn't manage to get that one from his bat, missed it completely, and one more dotted delivery here from Riaz. And again the beautiful delivery. And Gopi, for that Kannada Kotyadipati, for that he made a lot of hard work, because that was a successful show, and that was a copy of Kaun Banega Crorepati. This is absolutely till now Amitabh Bachchan doing a fantastic job in this in the Sony television, and he met Amitabh Bachchan to get some advice from that, the kind of anchoring required here. And even Amitabh Bachchan is also tweeted and for his effort, but he's the one absolutely has got a special talent, and of course that one also, and I think the big miss for the film lovers, missing Punit Rajkumar, one of the star of Kannada movie. Outside the line of off stump, one more wide delivery, one more addition to total.
Again from the far end, Riaz, one of the matured and growing cricketer for the side of NM Cricketers Mangalore. One of the fantastic all-rounder as well. Slower one, pick that one right from the middle of the bat and right in the gap more than anything else. Experiment. You cannot underestimate the tailenders. The punishment certainly given for that delivery. And beautifully driven. Maybe sometime, yes, you cannot underestimate. Maybe they are the tailender for Team Elegant, but sometimes they play representing their home team. Maybe they are the batting in a top order position. We cannot underestimate any batsman in cricket. Appeal for leg before wicket. Definitely that in fact is outside the run of off stump. Umpire rightly so Vivek is not interested. Leg by call by umpire. With that leg by scoreboard moves on to 33 for the loss of 8 wicket. 33 for the loss of 8 wickets. The over number 6 in progress. Again appeal for leg before wicket. Again umpire denied, and rightly so. One more addition to total runs are coming here in this over for Team Elegant. At least 40 plus runs required for Team Elegant. They got some good bowling department in the side. They can depend this total if they bowl well and field well. Even NM Cricketers got some good batting department. Beautifully bowled. Look at the delivery, the quickness of the delivery. Absolutely beaten by the pace. Even actually the batsman has got no clue about that particular delivery. That ball is really jacking back into him, and the batsman back at the pavilion. Just like my friend Gopi is mentioning about Punit Rajkumar, he was a lead actor in 29 films, and as a child he appeared in many films. His performance in just like Gopi mentioning about Vasanta Geeta, ಭಾಗ್ಯವಂತ, ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು, ಎರಡು ಕನಸುಗಳು, ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, and ಯಾರಿವನು and ಬೆಟ್ಟದ ಹೂ 1985, where he praised he won the National Film Award for the best child artist for his role of Ramu in ಬೆಟ್ಟದ ಹೂ. And he won Karnataka State Award, the best child artist for Chalisua Modagalu and Eradu Kanasugalu, Nakshatragalu. And Punit's first lead role was, just like my friend Gopi mentioned, absolutely right Gopi, it was a 2002 Apu. And afterwards he is famously known as Apu. And more than anything else, Gopi is a very good human being. The humanity is one of his best character. And that's why he got that much of the fans, the followers, everyone shocked by listening his sudden death. Everyone is shocked. And even somebody is not really come out of from that shocking news. And I think Team Fortune Mangalore did a great job to organizing such a good cricket tournament in the name of late Punit Rajkumar. He will definitely going to remain in the heart of the film lovers for a long time. So last over will going to start from the commentary box end. Atif to ball, first delivery, a little bit down the leg stump and appeal for leg before wicket. Umpire not interested, and if just interested to lift his legs to signal the leg by. One more addition to total. 35 for the loss of 9 wicket. Last over in progress. Team Elegant have to get some runs, but they got one the last pair in the middle. Again, beautifully bowled by Batif. In the tournament which is played at Bantwal, JD Trophy 2022, NM Cricketers Mangalore entering into the semi-finals, and they will going to play against KFC Kodikal in the semi-final. Maybe that match will going to start after 8 o'clock, I think so. But here is the competition is on for the Yuvaratna Trophy 2022. And wait to see which team will going to get the place in the big final. 5-star Adur already made their way to the finals in the local pool. And wait and see which team will going to get the chance here to face 5-star Adur. This time clean him up. That's his bundle out. Team Elegant is bundled out for 36 runs, and they set a target of 37 to win the match to NM Cricketers Mangalore to get the place in the semi-final. And
Good young boys certainly is waiting for the winner of this match. And NM Cricketers Mangalore looks like they are favorite of winning this match. The bowlers did the job. Now all up to the batsmen of NM Cricketers Mangalore. Well, they managed to get this small total of 36 runs in stipulated 7 overs. 42 deliveries, 37 runs required for the victory for Team Elegant. And we'll take a short break. After short break, my friend Gopi will going to take over the microphone in our national language, Hindi. धन्यवाद सतीश। एक बेहतर जानकारी आपने दी पुनीत राजकुमार के बारे में, तो निस्संदेह काबिल तारीफ है। और यहां पर सवाल है जहां तक इस मैच के विजय का, तो 37 रन इस वक्त बनाने एनएम बैंगलोर। जैसा कि आपने कहा, बेटर द विच वाज रिलीज इन 1985 नॉट इन 1976, what I told before, I beg your pardon for that, 1985, and he bagged the best child actor आर्टिस्ट अवार्ड फॉर दैट फिल्म, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया। इस वक्त 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर रनों का सिलसिला यहां पर बिना किसी नुकसान के। और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। रियाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और तौफीक का खाता यहां पर खुल चुका। रियाज के लिए गेंदबाज भी रियाज, बल्लेबाज भी रियाज, और गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर बल्लेबाज रियाज ने, और गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ द टॉस गेंद को स्कूप कर दिया था इस बार स्टंप्स को कवर करते हुए, और गेंद इस वक्त आसानी के साथ ट्रैवल करती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर गई 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है यहां पर 5 रनों पर। इट्स 5 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। तो जहां तक टीम एलिगेंट के विजय का सवाल है, इस वक्त टीम एलिगेंट को चाहिए एक कसी हुई गेंदबाजी, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। निस्संदेह कन्नड़ा फिल्म इतिहास में पुनीत राजकुमार का नाम कभी भी अमर रहेगा। निस्संदेह नेशनल अवार्ड उन्होंने अर्जित किया था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट फॉर बेटर द हू इन 1985। और इस बार गेंद को खेला शॉर्ट कवर पर, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, अभिलाष फील्डर थे, एंड द अपॉर्चुनिटी इज नाउ गॉन इन वेन। और इस बीच बल्लेबाज यहां पर जीवदान प्राप्त कर चुके हैं, और ये गेंद को खेला था इस वक्त रियाज ने इन दी एयर, हवे में,
कवर पॉइंट पर, लेकिन आखिरकार इस कैच को लपक नहीं पाए अभिलाष। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच को, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का। रियाज एम्मा इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ऊपर विकेट, ये गेंद ओ बेहतर गेंद थी, आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहता, अंतिम क्षण में गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सतर्क गेंदबाजी की इस वक्त जरूरत टीम एलिगेंट के गेंदबाजों को, अगर उन्हें 36 रनों के अंदर एनएम मैंगलोर के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है तो दैट्स द लाइन ही हैज टू बॉल दिस सिचुएशन मच स्ट्रेटर लाइन एक्स्ट्रा क्विकर and the ball went into the hands of wicket keeper after beating the batsman. First over completed. So a steady start for NM Mangalore, chasing the victory target of 37 in 7 overs. They managed to score 7 runs on the board, yet to lose any wicket after completion of first over, and this is an absolutely a perfect start for them. इस मैच की विजेता टीम इस श्रृंखला के द्वितीय सेमीफाइनल मैच में गोरी यंग बॉयज का मुकाबला करेगी और द्वितीय सेमीफाइनलिस्ट के रूप में यहाँ पर सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए संघर्ष जारी है इस वक्त टीम एलिगेंट और एनएम मैंगलोर के बीच में। आज रविवार की शाम के 3:45 यहाँ पर बज चुके हैं, 3:45 ऑलरेडी, और दर्शकों की संख्या यहाँ पर काफी हद तक इस मैदान पर बढ़ चुके हैं। मैदान के चारों ओर दर्शक ही दर्शक इस वक्त नजर आते हुए, ऐसा कहना पड़ेगा दर्शकों से खचाखच यह मैदान यहाँ पर भर चुका है। एब्सोल्युटली जम पैक स्टेडियम और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला युवरत्ना ट्रॉफी 2022 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है टीम फॉर्चून ने, और यहाँ पर इस श्रृंखला के चतुर्थ क्वार्टर फाइनल मैच का मुआयना करने के लिए दर्शक मैदान पर भरे हुए हैं इस वक्त। दाहिने हाथ ओवर द विकेट नहीं, ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई और गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट ऑफ लेग की दिशा में, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का। तो 1 रन का इजाफा अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में 8 रन बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। शबीर गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए एलिगेंट क्रिकेटर्स की ओर से ये गेंद ड्राइव किया, इस बार जस्ट वाइड ऑफ द बॉलर, लेकिन रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, इसलिए मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है और इस वक्त सेंसिबल बल्लेबाजी की जरूरत है और देखना यह है कि बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाता है। ये गेंद बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त इनटू द गैप एज वेल, इट्स कुड बी गॉन ओवर द फेंस एंड लॉन्ग चेस फॉर द फील्डर, ही वोंट गेट दैट वन एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त मोड़ा था और गेंद इस वक्त मिड विकेट फील्डर के बाईं ओर से निकलते हुए सीधे डीप मिड विकेट सीमा रेखा की और बड़ी थी। गेंद का पीछा किया था जरूर मिड विकेट फील्डर ने, लेकिन गेंद तक पहुंचने में असफल और गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ तौफीक के बल्ले से और इस स्ट्रोक के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 12 रनों पर। इट्स 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। तो फील्डिंग में कुछ हद तक तब्दीली इस वक्त करते हुए कप्तान टीम एलिगेंट के उस चौके के बाद और एक बार फिर से शबीर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तौफीक के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज तौफीक सामना करते हुए ये गेंद एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास, परिवर्तन के तौर पर धीमी ऑफ कटर गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे है लॉन्ग द कार्पेट और गेंद पैरों पर टकराई बल्लेबाज के रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 12 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है, दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर और शबीर एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर स्पेक्ट्रा वाइड और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 13 without loss in the over number 2 in progress. Good going on here for in Mangalore और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो अगली गेंद ये गेंद स्वीप किया इस बार एक बार फिर से मिड विकेट पर, लेकिन इस बार चौका प्राप्त नहीं होगा। फील्डर वहां पर मौजूद है और थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद जब तक डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन प्राप्त करने का। इनफील्डर क्लियर करते हुए गेंद को स्कूप किया था इस वक्त 2 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 15 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर गेंदबाज एक बार फिर से यहां पर गेंदबाजी करते हुए दाहिना ऊपर द विकेट ये गेंद उछाला स्ट्राइट हिट और गेंद लंगोट सीमा रेखा के अंदर रोक ली गई है छलांग लगाने के बाद बेहतरीन तरीके से फील्डर द्वारा।
जैसे ही फील्डर ने लॉन्ग ऑन पर बापा कि गेंद उनके सिर के ऊपर से टिप्पा खाने के बाद निकलने वाली है सीमा रेखा से बाहर, अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को उन्होंने लपक लिया अपने दूसरे प्रयत्न में और बल्लेबाज को इस गेंद पर मिला सिर्फ एक रन। 16 रन बच चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 16 विदाउट लॉस। फाइन प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर एनएम मैंगलोर चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 37 इन 7 ओवर्स सेट बाय टीम एलिगेंट। और इस बीच गेंदबाज ये गेंद अजीब और गरीब ढंग से गेंद को खेलना चाहा और इस बार यहां पर लेजीनेस मैं कहूंगा, क्रीज से बाहर चले गए थे और उनका बल्ला हवा में था और जब वो बल्ला उन्होंने क्रीज पर रखा तो विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे अपना काम तमाम किया। तो यहां पर अपनी गैर जिम्मेदारी से ये विकेट यहां पर खो चुके हैं बल्लेबाज और विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज रियाज 16 रनों के ऊपर पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। It's 16 for the loss of 1 wicket in the over number, second in progress for NM Mangalore. So 2 overs completed, 16 for the loss of 1 wicket and 21 to get now in remaining 5 overs, and the asking run rate is now coming down to exactly 5 overs 21 runs. That means 4.20 runs per over. The asking run rate is now coming down to for NM Mangalore और गेंदबाज रियाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद, यह गेंद उछालना चाहा इस वक्त चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है मंसूर, जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी एनएम मैंगलोर की ओर से इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद और सामना इस वक्त करते हुए तौफीक का। यह गेंद इस बार उछालना चाहा चूंकि और गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप्स पर नहीं टकराए, लगभग स्टंप से कुछ 1 या 2 इंच दूरी पर गेंद निकली और स्वयं बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी इस गेंद को समझ नहीं पाए और गेंद को फील्ड कर दिया गया शॉर्ट फाइन लेग पर। बेहतरीन गेंदबाजी गेंदबाज रियाज यहां पर कर चुके हैं और तैयार अपने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद लेकर दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार चिप किया और वाइड लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। So couple of runs now added to their total. He just played that one square of the wicket और 2 रन बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। रन से आसानी के साथ यहां पर बनते हुए 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर और अगली गेंद लेकर रियाज इस वक्त तैयार तौफीक के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा अंपायर का। इट्स 19 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ एनएम मैंगलोर और यहां पर टीम एलिगेंट को चाहिए एक घातक गेंदबाजी इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट रियाज ये गेंद इस बार उछालना चाहा चूंकि नॉट क्वाइट मिड विकेट 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। रियाज मंसूर के लिए इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद मंसूर के लिए सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, जस्ट प्लेड दैट वन स्क्वायर ऑफ द विकेट एंड ही फाइंड्स द गैप एज वेल एंड आल्सो फाइंड्स अ कपल फॉर दैट। और 2 रन इस बीच मिलेंगे। 22 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है एनएम मैंगलोर को और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हुए और इस बीच रियाज एम एक बार फिर से मंसूर के लिए गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त शॉट गली फील्डर की दाईं ओर से गेंद निकली लेकिन अंतिम क्षण में अपने आप को संभालते हुए उन्होंने गेंद को इस वक्त पीछे की ओर दौड़ते हुए फील्ड कर लिया लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 overs in fact and now they are looking in a commanding situation. Just 14 to get now और
मैं समझा कि 2 ओवर बचा है, तभी स्कोर बोर्ड पर हमारे काबिल दोस्त है धनराज, उन्होंने बताया जी भैया यहाँ पर 2 नहीं 3 ओवर हुए हैं, आप देखिए स्कोर बोर्ड की ओर। तो मैंने देखा तो जी हाँ 3 ओवर वहां पर लग चुके थे, तो माफी चाहता हूँ धनराज भाई। और यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 23 रन, जो कि हमारे एक्सपर्ट स्कोर बोर्ड पर एक्सपर्ट स्कोरर इस वक्त काम करते हुए धनराज भाई। और निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतरीन काम स्कोर बोर्ड पर वो करते हुए, और स्कोर 14 रन चाहिए, 4 ओवर का खेल बाकी, 14 टू गेट इन रिमेनिंग 4 ओवर्स विद द रिक्वायर्ड रन रेट ऑफ एग्जैक्टली 3.5 रन पर ओवर। और चौथे ओवर की पहली गेंद अभिलाष, ये गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी मंसूर के लिए, गेंद को विकेट से हटकर खेलना चाहा लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 24 इन 3.1 ओवर्स। और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए तौफीक, जो कि एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए यहां पर खेलते हुए तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट ऑन साइड पर, दिस इज अ बिग वन, इट्स गॉन मेनी अ माइल्स। छक्का इस वक्त तौफीक और एनएम मैंगलोर के खाते में जुड़ता हुआ, और इस छक्के के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर, और इस छक्के के साथ ऐसा कहना पड़ेगा विजय के और निकट हो चुका है एनएम मैंगलोर। और जहां तक अगले मैच का सवाल है, गोरी यंग बॉयज के सर्व सदस्यों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। इस बार ऑन साइड पर टॉप एज गेंदबाज स्वयं पहुंचते हुए अभिलाष, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 31 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 6 टू गेट नाउ, एंड दिस इज द ओनली 4th ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। तो एनएम मैंगलोर इस वक्त बुलंदियों पर नजर आता हुआ, सिर्फ 6 रन चाहिए विजय के लिए। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो अभिलाष एक बार फिर से अपने गेंदबाजी पर आते हुए, शाम के 4 बजते हुए 3:50 यहां पर बच चुके हैं, और इस श्रृंखला का चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर खेला जाता हुआ। यह गेंद ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद किस वक्त खेल दिया मिड विकेट पर मंसूर ने, और 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं दोनों बल्लेबाज। 32-32 एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस श्रृंखला का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर देख सकते हैं, जो इस वक्त किंग स्पोर्ट्स कर रही है। यह गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा चूंकि, और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो सिर्फ 5 रन और चाहिए विजय के लिए, और अभिलाष इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एक बार फिर से चूके, और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಈ पंद्यದ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ। तो यहाँ पर 5 रन चाहिए, 3 ओवर का खेल बाकी, एंड 5th ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स, और रिक्वायर्ड रन रेट now exactly 1.66 runs per over, 1.66 runs per over. The situation for एनएम मैंगलोर। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो देखते हैं हमसे दूर वाले छोर से टीम फॉर्चून, माफ कीजिए कमेंटेटर बॉक्स की ओर से गेंदबाजी पर कौन उतरते हैं। शबीर 80 नंबर की जर्सी पहने हुए इस वक्त नए गेंदबाज के रूप में इस वक्त उतरते हुए, सिर्फ 5 रनों की दरकार इस वक्त इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त चाहिए एनएम मैंगलोर को। और 5वां ओवर 5th ओवर उनकी पारी में इस वक्त शुरू होता हुआ। यह गेंद पहली गेंद मंसूर के लिए रक्षात्मक तरीके के खेल, एक्स्ट्रा कवर पर रन के लिए नहीं, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 32 रनों पर। और एक बार फिर से शबीर गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट मंसूर के लिए, और लेग स्टंप से बाहर, इस बीच वाइड का इशारा। 32 नाउ for the loss of 33 now for the loss of 1 wicket, just 4 to get in remaining 11 balls। और ये गेंद इस बार उछालना चाहा, पैर पर टकराई, मंसूर रन नहीं लेना चाहते हैं। 9 सेकंड के बल्लेबाज आगे निकल आए, ओवर थ्रो, बैकअप ठीक तरह से नहीं कर पाए वहां पर गेंदबाज, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 34 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और सिर्फ यहां पर रियाज का विकेट गिर चुका है, और
अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एक और वाइड, 35, जस्ट 2 टू गेट नाउ फॉर विक्ट्री। और सिर्फ औपचारिकताएं ही अब इस मैच में बाकी रह गई है, अगर कोई चमत्कारी घटना ना घटे तो। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, एकमात्र रन मिलेगा, थ्रो पहुंचा और इस एक रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड और सिर्फ एक रन चाहिए अब इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए एनएम मैंगलोर को। दैट्स इट, 9 wickets comprehensive victory for NM Mangalore with 8 balls to spare in their innings, defeating Team Elegant, and with that comprehensive victory of 8 wickets against Team Elegant with just 8 balls to spare, they are through to the semi-final of this competition. And now the second semi-final of this tournament will be played between NM Mangalore versus Gori Young Boys, and that match starts right after 10 minutes. And because of that, I request all the players of NM Mangalore and Gori Young Boys to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Thank you, and we'll be back right after a short break in the second semi-final match with my friend Mr. Satish in English. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. So man of the match award of this match goes to the bowler who bowled splendidly, conceded just 5 runs in his 1 over, including a hat-trick. He captured 4 wickets. 1 over, no maiden, 5 runs and 4 wickets. And the man none other than Tanveer of NM Mangalore, adjudged man of the match. I request Tanveer of NM Mangalore to please come on to the dais and receive the man of the match award from our organizer. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗಮನಿಸಬೇಕು. I request captain of Team Elegant, please come and collect your memento from our organizer for your representation.
Thank you very much, Team Elegant, coming here and taking part in this prestigious Yuvaratna Trophy 2022. On behalf of cricket lovers, on behalf of organizer Team Fortune Mangalore, we'd like to give special thanks to Team Elegant for your representation for this cricket tournament. Thank you.
I request the two teams captain, NM Cricketers Mangalore as well as captain of Gori Young Boys. If you completes your signature, please get ready for the toss. ದಯಮಾಡಿ NM Cricketers Mangalore ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. I request the two teams captain. Already time is up. So request captain of Gori Young Boys as well as NM Cricketers Mangalore, please report here for the toss. ದಯಮಾಡಿ NM Cricketers Mangalore ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾನೇ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನೇ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. Gori Young Boys, after won the toss, they elected to they yet to tell their decision. Just we have to wait and see what the decision the skipper of Gori Young Boys have to take. Will take, in fact.
Welcome back once again for the very important the match of this tournament, semi-final, second semi-final of this cricket tournament. Gori Young Boys takes on NM Cricketers Mangalore. And the toss which is on by captain of Gori Young Boys, and they rightly elected to field first. And that means NM Cricketers Mangalore will go into bat first in this big semi-final. And one more high voltage match of this cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2022. And all in sudden we can see that the crowds are gathered in a big numbers to witness this big semi-final of this prestigious cricket tournament. And even the big number of viewers in King Sports YouTube channel really wanted to see this one more very good match of this cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2022. Gori Young Boys and NM Cricketers Mangalore. Both the teams didn't got that much of result in this particular season, not really got any big titles, so that it's going to be a very important for both the teams that if they wanted to come into their winning track. And Gori Young Boys suddenly they won one title, that with the tournament which is played at Shaktinagar Cricket Ground, and they defeated some big teams in this particular tournament. They defeated KFC Kodikal and NM Cricketers Mangalore as well in that Shaktinagar ground. And it's going to be a more interesting game of cricket now. NM Cricketers Mangalore, can they bounce back here against Gori Young Boys? A very good toss to win here for Gori Young Boys, and just like what they did in the previous match, they won the toss, elected to field first, and everything is gone in the favor of Gori Young Boys. Especially against KFC Kodikal team, Gori Young Boys done a great job after winning the toss. If elected to field first, and every strategy, the game plan really worked out in that quarter final against one of the big contender of this cricket tournament, KFC Kodikal. And especially the bowling department is really outstanding in that the match. Because of their excellent bowling department, they able to restrict NM Cricketers Mangalore for a less go. And in this particular match as well, they wanted to continue. I request the opening batters of NM Cricketers Mangalore, please go for bat immediately. Umpires waiting for you. Opposition teams waiting for you. More than spectators, I think they are waiting for the opening batters of NM Cricketers Mangalore. Now here is the two opening batters are coming into the middle. The same opening pair here, Riaz along with him, Taufik. Two very young stars for the side of NM Cricketers Mangalore now came into bat here. One more change in playing 11 of Gori Young Boys. We can see that Pratap and another change there. Arshit came into the playing 11 of Gori Young Boys. I want to say who missed this Gori Young Boys. I think Karna, the captain himself, is not playing in this semi-final. It's not a good news. Being the captain of the side, missing the matches like this semi-final prestigious tournament like Yuvaratna Trophy 2022. The captain Karna is not playing in this semi-final. And Pratap got a chance here because he's missed out Sneha Malamar earlier morning, and because of that Pratap has got opportunity to play here for Gori Young Boys. Wait and see and the result of this match, and it's going to be the start of the semi-final. And from the far end, as always, Ansar will go into starts the proceedings, and Taufik will go into face his first delivery. Power play over. Right above the wicket bounce. This time Taufik went for the off drive, missed it completely. Wicketkeeper behind the stump collects the ball. Lot of pain here for Arshad. Maybe he collects that ball almost in the ground level, and that suddenly sometime it's going to be very pain because the hardness of the ball may be the difficult for wicketkeeper behind the stump. This time he went for the big shot, not quite getting hold of that one properly, but still he managed to get
get that one into mid-wicket region. And before Arshid from the deep wide-ish mid-wicket, wide-ish long on to come across towards the mid-wicket region, ample time for Tawfiq to get the single. NM Cricketers Mangalore has got a first run of the semi-final. So far, both the teams really played a very good game of cricket. NM Cricketers Mangalore as well as Gori Young Boys, they deserve this place in the semi-final. And a little bit luck in the favor of NM Cricketers Mangalore because they got a walkover when Ankit Surwa not really reported in a time, so that NM Cricketers Mangalore managed to come into the semi-final. This time again, swept that one down to mid-wicket region, and just a single here for Riaz. Riaz is also off the mark. The intention is clear here from both the batters. They knows that how important to get some runs in the power play overs. So they're just trying their level best to get some big strokes in this power play overs. So far, Ansar bowled a very, very tidy line for time in this over. Right above the wicket. This time he's lofted. I don't think he got enough batter to that. The fielder there in the deep extra cover making no mistake at all. Shishant, the fieldsman there in the deep extra cover, takes a very comfortable catch. The wicket number 1 of NM Cricketers Mangalore is back into pavilion, and again Ansar producing a vital breakthrough here for Gori Young Boys. Tawfiq just tried to break the shackle as he wanted to get some big stroke in this particular over of the Ansar, the over number first of the power play. But he just wanted to play that one on away from his body. Lofted that one, didn't got enough bat onto that. Timing is not proper. And the ball is landed inside the boundary line down at deep extra cover region. 2 for the loss of 1 wicket. The new batter just walking towards the middle with the jersey number 21. From the far end, Ansar. Riaz this time not quite getting hold of them properly, but ball running out to the deep cow point position, boundary for 4 runs. Oh my goodness, can you believe this? It's not like it's a convincing cricketing stroke here from Riaz, but still look at that, the way the ball is travelling down to deep cow point region. Unbelievable boundary for Riaz. Just like he is just cutting the wood in an axe, and it doesn't look like he's making any stroke there. But still, look at the way the ball is traveling. That shows the hardness of the ball, and even the power of the batter. He's putting a lot of power behind that one. That's why he got this time bowler's back dry. Off chance here for Ansar on his follow through to take the catch. A quick reflection catch. The opportunities missed out there by Ansar, driven back powerfully by Riaz, and a little bit Ansar reacted late to hit, and ball just passing his trying hands, and got a single here. 7 for the loss of 1 wicket after completion of 1 over. The good start for both the teams, and 1 wicket for Gori Young Boys at the same time. NM Cricketers Mangalore got a 7, and that's 1 boundary which really make the difference here. NM Cricketers Mangalore, they got 7, must be satisfied to see. It's always going to be a good score, 7 in first over. Ansar, quite unfortunately, is bowled well. It's bowled very good line and length, but 7 runs is conceded. From the commentary box end, it's going to be a start of the over number 2. Afridi done a great job in the previous match for his team, and he's justifying his presence in the playing 11 of Gori Young Boys. Even he playing his first match in this UCG cricket ground for Gori Young Boys, but he looks like most matured bowler for Gori Young Boys. And wait to see how well he's going to bowl in the big semi-final against one more big team, NM Cricketers Mangalore. Riaz is on strike. Afrid is on action. From the commentary box and short mid off, short cover point, short backward point, short third man, short fine leg, short square leg, short mid dedicated, deep wideish long on, and 1 at the deep extra cover. Here is Afrid, right above the wicket balls, bowled with a big wide. The same start what he got in the previous match. So he starts with some wides, but straight away is back with some good deliveries. But wait and see what will he going to do in this particular match. Far away outside the line of off tempo, wide signal by umpire,
8 for the loss of 1 wicket. Afridi again back to his bowling mark. Short run up, pass umpire wake of challenge bowler. So far did a great job along with Roland Pinto and Shiraj in this particular day. Right arm over the wicket, balls this time quicker one, try to turn that one in the onside region, didn't got enough batter to the chance of run out there, appeal for run out, umpire Roland Pinto asking for the third umpire. I think it's the first third umpire call in this particular day. Roland Pinto refers for the third umpire, and quite interestingly this is the first reference given by the field umpires for the third umpire to see whether it's out or not out. It's going to be very, very interesting. It's going to be a very close call for third umpire, and nothing much bother about that because the technicians, the cameramans, and those who are in a mixing department of King Sports so far done a great job in this particular cricket tournament, and wait and see what the result is going to be. Goryang boys certainly wanted to see the red light. At the same time, supporters of NM Cricketers Mangalore wanted to see the green light. And not out is a signal coming from third umpire. The batsman is safe. Rifan is a new face in the playing 11 of NM Cricketers Mangalore. Different kind of the grip holding over his bat. Look at that one. X. And in the present day, so many the batters holding that kind of grips. Now, Afraid bowling away from us. Right arm over the wicket. The Rifan drives that one, not quite getting the timing behind that one, but still managed to get the single down to short third man region. With the addition of that single, scoreboard moves on to double figure 10 for the loss of 1 wicket. Lot of invention in nowadays in cricket, and especially the stroke making is concerned. Some invention is from some cricket from batters to get some runs on the board. That was really required in cricket. Always you cannot believe with the orthodox cricketing strokes, some invention is required. Then this time a quicker one, absolutely quicker one there from Afridi, so that Riaz couldn't manage to pick his line and length. The ball just passing his legs, so rightly so umpire Wake not interested to call any decision here. That was a fair delivery, just passing around the legs of the batsman, well within the reach of the batsman. 10 for the loss of 1 wicket. Afridi bowling away from us with a short run up. He's got a lot of pace in his bowling. This time he's lofted, not quite getting hold of that one, but ball looks like it's carried to the fielder at deep extra cover. Shishant, the same fielder who got a catch of Tawfiq. Now he's picking up the catch of a very dangerous batsman Riaz. Just tried to pose that one. I already mentioned Afridi has got a very, very good pace in his bowling. Against his pace, looking for the big shot, asking for trouble. He hit that one, he forced that one, being the fact that that was a quicker one. And happy faces here for fans of Goryang boys, and more than in right of my commentary box. One more happy face is none other than Nandan Kulshekar, the big follower of Goryang boys. 10 for the loss of 2 wicket. Now Mansoor came into middle. Right time he came into middle because experience so important in this situation for NM Cricketers Mangalore. Someone like Mansoor to come and play a responsible innings and knew to give some guidance for the youngsters as well when you're playing a big semi-final like there's a prestigious cricket tournament like Yuvaratna Trophy 2022. This time again, look at that one, absolutely perfect. Appeal for the cotton ball, everything is going up here. The wicketkeeper Arshad, look at this level of confidence, is going up and saying that that was a fair catch. Umpire Vivek is not convinced, but now squalor umpire Roland Pinto will going to have a conversation with the umpire Vivek. Now it's given as a third umpire for the cotton ball. Looking at the body language of Goryang boys, especially the closing fielder, just I want to see that because that ball came very quickly to the batter
Rifan tried to whip that one off his toes, but we have to see that whether the ball is involved is bat. If it is involved, whether the ball is taken with the pull, whether the ball is got a bounce in front of his boot or not, whether it is taken in the pull or not. That's what umpire have to see, and third umpire have to see. But I think it's going to be a very difficult one, especially the technology. Of course, everybody knows that it was advanced in international level, but we are having a limited technology what we have here. But in this limited technology, you have to get the result here. The not out says by umpire. Thank you very much. Sriraj, as the third umpire, got a right decision here. Just examining the replay of this particular delivery and got a right decision. And a series after that ball is grounded, and then ball is went to the hands of Afridi. So no damage done. 10 for the loss of 2 wickets. And Afridi again bowling with a short run up. Right arm over the wicket he bowls. This time again straight to the hands of pace man. Yuvaratna making no mistake at all. Again look at that one, beaten by the pace. Just a single word for that delivery. Beaten by the pace. You cannot implement your power against the pace. The technique is one of the best weapon to implement. Timing is so important. If you try to pose when the ball is coming very quickly to you, it's little time for you to react. And that's what really happened to the two players of NM Cricketers Mangalore. I already mentioned this bowler Afrid has got a lot of the pace in his bowling. He got the ability of bowling quicker deliveries. And once if you try to pose that ball, and very difficult to you to get the timing behind the stroke. Again that wicket for Aprid, and what a tournament is having from the ball for Goryang boys. So 2 overs completed. A completion of over number 2. NM Cricketers Mangalore, just like they're in the previous match, they struggled. Here also they're struggling. 10 for the loss of 3 wickets. Now Atif came into middle. One more big ace in the pack of NM Cricketers Mangalore. Of course, they missed out one big A in the pack, that is Asif Addur. The fact that he is represented for his home team. Foster Addur, they already came into the finals of this cricket tournament. Now, Atif need to play some responsible innings along with his senior partner Mansoor. Will going to face Ansar from the far end. Right arm of the wicket, pedal that one, ball is in there for a while, but it was safely landed down to deep fine leg region before the square leg fielder run across to his right to field the ball. Ample time for Mansoor to get the single. Then with the single, scoreboard moves on to 11 for the loss of 3 wickets. So far, Goryang boys enjoying their bowling, especially in the particular cricket tournament when this tournament is dominated by the batters. But here is Goryang boys bowlers really creating problem for each and every team, opponent team they faced. Answer from the far end. Right arm of the wicket. Thief is went for the sweep shot. Lucky there. That ball not really coming to bat in relegation, not really hitting his bat, but I think one of the softest part of the body is involved in here, getting a little bit pain as well. Again went for the reverse sweep. Again the dotted delivery. So far Ansar doing a fantastic job in this over, just like what Fafridis did, and even the first over also. He's bowled very well, considered 7 runs. In that 7 runs, 1 boundary which came from the bat of Riaz. Otherwise, it's a quiet over. Answer bowls. This is Mati. Went for the reverse sweep. They're going up. They're going up. Ashar is very confident, but umpire is not confident enough to raise his finger. This is a good cricket, absolutely good cricket. More than good umpiring, I want to say, because this is not an easy job for umpire to judge. Definitely it's not an easy job, when especially in underarm cricket it's a very difficult judge, because ball is coming all along the carpet, the batter is coming across, try to play the reverse sweep. Sometimes it's very difficult to see where the ball is hit, whether the ball is hit the handle, whether the ball hits his legs or any part of the body. Umpire have to see very carefully, and
the good judgment in the end here from umpire Roland Pinto. Again, now one more single. Try to work that on onside region, but ball is went to different area down to long off region. And with that single, scoreboard moves on to 12 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Quiet cricket is going on. Pin drop silent in USAJ cricket ground. Again, experiment too much in the irrigation there for Mansur. Too far down the leg stump. Mansur just following that one. He knows that that's a wide delivery, but more than the wide, Mansur wanted to hit that one out of the park. Just that's why he's just chasing that ball. And Mansur may be trying for the slower delivery in the irrigation. That's why that ball went far away down the leg stump. Wide signal by umpire. 14 for the loss of 3 wicket. Answer from the far end. Right arm over the wicket he bows. This time delicately played. Just opening the face of the bat. Just giving a direction towards gully division by Atif to pick the single before the Pratap run across the field. The ball. One more good over there from Gori Young Boys. Even Answer bowled a very good over. 3 overs completed after completion of over number 3. NM Cricketers Mangalore searching for the right track. 15 for the loss of 3 wicket. Run rate exactly 5 runs per over. So start of the over number 4 and wait and see how Atif will going to implement here. Strategy, the game plan to get some runs. Didn't got that much of runs in the 3 overs, but still they got a 4 overs. They can bounce back at any time with someone productive over. Now wait and see. Afrid in the last over has been outstanding and very impressive in his bowling. The line and length. Afrid balls away from us. Right arm over the wicket. Reverse sweeping that one quite nicely down to deep backward point and fielder there. The deep running hard in front. And because of that fielder, Shashant is a very good Ansar in fact is a very good in the outfield. Against his throwing hands, I think it's asking for trouble if you're coming back for the second. He's a very good fielder. He's got a very good arm as well. Fields the ball very quickly, returns the ball very quickly. And no question of second run. 16 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Afridi again bowling from the commentary box friend with a short run up. Pass umpire Vivek to Mansoor. Mansoor just using his feet again, not quite getting hold of that one properly. He's tried to use his feet, and of course the batsman who can play overarm cricket as well, they can use the feet very well. You can see that even the ball is bowling with a great deal of pace in that ball, but still Mansoor is using his feet very well. Just try to get into the line of the delivery and couldn't manage to get the timing behind the stroke. 17 for the loss of 3 wicket. Here is Afraid. The improvisation, a good piece of fielding there by the fielder. Pratap, one more good fielder is added to the fielding department of Gori Young Boys. Is a very quick fielder. Usually is a very good wicket keeper behind the stumps as well. But as the fact that Ashad is behind the stump is doing the job, he stands at short third man region, fields well, very well. Just a single for Atif, 18 for the loss of 3 wicket. Afraid again. Bowling with a short run up. Right arm over the wicket. This time again the quicker one. Absolutely quicker one. Beaten by the pace. This is what I'm talking about. The Fayaz is a good bowler. Especially in the power play overs what Gori Young Boys has got. They missed out the service of him because he's represented 5-star Adur. Now in his place they got a very good replacement in the name of Afridi. He's also got a lot of pace in his bowling. Again that ball is almost coming into the batsman very quickly, and Mansoor completely missed out that ball from his bat. Again Afridi bowling with a short run up. Right arm over the wicket. This time he's lofted. This time he got that one right from the middle of the bat. Absolutely, it was a glorious stroke there from Mansoor. This is the first time I'm seeing that the bowler is bowling that one is an off volley. This is a fuller land delivery.
He cannot stop Mansoor when he's getting that puller line delivery, especially the batsman who deal with some overarm cricket as well. Definitely they will go and hit that one very straight down the ground to get the distance right. So 24 for the loss of 3 wicket. Much required 6 here for NM cricketers Mangalore. Again, that was a big one. Chance of run out, directed. Bowled out. I want to see whether it's a bowled out or a run out. It's a run out. Bowled out. The bails are off. It's a bowled out. Beaten by the pace of Afrid. And what a good comeback there by Afrid. After immediately the Mansoor hits the 6. Next ball. He hits a stump with the pace in his bowling. Absolutely right on the block hold. And Mansoor is back onto pavilion. 24 for the loss of 4 wicket. Look at his bowling figure of Afrid. I want to see his bowling figure. He bowled 2 overs. Is no maiden. Conceded 12 runs. And he picked up 3 wickets, Gopi. And just exclude 1 6 from that. Which is Mansoor hit the 1 6 down to deep straight long off region. And just exclude that 6. Definitely it's going to fantastic over. But more than anything else, Gopi, after that he conceded that 6. Immediately he picked up a wicket of Mansoor. That was a good sign of good bowler. That means he's definitely going to be the future bowler for Gori Young boys. बिल्कुल सतीश, और वो छक्का को अगर एक्सक्लूड करके देखा जाए तो निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर आफरीद ने की है। वो एक ढीली गेंद उन्होंने फेंका, हालांकि ढीली गेंद भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि गेंद गुड लेंथ पर थी, लेकिन पोजीशन जो था मंसूर का एक्सक्विजिट, और मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया, जिस तरीके से गेंद के लाइन पर बल्ले को लाते हुए काबिल तारीफ है। तो यहाँ पर जैसा कि आपने फरमाया अफरीदी ने उस छक्के की बावजूद सिर्फ 12 रन 2 ओवर में दिए, 3 विकेटें उन्होंने प्राप्त किया, और निस्संदेह जैसा कि आपने कहा उसके जरिए अफरीदी इस वक्त साबित कर चुके हैं कि वो भविष्य में एक बेहतर गेंदबाज बन सकते हैं। तो यहां पर 4 ओवर के खेल के बाद कुछ हद तक संभल चुका है। आरंभिक धीमी शुरुआत के बाद एनएम मैंगलोर 24 रन जोड़ चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर का खेल यहां पर बाकी, और देखना यह है कि इन बचे हुए 3 ओवर में एनएम मैंगलोर के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते। फिलहाल आतिफ की उपस्थिति उनके लिए बेहद इस वक्त जरूरी है। बाएं हाथ राउंड द विकेट स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, इंप्रोवाइजेशन, और गेंद इस वक्त फाइन लेग पर बेहतरीन तरीके से रोकी गई है वहां पर, और इस 30 रन के लिए बल्लेबाज दौड़ना चाहते हैं, फिसल गए और इस बार थ्रो को रिसीव करने में असफल। आधे मैट पर तक, आधे पिच तक दौड़कर आ गए थे इस वक्त बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर के तंजीम, लेकिन वापस लौट गए और थ्रो को ठीक तरह से रिसीव करने में वहां पर असफल गेंदबाज, और इस बीच बल्लेबाज इस गेंद पर सुरक्षित अपने स्वस्थान पर वापस लौट चुके हैं। तो 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अरशद की गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को इस वक्त निकाला है बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो यहां पर बेहतरीन स्ट्रोक आतिफ के बल्ले से लगता हुआ, ही जस्ट प्लेड दैट वन विद द ट्विस्टेड बैट, और आतिफ के पास वो काबिलियत है कि वो अंडर प्रेशर बल्लेबाजी कर सकता है। और यहां पर देखिए किस तरीके से उन्होंने तिरछे बल्ले के साथ विद द ट्विस्टेड बैट गेंद को खेला था बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर, और वो उन्होंने पहले ही गैप को भांप लिया था कि डीप बैकवर्ड थर्ड मैन और डीप थर्ड मैन के बीच जो लंबा अंतर है, उस अंतर पर उस अंतर के जरिए रिवर्स शॉट के जरिए अगर गेंद को निकाला जाए तो निस्संदेह चौका उनके पक्ष में आ सकता है। इस बार एक बार फिर से फाइन निकालने में सफल, इस बार काफी स्कोरर, लेकिन फील्डर इस वक्त थर्ड मैन पर मौजूद, और एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, जहां तक एक बेहतर स्कोर एनएम क्रिकेटर्स के खड़ा करने का सवाल है, आतिफ की उपस्थिति उनके लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। बाएं हाथ राउंड द विकेट, अरशद की गेंद फ्लाइटेड, अंदर की ओर आती हुई गेंद, रक्षात्मक तरीके का खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद लाइन के बाहर टिप्पा खाई थी और अपील को सही तरीके से नकार दिया अंपायर ने। हालांकि बल्ले का भीतरी किनारे टकराया था, हिच गॉट इनसाइड एज ऑन दैट, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। इट्स 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस।
निस्संदेह बराबर का टक्कर इस वक्त जारी। और अरशद बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद आतिफ के लिए गॉन फॉर अ माइटी हीव दिस टाइम नॉट सक्सीडेड। शॉर्ट फाइन लेग फील्डर चूके और इस बीच दोबारा जब तक वो अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। और एक बार फिर से अरशद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद सेंसिबल एब्सोल्युटली सेंसिबल। फील्डर काफी पीछे लेकिन कवर पर फील्डर मौजूद है। थोड़ा सा स्कोरर लेकिन गेंद को जब तक वो फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और 5 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। नाउ आई थिंक NM cricket has recovered well after being a slower start. Now the present run rate is now progressing here for them exactly 6.80 runs per over. And still they got 6 wickets kept intact. और 12 गेंदें यानी 2 ओवर का खेल अब उनकी पारी में बाकी। नौफल के हाथों में गेंद और तंजीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। शाम का वक्त 4:50 यहां पर बच चुके हैं। और देखिए अगर आप मैदान के चारों ओर नजर फिराते हैं तो आपको दर्शक ही दर्शक इस वक्त नजर आएंगे। एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। रविवार की शाम को मैदान पर मौजूद ये खचाखच भरे दर्शक और रंगीन यहां पर बनाते हुए और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला युवरत्ना ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत एक शानदार प्रगति यहां पर करती हुई पहला इस बार स्वीप किया। गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर। कहना पड़ेगा गेंद को उछाला था अंतिम क्षण में थोड़े से सफल होते हुए लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और भुगतान उन्हें करना पड़ा। डीप मिड विकेट फील्डर ने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका। तंजीम की पारी समाप्त 5वां विकेट गिर चुका 34 रनों के ऊपर। इट्स 34 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो मैं कहूंगा कम से कम 50 का आंकड़ा यहां पर NM मैंगलोर को पार करना होगा अगर उन्हें गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना है जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। और यहां पर सर्व प्रयत्न करते हुए NM मैंगलोर के बल्लेबाज अपने टीम की कुल रन संख्या को 50 के पार ले जाने का। और जहां तक सवाल है बेहतर स्कोर का तो आतिफ की उपस्थिति पारी के अंत तक NM मैंगलोर के लिए बेहद जरूरी है। और आतिफ अपना लय रिदम लगभग प्राप्त कर चुके हैं और देखना यह है कि वो आने वाले गेंदों में किस तरह की बल्लेबाजी यहां पर करते हैं। और नौफल इस वक्त तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद आतिफ ने करारा स्ट्रोक लगाना चाहा चूंकि अरशद ने विकेटों पर निशाना दागा। ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। कोई बैकअप नहीं वहां पर 2 रन मिलेगा। लेग बाय का इशारा 36 now for the loss of 5 wicket. Absolutely fantastic match is now going on here. Second semi-final of Yuvaratna Trophy 2022 which proudly presented by Team Fortune Mangalore. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो नौफल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए आतिफ के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला लंबॉल पर लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। गेंद को सफल होते हुए ऑन साइड पर उछलना चाहते थे लेकिन मैं समझता गेंद बल्ले के टॉप एज पर टकराने के बाद इस वक्त गई थी लंगोन पर। और यहां पर लंगोन के फील्डर ने कोई गलती नहीं की तो आतिफ का बेशकीमती विकेट यहां पर गिर चुका है। और यहां पर दबाव कुछ हद तक बढ़ चुका है NM मैंगलोर के ऊपर। 36 for 6 and 5 overs completed and 6th over in progress in their innings. So the man is now comes out to the middle as a number 8 batsman for NM Mangalore is Ayaz. He is now slowly walking towards to the crease. तो जब कैच लिया गया था दोनों बल्लेबाज क्रॉस ओवर कर चुके थे तो इस वजह से इस वक्त जैद सामना करने के लिए तैयार। और फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए नौफल इस वक्त एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करेंगे। ये गेंद करते हुए इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन के दिशा में गेंद पहुंची और जैद के बल्ले के बाहरी किनारे से टकराने के बाद और जब तक गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 37 रन 6 विकेट के नुकसान पर 37 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा वाइडर इस वक्त तैनात किया जा रहा है। कवर पॉइंट फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर यहां पर बुला लिया गया है 20 गज के दायरे के अंदर। कवर पॉइंट फील्डर को कोई डीप कवर पॉइंट नहीं। और जहां तक सवाल है थर्ड मैन का तो डीप थर्ड मैन यहां पर
क्रीज पर मौजूद, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर, लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद, डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग ठीक सीमा रेखा के पास तैनात दाहिने हाथ के बल्लेबाज अयाज के लिए। तो नौफल एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर, दिशाहीन गेंद, दिस इज नॉट अ राइट बॉलिंग, दिस इज नॉट अ गुड बॉलिंग एट दिस सिचुएशन। और तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में 2 रन यहां पर प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज, और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर, 39 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस फॉर एनएम मैंगलोर। और नौफल इस भी तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट जैद के लिए, ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा, इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। इट्स 40 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। What a fantastic match is now going on here। और नौफल परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद शफल होते हुए थोड़े से गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बल्लेबाज ने, और 1 रन दौड़कर इस बीच दोनों बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति, 41 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स, स्कोर्ड बाय एनएम मैंगलोर विद द करंट रन रेट ऑफ जस्ट अंडर 7 रन्स पर ओवर। एंड नाउ लास्ट ओवर रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स, अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखना यह है कि इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज बचे हुए 4 विकेटों की मदद से और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। शाम के 5 यहां पर बचते हुए, अगर ठीक तरह से कहा जाए तो 4:55 यहां पर बच चुके हैं। धूप का कहर जरूर कम हो चुका है इस मैदान पर, लेकिन धूप का अस्तित्व जरूर मौजूद। सूरज मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन यहां पर करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है। और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी यहां पर कम होती नजर आती हुई, घने वृक्षों की परछाइयां जो सीमा रेखा पर है, सीमा रेखा के बाहर जो घने वृक्ष हैं, उनके परछाइयां धीरे धीरे पिच की ओर पहुंचती हुई इस बात का संकेत देते हुए कि इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी कम हो रही है। कुल मिलाकर द्वितीय सेमीफाइनल मैच इस युवरत्ना ट्रॉफी 2022 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति कर चुके टीम फॉर्चून मैंगलोर। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, अरशद की गेंद, पहली गेंद नेक्स्ट से बाहर, निशाना इस वक्त दागा, लेकिन काफी वाइड थ्रो, 2 रन मिलेंगे, 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल। तो काफी अतिरिक्त रन यहां पर गोरियंग बॉयज के गेंदबाज प्रदान कर चुके हैं, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 43 रनों पर। अरशद एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, और इस बीच कुछ हद तक फील्डिंग में तब्दीली करते हुए मिड ऑफ फील्डर को कुछ हद तक आगे बुला लिया गया है, और एक्स्ट्रा कवर और गली, शॉर्ट फाइन लेग और मिड विकेट यहां पर मौजूद। अरशद की गेंद, ये गेंद हल्के से गेंद कौन साइड पर खेलना चाहा, गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन पर, बल्ले का नहीं, पैरों पर टकराने के बाद अंपायर का इशारा लेग बाई का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 44 रनों पर। इट्स 44 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 7th एंड द लास्ट इन प्रोग्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द 7th ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज एक बार फिर से, ये गेंद, इस बार गेंद को साइड पर मोड़ना चाहा था, सफल होते हुए गेंद स्टंप्सों पर टकराई, बोल्ड ऑफ हिज लेग्स, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। 44-7। अयाज की पारी समाप्त, अब सिर्फ 4 गेंदें उनकी पारी में बाकी। जस्ट 4 balls नाउ रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। फैजल का आगमन होता हुआ एज ए नंबर 9 बैट्समैन फॉर एनएम मैंगलोर, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज अरशद की गेंदों का एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस श्रृंखला का सीधा प्रसारण देख सकते हैं YouTube पर, और एक बेहतरीन टीम वर्क इस वक्त किंग स्पोर्ट्स के सदस्यों द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। फलस्वरूप एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट हम यहां पर देख रहे हैं YouTube पर। यह गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और स्कोर बोर्ड यहां पर रुक चुका है 44 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद अरशद की हल्के से गेंद को स्वीप कर दिया, पैडल स्वीप गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, सिर्फ 1 रन, क्लीन कलेक्शन, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रनों पर। 45 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन द ओवर नंबर
7 in progress, 7 and a last in progress in fact. दो गेंदे अब बाकी उनके बारे में. जस्ट 2 balls now remaining in the rings. अर्शद ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ निकाला. एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर. बेहतरीन फील्डिंग वहां पर. गेंद को यहां पर रोका गया है अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए. लगभग 7 से 8 कदम और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. ऑफ द बैक फुट गेंद को पंच किया था. एक्स्ट्रा कवर फील्डर एनफील्ड क्लियर करते हुए एक्स्ट्रा कवर से ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर पर और 2 रन बल्लेबाज बट हो चुके हैं. 47 द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. अंतिम गेंद लेकर उनकी गेंदबाज इस वक्त अर्शद तैयार. ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में. आसान सा रन आउट यहां पर होता हुआ और इसी के साथ द स्टिपुलेटेड ओवर्स हैज बीन कंप्लीटेड in NM Mangalore's innings. They finished with 47 for the loss of 8 wickets in the stipulated 7 overs, and now the target for Gori Young Boys is 48. And as far as the required run rate is concerned, exactly 6.86 runs per over they have to score for victory. With the help of 10 wickets, the present equation shows for them 48 runs they have to score in the stipulated 7 overs to qualify for the mega final of this competition. तो क्या होगा देखते हैं. और यहाँ पर सतीश धीमा शुरुआत जरूर था. 3 ओवर में सिर्फ 15 रन बने थे. 3 विकेटें गिर चुके थे. उसके बाद में एक साझेदारी बनी सभी मंसूर और आतिफ के बीच में. मंसूर ने एक छक्का लगाया. उसके बाद आतिफ भी कुछ करारे स्ट्रोक्स उन्होंने खेले. एक बेहतर पारी उन्होंने निभाई 11 रनों की और आखिरकार एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा कर चुका है. 47 रन 7 विकेट के नुकसान पर. 48 रन गोरी यंग बॉयज को बनाने हैं इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए. मैं समझता हूं गोरी यंग बॉयज के पास उनके बल्लेबाजों में क्षमता एबिलिटी है इस लक्ष्य तक पहुंचने की. लेकिन जहां तक एनएम मैंगलोर का सवाल है, इस श्रृंखला में एनएम मैंगलोर की गेंदबाजी काफी घातक रही है और अपने गेंदबाजी के बलबूते पर उन्होंने इस श्रृंखला में कुछ मैचेस जीते हैं. कई मैचेस जीते कहना पड़ेगा. और जहां तक सवाल है अगर एनएम मैंगलोर के गेंदबाज राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर अपनी काबिलियत के अनुसार गेंदबाजी करते हैं, खासकर मुजीब जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी पिछले मैच में और पहले ओवर से एक घातक गेंदबाजी करते हैं तो दबाव इस वक्त गोरी यंग बॉयज के ऊपर आ सकता है, बल्लेबाजों के ऊपर जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे. और मैं समझता हूं 48 रनों का लक्ष्य का पीछा करना उतना मुश्किल नहीं है लेकिन उतना आसान भी नहीं है. और क्या होगा देखते हैं. और जहां तक विजय का सवाल है, इस ढलते हुए शाम में मैं कहूंगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन. लेकिन इस मैच में जो भी विजय होगा जरूर एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहां पर इस द्वितीय सेमीफाइनल मैच के द्वितीय सत्र में यहां पर देखने को मिलेगा. सतीश. Exactly, Gopi. Just seeing the total score of NM Cricketers Mangalore, more than the winning total, it's a fighting total. They can fight back in this total if they bowl well. Because just seeing you just mentioning about the bowling department of NM Cricketers Mangalore, so far the bowlers did a great job. But at the same time, look at the batting department of Gori Young Boys. They came into this semi-final with their batting department as well. All we can see that the batters are in a form. Like Deepak is started to talk with the bat especially in the particular tournament after he's running out of form in the last two tournaments. He came back its natural form in this particular tournament as well. Definitely is going to be a key player now in this particular cricket tournament, particular match. If they wanted to win the match, I think Deepak has to play a big role here. And at the same time, Gopi, another 2 players, Naufal, Shivraj, the experienced batsmen to come as well. So considering all this fact, I think NM Cricketers Mangalore once again need to justify with their bowling if they wanted to win the match. They need to bowl very well. We are talking about Riyaz, we are talking about Atif, we are talking about Tanveer, and Mujib is the one who is definitely going to be a key bowler for NM Cricketers Mangalore because he start bowling with the power play overs. The power play over is always going to be key for the depending team. If they wanted to defend this total, the opening bowler have to bowl very well, the 2 over of the power play. At the same time, Gori Young Boys, if they wanted to win the match, they wanted some productive over, first 2 over of the power play. And Deepak has got a capability of getting some productive over for Gori Young Boys. And wait and see, Gopi, the level of competition between these 2 teams. But I think, Gopi, both the teams has got a potential of winning this match, has got a potential of coming into the big semi-final of big final of this cricket tournament. So from the commentary box and Mujib as always starts with the power play over from the commentary box and bowling right arm over the wicket to Deepak. Deepak down the leg stump going to be wide. This is the one area, Gopi, they have to be very, very strict because they're not really depending 50 plus run. They're depending just 48 runs for the opposition. So they have to restrict these extras. Always whenever there's extras, the batsman definitely going to get some confidence back
because they get extra runs, they got extra deliveries as well. And Mujib again bowling away from us. Right arm over the wicket. Pass umpire to Deepak. Deepak across the line of the net, swinging his bat. Ball is in there for a while. They go. Everyone is going up, but more than anything else, looks like just an excitement. First they appeal for leg before wicket, Gopi. When you are appealing for the leg before wicket, then how it's going to be a catch? That's a simple question, isn't it? When you are appealing for, but that is a part of cricket because they have to appeal for everything. This is the rights. They have to appeal for everything. But first here is to say that bowler appeal for leg before wicket. Umpire says not out. And next then ball went in the air and short third man region fielder takes a catch. Now umpire calling for the third umpire, and it's definitely going to be a difficult job. And wait and see, will it going to be out or not? If it is a ball is involved with the bat, then ball hits the boat going up, and certainly definitely NM cricketers Mangalore will going to get a big wicket here. If it is a ball, bat is not involved, I think Deepak will be safe. But umpire, third umpire, Sriraj once again is experience will go into tested here along with the technicians of King Sports, and wait and see what could be the result. But whatever the result, but both the teams definitely the NM cricketers Mangalore wanted to be the third umpire will go to give out. At the same time, the fans, the followers, the teammates of Goryang boys wanted to see that Deepak will be safe here. But for that, I think it's going to be the decision of umpire is going to be key. And anyhow, Gopi, the out or not out, but certainly the result it's going to be more interesting. And NM cricketers Mangalore, if the decision is going in favor of NM cricketers Mangalore, then I think gate certainly will be open a little bit for NM cricketers Mangalore. At the same time, Goryang boys doesn't want to lose this man, Deepak. He is a man in form. He is a man who got 43 runs in one innings. He got some runs in the two matches as well. And Goryang boys also doesn't want to lose Deepak. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने कहा, और यहाँ पर डिसीजन अगर एनएम क्रिकेटर्स के पक्ष में जाता है तो बहुत ही बड़ा उनके लिए सफलता यहाँ पर कहलाएगा, बहुत ही बड़ी सफलता कहलाएगी, क्योंकि दीपक इनफॉर्म बल्लेबाज है इस श्रृंखला में. उनका विकेट अगर गिरता है तो निस्संदेह दबाव गोरियांग बॉस के ऊपर आ जाएगा, और दीपक का विकेट अगर गिरता है तो दबाव में इस वक्त गोरियांग बॉस आ जाएगा और आने वाले बल्लेबाजों पर काफी हद तक दबाव रहेगा. और दीपक को निश्चित रूप से दीपक को खोना नहीं चाहेगी गोरियांग बॉयज, क्योंकि दीपक एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो करारे स्ट्रोक्स खेलने की क्षमता रखते हैं, खासकर पावर प्ले ओवर में एक लंबी पारी खेलने की भी क्षमता रखते हैं. इस श्रृंखला के एक मैच में सिर्फ 18 गेंदों में 42 रन उन्होंने बनाए थे, खासकर मेरे ख्याल से मंगलादेवी क्रिकेटर्स के खिलाफ. और निस्संदेह यहाँ पर वो अपना लय प्राप्त कर लेते हैं तो निस्संदेह गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं. तो यहाँ पर दीपक का विकेट दोनों टीमों के लिए जरूरी है. विकेट उखड़ता है तो विकेट गिरता है तो एनएम क्रिकेटर्स के लिए बेहतर होगा, अगर विकेट बचता है तो गोरियांग बॉयज के लिए बेहतर होगा. Absolutely. Now the not out decision coming from our umpire Sriraj, and very difficult, Gopi. If you go to the international the matches, the technology is so much advanced. They will have a snickers to find out whether the ball has got the bat involved or not. They got a snickers. Then we'll going to get, of course, a ball has got contact with the bat. But here, very difficult to get. And Snicko, it's called the Snicko, and definitely it's going to be a very difficult in a limited availability of the technology here to get that bat involved or not. And certainly it's a benefit of doubt always going into the favor of a batsman. And the right decision there from umpire, third umpire Sriraj, and even the field umpire as well. From the commentary box, and right arm Mujib balls to Deepak. Again a little bit down the leg stump, try to transfer on side, ball is running to define leg region, but fielder is very quick in the negation, so that batter have to settle for the single. With that single, scoreboard moves on to 2 on the board. I think in this situation, Goryang boys have to battle for each and every runs, because NM cricketers Mangalore, they doesn't want to lose here. They definitely knows that it's very important for them to come back into winning track. They wanted to at least one title here in this season if they wanted to back in this season, and that's why they're taking that match is very seriously. And at the same time, I request NM cricketers Mangalore, please don't waste the time. As per the request of the organizer, they wanted to finish the match as soon as possible, and
totally in this particular tournament, every teams are really cooperative with the organizer as far as finishing their overs within 30 minutes. The 7 hours they have to complete. Within 30 minutes they have to complete. And I once again request captain of NM Cricketers Mangalore, please cooperate with the organizer. And again from the commentary box end, Mujib, right arm over the wicket to Naufal. Naufal this time drags that one, try to hit that one on the onside region, miss it completely, wait for the umpire signal, it's a bye. Wicketkeeper behind the stump, missed the ball completely from his hand. Frustration for the bowler, frustration for the captain of NM Cricketers Mangalore. So with that single, scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket. Three for the loss of with 3 without loss of any wicket. 45 more runs required for the victory. Mujib from the commentary box and right arm over the wicket. Balls this time lofted, Deepak doesn't quite hold up that one properly. Oh, luckily that ball is didn't really carry to the fielder, that Deepak Sekawa. Ayaz, the fieldsman there, the Deepak Sekawa tried his level best to take that catch, but ball just falling short of that fielder. Look at the frustration from the fielders of NM Cricketers Mangalore. And Deepak's really dealing with some luck here. And wait and see how well he able to convert that luck into one very good innings for his team, Gori Young Boys. 5 without loss of any wicket in the over number first in progress. Mujib again bowling with a short run up. Right arm over the wicket to Deepak. Deepak swinging his bat, but a lovely delivery there from Mujib. Know exactly what Deepak will going to do this delivery. He knows that Deepak is a very aggressive batsman. He wanted to dismantle him. He wanted to get some big shot from his ball. That's why the ball little bit away from the bat of Deepak, outside the line of off time with a pace in his bowling. And Deepak completely missed out that delivery again. This time again going for the expansive drive, not quite getting a hold of that one. Proper chance of run out there in the non-strikers and overthrow coming up. A good backup there, the fielder. And just 1 run for Deepak in that occasion. A tight over. Absolutely, it is a very tight over there for Mujib. Just 6 runs coming from that over. So after completion of over number 1, it's 6 without loss of any wicket. And Gopi, 48 is a target. 6 is a first over. I think it's a much better over. Seeing the fact that Naufal and Deepak, the 2 very good dangerous batsmen, are in the middle. Keeping these 2 batsmen quiet means only Mujib can do that kind of the bowling performance for NM Cricketers Mangalore. बिल्कुल ऐसी गेंदबाजी सिर्फ मुझी भी कर सकते हैं सतीश, और दीपक और नौफल जैसे बल्लेबाजों को पावर प्ले में खामोश रखना उतना आसान नहीं है। और मैं समझता हूँ पहले ओवर में मैं यकीन के साथ कहूँगा कि पहले ओवर में मुजीब ने अपनी काबिलियत के अनुसार गेंदबाजी की है। अब रहा सवाल दूसरे गेंदबाजों का, तो देखते हैं दूसरे गेंदबाज अब गेंदबाजी पर उस छोर से लगाए जा रहे हैं रियाज। तो देखना है कि मुजीब ने जिस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर की है, क्या रियाज भी उसी तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। अगर रियाज भी उसी तरीके की कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजों पर दबाव डालते हैं, तो निस्संदेह दबाव बल्लेबाजों पर आएगा गोरी यंग बॉयज के ऊपर। देखते हैं इस ओवर में उनकी पारी में क्या होता है। Absolutely, Gopi. And meanwhile, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆತ್ಮೀಯರು Manoj Mugrodi, one of the best wicketkeeper batsmen who represented Friends Bowl for a long time. So a warm welcome Manoj for this wonderful cricket tournament on behalf of cricket lovers and on behalf of organizers. So coming back to this match, Gopi, exactly you are mentioning about this match is now certainly going to be very interesting because of that first over which is bowled by Mujib. It's a very quiet one. Of course, he didn't got the success, but I think more than the success, he managed to put some break on the run rate. Now, equation 36 balls remaining. They have to get another 42 runs to win this match. Go with that 6 difference between the run and ball. I don't think it's going to be a big difference in the present cricket. And but they have to increase that difference for NM Cricketers Mangalore if they wanted to win the match. From the far end, Riaz, right arm over the wicket. Bounce to Deepak going for the off drive. Wicket keeper behind the stump. Not really up to the mark. Not really up to the mark. Frustration for the bowler. Bicycle umpire Roland Pinto. The warning number 1 has been given to the batsman, not for the bowler. And the batsman Deepak got a warning from umpire Deepak there. You need to be very careful when he was running between the wicket because there is no other excuse if he goes on continue that mistakes.
And we see 7 without loss of 1 wicket. The wicket keeping is one of the important part of cricket sometimes, because each and every run is very crucial in this big semi-final. You cannot give that kind of runs very cheaply for the opposition like Gori Young Boys. And NM Cricketers Mangalore realizes that, and frustration now for the captain of NM Cricketers Mangalore. Riyaz taking his own time, is setting each and every delivery, is setting a field from the far end. Riyaz. So already it's a 50 minutes for this match. This is the over number second in progress. Appeal for leg before wicket. They're going for the run, chance of run out in that occasion. Directed required, but the fielder missed the wicket, but hitting now fall in the occasion. Leg by call by umpire. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard was on to 8 on the board. And 50 minutes means, Gopi, it was actually 30 minutes, 60 minutes. Almost a 2 innings time. It is just a second in progress. This is not a good to see. The time concept is very important. The punctuality is very important in cricket. And I think I once again request both the teams make it past NM Cricketers Mangalore as well as Gori Young Boys. 8 without loss of any wicket from the far end. Riyaz with a short run up. Right arm round the wicket past umpire Roland Pinto. To Deepak Lofted. Oh, that was a ball high up in the air. Deep extra cover fielder takes the catch. This is certainly a lucky wicket here for NM Cricketers Mangalore. Look at the reaction of Riyaz. He put two hands his head. He thought that the ball is gone out of the park. But the fact that Deepak didn't really got that one right from the middle of the bat. And he played that one very high up in the air. That's why he didn't got the distance right. But it's definitely going to be a lucky breakthrough for NM Cricketers Mangalore. The wicket of Deepak is back into pavilion. बिल्कुल सतीश, पहले जिस तरीके से दीपक ने गेंद को उछाला था तो तुरंत गेंदबाज रियाज ने अपने सिर पर हाथ धर लिए थे कि शायद गेंद सीमा रेखा के पार चली जाएगी, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को काफी ऊंचा उछाला था और स्ट्रोक्स में पर्याप्त दम नहीं था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और गेंद काफी ऊंची उछलने के बाद लंबा फील्डर द्वारा लपक ली गई और यहां पर दीपक का विकेट गिरना निस्संदेह गोरी यंग बॉयज के लिए यहां पर ड्रॉबैक साबित हो सकता है, क्योंकि दीपक का इनफॉर्म बल्लेबाज इस श्रृंखला में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन बल्लेबाजी के जरिए दिया है और यहां पर उनका विकेट गिर जाने के बाद अब स्ट्रेट अवे दबाव गोरी यंग बॉयज के ऊपर. Absolutely, Gopi. The pressure straight away on to Gori Young Boys. Suddenly, because they lost the wicket of Deepak, the man in form from the bat, one who got a 43 plus runs in one innings. Certainly, they will going to feel some pressure here. But these two batsmen can the pressure off because they got ability. The batsman like Naufal and now the new batsman came into middle, Ashad. One more very good striker of the ball. Fantastic left-hand batsman is in non-striker end. Riyaz from the far end. Right arm over the wicket, bounce. Oh, lofted. Beautifully played that one. No need to run for that. One bounce over the row for 4 runs. Outstanding cricketing stroke, Gopi. This is now staying. Nothing much wrong with the line of the delivery. Ball is outside the line of off-time. Even the ball came along the carpet. And look at the way he hit that ball. Just it looks like he's cutting the wood from the axe. And that was a fantastic. Absolutely, it was a magnificent stroke there from Naufal. He's one of the danger batsmen as far as the opposition NM Cricketers Mangalore is concerned. Especially when you're playing the big matches like semi-final and quarter-final and the final, Gopi, Naufal is always delivers. He always delivers his best. That's a good sign of good players. They're the one they're playing under pressure games. They love to play under pressure games as well. And now look at that one, absolutely fantastic that was. I want to see it again and again because that was really going to delightful to watch that kind of cricketing stroke, especially when Naufal hitting right from the middle of the bat. Now he's got a protection in the deep backward square after seeing that stroke from Naufal. 12 for the loss of 1 wicket from the far end. Riyaz. Right arm over the wicket, bounce. Shuffled across the line up, looking for the improvisation. Chance of round there. Oh my goodness! Both the batsmen are in the same end. Naufal back into pavilion. Total misunderstanding between the wicket, costing a huge wicket for Gori Young Boys. And NM Cricketers Mangalore, they got a one more huge wicket, Gopi, in the name of Naufal, because the previous delivery hit the 6. Very next ball, unfortunately, is back into pavilion, and I think it's definitely going to be a disaster for Gori Young Boys. बिल्कुल सतीश, पहले पिछले गेंद पर चौका झटने के बाद
कुछ हद तक आत्मविश्वास भरे नजर आ रहे थे नौफल, और अगली गेंद पर उन्होंने गेंद को सफल होते हुए स्वीप करना चाहा था, लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथों से चूकी, गेंदबाज के बल्ले को वंचित करने के बाद। और जहां तक का सवाल है, विकेट कीपर के हाथों से जैसे ही गेंद छूटी, बल्लेबाज नौफल रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जब तक वो उन्होंने जाना कि गेंद वहीं पर है, गेंद पर फील्डर लपक रहे हैं, उन्होंने वापस लौटना चाहा और नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने 2 कदम आगे जरूर बढ़ाया, लेकिन ये देखते हुए अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए कि वहां पर फील्डर गेंद तक पहुंच चुके हैं, तो नौफल को यहां पर वापस लौटने का कोई मौका नहीं। और नौफल का विकेट का पतन निस्संदेह गोरी यंग बॉयज को परेशानियों के दलदल में और ढकेल चुका है। Exactly, Gopi. That definitely Gauri Young Boys now started to feel the pressure because two very good batters are back into pavilion in the form of Naufal and in the form of Deepak. Now all up to these two batsmen. So they are the very experienced campaigner for the side of Gauri Young Boys. Shivara just came into middle. Man who's got 100 in this particular cricket ground, and now I think he's the one who can take the match away from the opposition. Along with the Ashad, they need to play some responsible innings. So far, I think Riaz is did a damage here. He got one wicket, one in the form of run out, but altogether it's a very good over for NM Cricketers Mangalore. From the far end, Riaz with a short run up, right arm over the wicket, bowls to Shivraj this time stepped that one quite nicely down to square leg region. Good fielding there by the fielder at square leg, quickly moving towards his left and fields the ball, and over number 2 is completed. After completion of over number 2, Gauri Young Boy chasing 48 to win this match, searching for the right track, still struggling in the middle, 13 for the loss of 2 wicket. Now straight away equation that I want to see, Gopi. 13 for the loss of 2 wicket. I request NM Cricketers Mangalore to make it past because they have to finish this match early. We have to play another big final. So 17 minutes you took to bowl 2 overs. You took 17 minutes to bowl 2 overs. This is not a good sign to see, because the 4 minutes, I think it's as per the rules and regulation of the cricket is concerned, you have to finish 1 hour and 4 minutes. That means 8 minutes you have to complete 2 hours, and you took already 9 minutes extra. And this is the time of the 4 overs, and that's what to see, Gopi, because the organizer definitely feeling some pressure, because they have to finish the match, the final, before the dark taken place. Everybody knows that after 6:30, it's very difficult to organize the big, and each and every spectators want to see that the final will be of 7 hours. Not lesser than that. That's very important in cricket, Gopi. That time sense is very important. So I request once again NM Cricketers Mangalore to make it past, and 13 for the loss of 2 wickets. Still there 35 more runs required for the victory from the community box, and right arm over the wicket, Muji balls straight away. This is a technically very sound player. Look at that one, the way he is get the placement right down to cover point and backward point region. Shivaraj, he is really the best player in this situation for Gauri Young Boys especially, and he and Ashad, the left and right combination. Definitely, Gauri Young Boys not really that much of pressure here if they're able to build the partnership. The partnership is which is more important for Gauri Young Boys, and 14 for the loss of 2 wickets. 35 more runs required for the victory. Mujib bowling with the short run up. Fielding change here. Deep third man, deep backward point coming little bit square towards the deep cover point region. The mid on going back to deep short mid wicket region. Long on is there, long off is there, deep backward square leg is there. One fielder at wide is long off. Ashad is on strike. Mujib. ದಯಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. NM Cricketers Mangalore. 14 for the loss of 2 wicket. Mujib bowling away from us. Right arm over the wicket. This time, loft it. I don't think he got the middle of the net. Fielder is underneath it. The danger man departs. NM Cricketers Bangalore got a big wicket here again. Ashad, the back into pavilion. And now suddenly, Gopi, the more pressure now for the Gauri Young Boys, because I know the new batsman coming to the middle. Definitely they have to see that they have to build a partnership, and at the same time they have to increase the run rate as well. The required run rate is creeping up. The wickets are tumbling as well for Gauri Young Boys, and now NM Cricketers Mangalore looks like they're suddenly slowly back into this game.
बिल्कुल सतीश, यहाँ पर अरशद का स्ट्रोक जो था, देखिए किस तरीके से टॉप एज पर गेंद टकराई थी, हवा में उछली थी। अरशद छक्का लगाना चाहते थे, जो दबाव उनके ऊपर बढ़ रही थी उस दबाव को कम करना चाहते थे, और यहाँ पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर द्वारा लपक लिए गए। और अब एक बार फिर से इक्वेशन की ओर नजर फिराते हैं। 34 रन और चाहिए, 28 गेंदें बाकी, 28 बॉल्स टू गो एंड 34 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और मैं समझता हूं यहाँ पर कमबैक करने का मौका जरूर है, सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनानी होगी, मैं समझता हूं। और शिवराज जैसे बल्लेबाज यहाँ पर क्रीज पर मौजूद है, उनको एक साथी की जरूरत है। और प्रताप जो कि उनका इंक्लूजन इस मैच में किया गया है, और प्रताप भी एक बेहतर बल्लेबाज जाने जाते हैं। और अगर एक साझेदारी यहां पर बनती है, हर गेंद पर रन कम से कम सिंगल्स भी है, दो बल्लेबाज बनाते हैं, तो निस्संदेह यहां पर गोरी यंग बॉयज इस मैच में वापस आ सकता है। फिलहाल तख्ता कुछ हद तक इस वक्त एनएम मैंगलोर का भारी लगता हुआ। Absolutely, Gopi. Look at the performance of Mujib. It's outstanding today. His bowling picked up some very important wickets for his team this time again. Look at the delivery. Absolutely, there's a lot of pace in his bowling. But I want to see the decision for umpire. Will it go into a bye? Yes, it is a bye. And one more frustration for Mujib there. Big wicket keeper behind the stump, not really able to collect the ball. One more addition to total. Scoreboard moves on to 15 for the loss of 3 wickets. Another 33 more runs required for the victory for Gori young boys. Nothing much worried about this total, Gopi, because everyone knows that this is a ball is almost hard in the nature. Ball is really coming to the bat very well, and one single partnership, the partnership for 15 to 20 runs, which is badly required for Gori young boys if they wanted to win the match. But NM Cricketers Mangalore doesn't want that partnership. That's why they're picking up wickets in a frequent intervals. Pratap, as just like my friend Gopi is mentioning about the inclusive of Pratap, will going to strengthen the batting department of Gori young boys. There's no doubt at all. He's a very cool customer. As cool as deep waters of the lakes, calm lakes, and he's very cool and calm, but he's got ability of building up the partnership. He's a kind of batsman who loves to rotate the strike, and in the middle of that singles, Gopi, he got the ability of hitting some big shots as well. Again, Shivaraj chipping ball down to short coverage, and they're looking for the second. In comes the throw, and they completed a couple of runs. Excellent running the wicket. I think the full marks goes to Pratap in this occasion, Gopi, because Pratap is calling Shivaraj for the second. Pratap quickly realizing that Mansoor is charging into the ball, missed the ball completely from his hand, and he quickly realizing that the fielder from the deep cover have to run front, so ample time here to come back for the second. Good judgment of the run, and scoreboard now 18 for the loss of 3 wicket. 30 required for the victory. The over number 3 in progress. Mujib so far is bowled very good line and line, very tidy line and line. Improvisation, a lovely shot by again. It's not really getting that much of speed. I'm really surprised, Gopi, but once the ball is got contact with the Sivaraj, looks like the ball is quickly passing there, but maybe that ball is got a extra bounce in the direction, so that the fielder from short third man quickly went to the direction of the ball, fields the ball. One more single is added to total scoreboard now moves on to 19 for the loss of 3 wicket. Now, equation 29 more runs required for the victory, and they got 24 deliveries, and Gopi, it's just a 5 difference. Will you believe that this difference going to be a very big difference in this condition for Gori young boys? Of course, they lost wicket 3. Still batting to come. This 5 difference, I think, in this situation, I don't think Gori young boys will feel much pressure than NM Cricketers Mangalore. They wanted some wickets, they wanted some economical over. बिल्कुल जो डिफरेंस है कुछ ज्यादा नहीं है। जब पारी की शुरुआत गोरी यंग बॉयज ने की थी तब वो फासला 6 का बरकरार था, 42 गेंदों में 48 रन बनाने थे। अब फासला लगभग वहीं तक बरकरार है, 1 कम हो चुका है, 5 का फासला है। और मैं समझता हूं यहां पर सेंसिबल क्रिकेट की ही जरूरत है इस वक्त गोरी यंग बॉयज को, और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज यहां पर एक सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हैं। हर गेंद पर कम से कम लेकिन सिंगल्स उन्हें बटोरना होगा। और जहां तक एनएम मैंगलोर का सवाल है, इस वक्त जो ये फासला है बचे हुए गेंद और बनाने हुए रन के बीच का 5 का, इस फासले को उनको बढ़ाना होगा। न सिर्फ डॉट गेंदों के जरिए उस फासले को बढ़ाना होगा, उस डिफरेंस को बढ़ाना होगा, बल्कि विकेटें भी उन्हें यहां पर उखाड़ने होंगे। यहां पर कुछ हद तक स्लाइट बिट ऑफ तख्ता इस वक्त एनएम मैंगलोर का भारी लगता हुआ, लेकिन एक बेहतर साझेदारी निस्संदेह गोरी यंग बॉयज को सही मंजिल की ओर अग्रसर कर सकती है। Exactly, Gopi. And Cricketers Mangalore maybe the little bit looks like they're in upper hand by picking up 3 wickets. This is a big mistake there from Atif. Each and every extra definitely going to release the pressure from the batsman. This is not a good start there from Atif. He bowled a big wide.
and everybody thought that it might not only the wide, it will going to defeat that short third man fielder as well. It's going to be a 1+5. It's going to be 1+4 is 5 runs. It's definitely going to be a match out of the hands of NM Cricketers Mangalore. But the fielded here by the short third man fielder, luckily, and the scoreboard now is a 21 for the loss of 3 wicket. Now, it's going to be very interesting now. 27 more runs required for full toss delivery, and Pratap already mentioned he's a cool and calm customer, but that much of cool and calm is not required at Gopi. Juicy full toss in that occasion. Everyone thought that it might be a Pratap will go into hammer that one down to mid-wicket region. Maybe there's a weapon of Atif. He's quite deliberately bowled that full toss, Gopi, just tempting the batsman to go for the big shot, and he was able to pick the wickets. And Pratap did manage. Oh, bowled him, cleaned him up. Yuvaratna is back into pavilion. That's the wicket what NM Cricketers Mangalore wanted here, but not the captain of Gori Young Boys. Everybody, we are talking about Shivaraj Gopi. He's a very experienced campaigner, and we are talking about if the Gori Young Boys wanted to win the match, this man have to play the sheet ankle role. But in this position, in this condition, difficult condition, losing Shivaraj means Gori Young Boys maybe they are on the back foot. बिल्कुल शिवराज सेंसिबल क्रिकेट खेलने में माहिर है और यहाँ पर गेंद को उन्होंने हल्के से ऑन साइड पर मोड़ना चाहा था, मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी, लगभग इस गॉट इनसाइड एज ऑन दैट आई थिंक सो, और ड्रैग डाउन टू द स्टंप्स। अंतिम क्षण में शिवराज ने गेंद को स्टंप्सों पर खींच लिया और शिवराज का विकेट का गिरना, जैसा कि आपने फरमाया सतीश, निस्संदेह गोरी यंग बॉयज के लिए एक बार फिर से ड्रॉबैक यहाँ पर साबित हो सकता है। हालांकि कुछ हद तक संभल चुका था प्रताप और शिवराज की साझेदारी से, और ये साझेदारी बन ही रही थी, ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जम ही रहे थे कि यहाँ पर विकेट गिर चुका है शिवराज का बोल्ड आउट के रूप में। अब मैं समझता हूं दबाव वापिस गोरी यंग बॉयज के ऊपर गिर चुका है, लेकिन ना अभी भी मौका जरूर है। कुल मिलाकर अब गेंदें बाकी हैं 22 और रन चाहिए 26, 26 टू गेट फ्रॉम 22 डिलीवर्स, और फासला उतना कुछ ज्यादा नहीं है। और अभी भी एक साझेदारी अगर बनती है क्रीज पर आने वाले जो बल्लेबाज नए आए हैं और प्रताप के बीच, तो निस्संदेह गोरी यंग बॉयज वापिस अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो सकता है। लेकिन यहां पर एनएम मैंगलोर की ओर से आतिफ ने यह विकेट उखाड़कर गोरी यंग बॉयज के ऊपर के दबाव को और बढ़ा दिया है। Exactly, Gopi. Now the pressure is off. At the same time, they just open the gate here for NM Cricketers Mangalore. They can win the match if they are able to pick the wickets in a regular intervals. In each and every overs, they are able to pick the wickets. NM Cricketers Mangalore can win the match. But the Gori Young Boys doesn't want to lose the wicket. They want to get some runs. So look at that one. That's what the beauty of cricket, Gopi. And whenever the settled batsman back into pavilion, whenever the new batsman coming into the middle, it's not so easy to handle the pressure, because each and every ball is a runs required for Gori Young Boys, and each and every dot ball will going to increase the pressure for the batsman. So Ashit, the new batsman, just came into middle, tried to play the sweep shot, missed the ball completely from his bat, and one more very important dotted delivery there for Atif. 22 for the loss of a 4 wicket. 26 more runs required for the victory. Atif from the far end, right arm over the wicket. One more wicket. One more wicket. I asked the fielder in the right position to take the catch. One more is a bad shot selection. It's not a good shot selection, Gopi. When you are required to get some get some partnership going, you are playing unorthodox cricketing stroke against the bowling of Atif. I think it's a bad shot selection and he pays the penalty for that. एग्जैक्टली सतीश, बैट शॉट सिलेक्शन था इस वक्त। गेंद को तिरछे बल्ले के सहारे इस वक्त खेलना चाहता है। अगर स्ट्रेट बैटेड भी खेलते तो सिंगल्स उनके पक्ष में आ सकता था, क्योंकि आतिफ की गेंदें कुछ ज्यादा टर्न नहीं लेती हैं, और यहाँ पर इस गेंद की लाइन को समझकर अगर स्ट्रेट बैटेड स्ट्रोक खेलते तो शायद स्ट्राइक रोटेट यहाँ पर कर सकते थे, प्रताप को स्ट्राइक मिल सकता था। लेकिन इस स्ट्रोक को वहां पर उन्होंने तिरछे बल्ले के सहारे विद ट्विस्टेड बैट खेलना चाहता, लेकिन मैं समझता अंतिम क्षण में गेंद कुछ ज्यादा उछाल एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए उनके टॉप एज पर टकराए और आसान सा कैच पहुंचा यहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन पर, और हर्षित का विकेट यहां पर गिर चुका है। अब मैं समझता हूं दबाव गोरी यंग बॉयज के ऊपर काफी बढ़ चुका है। Absolutely, pressure is on now. The wickets are tumbling here, absolutely tumbling. I don't know why they are feeling that much of pressure, because the game is absolutely the pressure game. Semi-final, and just look at the Gopi, why the players like Karna is missing this big games like semi-final. It's always is very important to have the players like Karna. When you are the captaining, leading your team, you are responsible to be in the team. And I think maybe there's missing some experienced player like Karna, and not playing the semi-final. From the far end, Atif will go into ball, and Sushant is one more very talented left-hand batsman came into middle, and wait and see how
Sushant will going to contribute from his bat for his team. So far, Atif is really looking pretty good. He's on fire. Down the leg stump, going to be a chance here for an out. Direct, it might be the chance for one more wicket here for NM Cricketers Mangalore. But here, 1+1. Two gifted runs here for Goryang boys. All kind of drama out here in the UCG cricket ground. Look at the crowd, Gopi. Absolutely fantastic to watch, isn't it? The jam-packed stadium out here in the UCG cricket ground. They are really witnessing one more good match here of Yuvaratna Trophy 2022, proudly organized by Team Fortune Mangalore in this most beautiful UCG cricket ground. So 1+1, 2 bonus runs here for Goryang boys. The scoreboard is 24. That means half of the job is completed. Now another half of the job is required here for Goryang boys to win this match. 24 required, 24 completed, 20 balls remaining. Full toss delivery. Pratap hoisted it over. Down to deep mid wicket for a 6. What a shot there from Pratap. Gopi, you remember me or not? The previous one, when he got a juicy full toss, I told that not required that much of calm. Little bit aggressive is required. This time he got a full toss. And then he just sending me message. I am not that much of calm. I got ability of dispatching ball to mid wicket region. And that was absolutely a big mistake there from Atif. बिल्कुल सतीश, पिछले फुल टॉस गेंद पर फायदा नहीं उठा पाए थे प्रताप। तब आपने फरमाया था क्यों आपने इसका फायदा नहीं उठाया। लगभग वहां पर कुछ हद तक गलत लाइन पर खेल गए थे और गेंद फुल टॉस गेंद को ठीक तरह से समझ नहीं पाए थे, लेकिन यहां पर इस फुल टॉस गेंद को बिल्कुल पूरी तरह समझते हुए गेंद को इस वक्त कनेक्ट किया डीप मिड विकेट पर और फुल टॉस को कबूल करते हुए गेंद को इस वक्त डीप मिड विकेट पर खेल दिया 6 रनों के लिए और इशारों से कहा आतिफ से धन्यवाद। तो यहां पर आतिफ जैसे ही गेंद छक्के पर गए, आतिफ सिर पर उन्होंने हाथ धर लिया। अब 18 रन चाहिए 19 गेंदों पर। Absolutely, Gopi. Now there's 18 runs to get from 19 balls. The equation looks to be very, very easy now for Goryang boys, but cannot underestimate Gopi. Cannot underestimate the famous slogan in cricket: "Small leakage can sink a big ship." Here, you cannot underestimate this 17 runs in 18 balls. And 12 runs came from that over, Gopi. He picked up 2 valuable wickets, but the fact that look at that, Gopi. We're talking about that. Look at that, the one big shot. One big shot, how it's going to be. One big shot is changing the complexion of the match. That's what you're talking about. The hardness of the ball. Hardness of the ball. That was maybe the big factor in this particular cricket tournament. And because of that, Gopi, maybe that was a full toss, juicy full toss. But you have to deliver, no? Of course, the full toss, but you have to deliver that one to mid-wicket region. And he delivered that one in an important time. And just like you're mentioning, when Pratap came into middle, you told that inclusive of Pratap strengthening the batting department of Goryang boys, and he's proved that one. एग्जैक्टली सतीश, प्रताप इस वक्त साबित कर चुके हैं कि उनका इंक्लूजन कितना महत्व यहां पर रखता है। तो इस वक्त 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं 31 रन 5 ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ನುಕ್ಸಾನ್ पर ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎನ್ಎಂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಈಗಾಗಲೇ 36 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಎಸೆದಿದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು। ಆದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। तो यहां पर सतीश बिल्कुल सही बात आपने फरमाया, प्रताप का इंक्लूजन कितना महत्व यहां पर रखता है ये उन्होंने साबित किया पिछले ओवर के अंतिम 5वें गेंद पर छक्का जड़ने के बाद। अब इक्वेशन सीम्स टू बी मच इजियर नाउ फॉर गोरियांग बॉयज। 17 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज और यहां पर फील्डिंग में एक बार फिर से जमावट करते हुए डीप बैकवर्ड थर्ड मैन को इस वक्त तैनात किया गया है और गेंदबाज इस वक्त रियाज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। देखते हैं इस गेंद पर प्रताप क्या करते हैं। 17 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवर्स, व्हाट अ मैच इज नाउ गोइंग ऑन हियर। और इस बीच रियाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रताप के लिए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, हवा में गेंद, लेकिन गेंद इस वक्त निकल चुकी है इनटू द गैप। गेंद जाती है गेंद को फील्ड किया गया, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं।
सो फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट, इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद हमें में जरूर थी लेकिन कवर पॉइंट फील्डर के दाईं ओर से निकलती हुई और डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और प्रताप ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर गोरी यंग बॉयज के लिए शीट एंकर्स का रोल यहाँ पर अदा करते हुए, जहां तक गोरी यंग बॉयज के विजय के उम्मीदें आशाएं बरकरार है, तो प्रताप की उपस्थिति इस वक्त उनके लिए बेहद जरूरी है। और तो जहां तक मैच टाई होता है, अगर मैच टाई होता है तो विकेट का कंपैरिजन यहां पर देखा जाएगा। और इस बीच अंपायर रुके हुए हैं और खेल भी कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। और देखते हैं यहां पर अब चाहिए 15 रन विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी हैं 17, 15 to get from 17 balls. ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ತಂಡದವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 6 ಓವರ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ತಮಗೆ 5 ಓವರ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನೀವು ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಓವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 33 2 रन बन चुके हैं, अब 15 रन चाहिए और गेंदें बाकी हैं 17, 15 to get from 17 balls. What a fantastic match is now going on here. गेंदबाज इस वक्त तैयार, इस बीच रियाज दाहिना हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए प्रताप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार हल्के से पुश, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल. गेंद के धीमेपन को पहचानते हुए प्रताप ने बल्ले और पैर के साथ लाते हुए फॉरवर्ड शॉट लगी दिशा में गेंद को ढकेला और जब तक फील्डर पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर. प्रताप और सुशांत इस वक्त पारी की भागदौड़ को संभाले हुए. सुशांत नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और इस वक्त राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रियाज. फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और एक बार फिर से रियाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सुशांत के लिए और दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. फील्डिंग में एक बार फिर से जमावट करते हुए सुशांत सामना करते हुए इस वक्त रियाज की गेंदों का. ये गेंद रियाज की सुशांत के लिए, ये गेंद अच्छी गेंद, स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, कवर पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए थ्रो पहुंचा, मंसूर थ्रो को रिसीव कर पाए, करे जरूर, विकेट पर भी उन्होंने गेंद को दागा, निशाना उनका टकराया, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दूसरा रन प्राप्त कर चुके हैं. तो मैं समझता हूं अब गोरी यंग बॉयज फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर इनिंग्स दे आर लुकिंग ऑन टॉप, दे आर लुकिंग राइट ऑन टॉप नाउ. 12 to get and the ball is remaining 15 balls and 12 runs. What a fantastic second semi-final match is now going on here. Absolutely jam-packed stadium. रविवार की शाम को और रंगीन बनाते हुए दर्शकों से खचाखच भरा हुआ यह मैदान और दर्शक निस्संदेह रविवार की शाम को रंगीन यहां पर बनाते हुए. गेंद परिवर्तन के दौर पर धीमी गेंद, बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग, जस्ट चेंज ऑफ पेस और गेंद को इस वक्त खेल दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 14 गेंदें बाकी, 12 रन चाहिए. द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स. विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. रियाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज सुशांत के लिए यह गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त खेल दिया, खूबसूरती के साथ गेंद निकलती हुई, लेकिन गेंद पर ज्यादा दम नहीं, गेंद में ज्यादा दम नहीं और स्ट्रोक इस वक्त फील्ड की जा चुकी है. गली क्षेत्र पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका. 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर और कुल मिलाकर 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर. अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी रियाज के, 13 गेंदें बाकी, 11 रन चाहिए. 11 runs they have to score for victory in remaining 13 deliveries. और इस ओवर में अंतिम बार रियाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. प्रताप एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रियाज की गेंदों का. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रताप के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ निकाला, बड़ी स्लोगन पर फील्डर पहुंचते हुए क्लीन कलेक्शन, इन कम्स द थ्रो इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर एंड बिफोर दैट द बैट्समैन हैव गॉट plenty of time to cross over for this single. 38 for the loss of 5 wicket. 10 runs to score from 12 deliveries. और सतीश निस्संदेह यहां पर गोरी यंग बॉयज अब
उनका तख्ता भारी लगता हुआ। अब मैं कहूंगा एनएम मैंगलोर को कमबैक करने के लिए एक घातक गेंदबाजी इस ओवर में करनी ही होगी। Exactly, Gopi. It's going to be very decider over, more than the decider over for Gori Young Boys. I think it's a decider over for NM Cricketers Mangalore. They needed some very good over. Very economical wicket taking over is badly required for NM Cricketers Mangalore. And more than that, I think, Gopi, I want to see how many wickets NM Cricketers Mangalore have lost. NM Cricketers Mangalore lost 8 wickets, Gopi, and Gori Young Boys lost 5 wickets. That means 3 wickets they are header than their opposition, NM Cricketers Mangalore. That means, Gopi, required run is 10, and even they able to get at 9 runs. If the match is will going to tie, and in the wicket average, I think Gori Young Boys definitely going to win this match, and that's so important here for NM Cricketers. Not only they want to get some economical over, at the same time they want to bowl some, want to get some wicket as well. एग्जैक्टली सतीश, ये ओवर देखते हैं आतिफ के हाथों में इस वक्त गेंद है और देखते हैं जो मैजिकल गेंदबाजी की जरूरत है इस ओवर में वो किस तरीके की मैजिकल गेंदबाजी करते हैं। दाहिना ओवर द विकेट, पहली गेंद प्रताप के लिए, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, इस वक्त ठीक तरह से खेल नहीं पाए और गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर, बल्ले का निचला हिस्सा यहां पर टकराया था, बॉटम एज ऑन दैट, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 39 for the loss of 5 wickets, 9 to get now, 11 balls remaining. The pressure is now building up on both sides. Exquisite live telecast King Sports द्वारा इस वक्त किया जा रहा है YouTube के जरिए, और यहाँ पर ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति करते हुए मैच जो कि इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। आतिफ फील्डिंग में इस वक्त जमावट करने के बाद एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज सुशांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद सुशांत के लिए, गेंद को ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन मिलेगा और क्लीन कलेक्शन वहां पर, हालांकि कुछ हद तक वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन जरूर था लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 40 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 8 रन टू स्कोर, 10 बॉल्स रिमेनिंग, और गेंदबाज आतिफ तैयार। ये गेंद इस बार फुल टॉस ऑफ द टोज, गेंद को इस वक्त खेल दिया डीप कवर पॉइंट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए प्रताप, वो जानते हैं हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी बटोरते हैं तो उनके टीम को विजय तक पहुंचा सकते हैं, और यहां पर एनएम मैंगलोर को चाहिए डॉट गेंदबाजी इस वक्त इस मैच में वापस आने के लिए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। वक्त की परिस्थिति को समझते हुए इस वक्त ये दोनों बल्लेबाज सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हुए, और यहां पर 4 गेंदों पर 4 सिंगल्स बटोर चुके हैं, और प्रताप एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और इस बार गेंद निकल चुकी है फाइन लेग की दिशा में, थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर, शॉर्ट फाइन लेग फील्डर द्वारा दूर जाने के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और दूसरा रन यशस्वी पूर्ण कर चुके हैं। शॉर्ट फाइन लेग पर जो फील्डर खड़े हुए थे शायद उनके हाथों से टकराने के बाद गेंद निकली इस वक्त अपने रफ्तार को खोती हुई, जब तक फील्ड हो शॉर्ट फाइन लेग पर गेंदबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। अब 4 रन चाहिए जबकि गेंदें बाकी हैं 7, 4 to get from 7 डिलीवरीज। अब ऐसा कहना पड़ेगा एक चमत्कारी गेंदबाजी ही एनएम मैंगलोर को इस मैच में वापस ला सकती है। इस ओवर में अंतिम बार आतिफ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिना ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर फ्लिक कर दिया, डिफ्लेक्शन, गेंद जाती हुई फाइन लेग सीमा रेखा की ओर, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा की अंदर जब तक फील्ड की जाए 2 रनों का इजाफा हो चुका है, और इन 2 रनों के साथ गोरी यंग बॉयज नाउ ब्रॉट मोर नियरर टू द विक्ट्री, जस्ट 2 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट ओवर, और अंतिम 2 ओवर में मैच का नक्शा ही यहां पर बदल गया सतीश। Exactly, Gopi. Meanwhile, I request 5-star Addur, ದಯಮಾಡಿ 5-star ಅಡ್ಡೂರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ 5-star ಅಡ್ಡೂರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜೇತ ತಂಡದವರಿಗೆ 46 for the loss of 5 wicket, and absolutely Gopi, and sensible batting. Absolutely, it's a sensible batting from both the batsmen, and that's why always going to be a big problem, Gopi. Whenever it's a right and left combination, and definitely it's going to be a bonus for chasing team, because every time the bowler have to change the line and length when the strikes are rotated, and at the same time they have to change the field set as well. That's what they got advantage, and that's why I mentioned that this pair is going to be very crucial, left and right combination, and this is definitely going to become the bonus here for Gori Young Boys. But match is still not yet over, 2 runs to get for the victory, but 1 run is enough. I think if the match will going to tie without losing a wicket, Gori Young Boys definitely they are going to be the winners.
एग्जैक्टली सतीश, और यहाँ पर 2 रन चाहिए अंतिम ओवर में। तनवीर को गेंदबाजी इस वक्त सौंपी गई है। और जब कभी भी, बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, जब कभी भी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है तो गेंदबाज के लिए और फील्डिंग साइड के लिए सिरदर्द पैदा होता है कि फील्डिंग सेटिंग किस तरह से किया जाए, किस तरीके से गेंदबाजी की जाए। और यहाँ पर वक्त के नजाकत को समझते हुए परिस्थिति के अनुगुण बल्लेबाजी इस वक्त कर चुके हैं। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ा और इस बार 1 रन मिलेगा, दूसरा रन मिलेगा, और इस बीच गेंद सीमा रेखा पर दर्शक ने गेंद को उठा लिया है। और इस चौके के साथ Gori young boys are now through to the mega final of this competition to face a 5-star Addur in the mega final of this tournament, defeating NM Mangalore in a thrilling encounter by 5 wickets with just 5 balls to spare. And with that victory, they are now through to the mega final of this competition. And now the mega final of Yuvaratna Trophy 2022 is now going to begin within just a short while, which this tournament is proudly organized by Team Fortune, and that's match starts within just a short while. Now is some attractive prizes for the players of Gori young boys, especially Pratapun, the big fan of Gori young boys. Nandan Kulshekar is also announced 200 rupees for Pratap. So altogether he will go to get 1,200 rupees cash prize for his match winning knock for Gori young boys. And hard luck NM Cricketers Mangalore. You played a very good game of cricket, but the winning and losing is a part of cricket. At last Gori young boys might be looks a little bit better than your performance, and they deserve the victory. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ NM Cricketers ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ I request Gori young boys captain, please report here for the toss. We are having a shortage of time, and we want to complete this match in our scheduled time. Please cooperate with the organizer. Gori young boys ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಚಿಮಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ 5-star ಅಡ್ಡೂರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ನಾನಚಿಮಿಗಾಗಿ. ಹಾಗೆ NM Cricketers Mangalore ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Please collect your trophy for the representation of this cricket tournament. I request the captain of Gori young boys as well as captain of 5-star Addur, please report. Ali ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಬರಬೇಕು. Pratap, please come here. You are awarded as a man of the match winner. At the same time, you will going to get 1,000 rupees
from Naveen and Kishore of Sai Slok, and 200 rupees from Nandan Kulshekar. So Krishna Raja will going to present a man of the match. The T-shirt will going to present to Pratap for his wonderful innings. And Pratap, please stay here. You got a cash prize. Manoj Mugrodi will going to present a cash prize of rupees 1,000. And I request the NM Cricketers Mangalore captain, please come here. Collect your memento from our organizers, our chief guest. I request two teams captain, the captain of Goryang Boys as well as captain of 5-star Adur to please report here for the tossing ceremony for the mega final of this prestigious Yuvaratna Trophy 2022, proudly organized by Team Fortune Mangalore in the memory of late Punit Rajkumar. Toss is completed. Toss which is on by captain of Gori Young Boys elected to field first. So thank you very much. ದಯಮಾಡಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 5 overs game, so I request spectators, you are the one responsible for the success of this cricket tournament. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. We are back into the big final, the mega final of this cricket tournament. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡದ ಕೇವಲ 10 ಸಹಿ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಕೇವಲ 10 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆಡಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.
So we are coming into the mega final of this prestigious cricket tournament. Yuvaratna Trophy 2022. After that, two successful day of cricket, and we are inching towards a very successful day number 3, the final day of this cricket, and we are into the final of this cricket tournament, mega final of this cricket tournament, and Gopit Sutton is going to be one of the best cricket tournament as far as in this particular UCG cricket ground is concerned. I think Team Fortune done a great job to organize this such a fantastic cricket tournament, and so far they're really the one. They made a fantastic cricket in this cricket tournament, and we are happy to see that we are part of this wonderful cricket tournament. बिल्कुल शानदार तरीके से 3 दिनों तक इस श्रृंखला का आयोजन टीम फॉर्चून ने किया है। युवरत्ना ट्रॉफी 2022 2022 दिवंगत पावर स्टार पुनीत राजकुमार इनकी याद में, और निस्संदेह यहाँ पर बेहतरीन हर तरीके की फैसिलिटी यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड किया है, और निस्संदेह ये श्रृंखला इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी अनडाउटफुली। और जहां तक सवाल है, हमें भी इस श्रृंखला का हिस्सा बनने का मौका उन्होंने प्रदान किया, इसलिए हम संगठकों का अभिवादन यहाँ पर करते हैं। Absolutely, could be the start of the over number first, and straight away Sajid get that one between two fielders now to deep cow point region. Before the fielder from the deep cow region to run across to fields the ball, ample time for Sajid to complete the couple of runs. This is one team, I think, Gopi, Five-Star Door. They really deserve the place in the big final. The way they really played a game of cricket in the last 2 days, and definitely they deserve the place in this big final of this prestigious cricket tournament, Yuvaratna Trophy. This time lofted. That was a glorious shot. He's just knowing for that. He's such a danger batsman. Look at the way he picked that one right from the middle of the bat. Across the line of the delivery, swinging his bat, got that one right from the middle of the bat, and he got the distance as well. So score jumped into 8 on the board without loss of any wicket. Eight without loss of any wicket. Outstanding struck there from Sajid. Absolutely fantastic struck. And from the far end, Ansar, right arm over the wicket. Bowls this time. Oh, other end. This time no need to run for that. Ball is just like a Gopi. It was a stroke from the cannon. What a great stroke that one. Absolutely is on fire in the final. He's been unstoppable. And already I mentioned, Gopi, if you remember me or not, I told that if any team from the Group A ranking teams qualify to the final, I think it's not an easy final for them, because they're playing against one of the best team which is qualified for the final. It's none other than Five-Star Addur. And look at a lot of noises coming here. Such a fantastic to watch festival atmosphere out in UCG cricket. The supporters of Five-Star Addur really enjoying the stroke play, and he's gone. So Sajid is gone. Little bit excitement, little bit aggressive frame of mind. He definitely got a 1-6 and bound. He immediately wanted one more big shot, but this time Ansar just got a revenge. Absolutely got a revenge here after a punishment which came from the bat of Sajid. 1 towards a deep backward square leg for a maximum, 1 towards a deep third man boundary for a 4, and altogether he got 10 valuable runs from 12 valuable runs from his bat. He's back in the pavilion. But I think it's Gopi, he did the damage what he wanted to do in the first over of the power play. बिल्कुल अपना किरदार पहले ओवर में वो अदा कर चुके हैं बेहतरीन तरीके से। एक छक्का एक चौका लगाने के बाद 12 रन यहाँ पर उनका कुल रन संख्या है। और साजिद लगभग कितने गेंद उन्होंने सामना किया? साजिद ने 4 गेंद उन्होंने सामना किए, 10 रन उन्होंने बनाए 250 स्ट्राइक रेट की मदद से। 12 रन उन्होंने बनाया 300 स्ट्राइक रेट की मदद से। तो बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर दे चुके हैं साजिद। सतीश, absolutely, it was a wonderful strike rate here. Oh, drags the ball into the stamp. Asif Addur, the captain, departs. Ansar back into this game very strongly. This is a kind of
The bounce back is required, Gopi, for each and every bowler, isn't it? Absolutely perfect one. But this time is maybe the lucky breakthrough because Asif is looking for expansive extra cover drive. He got inside edge of the bat, drags the ball into the stumps, and wicket number 2 of 5-star Aduri is back at the pavilion. And Gopi, the more than the wicket of Sajid, I think this wicket is definitely going to be very costly for Adur because he is the one, Asif, who really played a magnificent innings in the semi-final when his team is struggling to get runs on the board. When the wickets are tumbling in front of him, he single-handedly played a captain's knock for his team. He scored almost, I think, 28 to 27 runs he got in the semi-final, and his wicket definitely going to be a very, very big breakthrough for Gori young boys. बिल्कुल सतीश, आसिफ का विकेट का गिरना इस वक्त निस्संदेह बड़ी सफलता कही जाएगी क्योंकि आसिफ एक ऐसे बल्लेबाज है जो करारे स्ट्रोक्स खेलने में माहिर है और यहाँ पर कुछ गलत लाइन की गेंद नहीं थी, कुछ अच्छी लाइन की गेंद नहीं थी कहना पड़ेगा, गेंद को अंदर खींच लिया था, जस्ट ट्रैक डाउन टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट और अपनी स्वयं गलती की वजह से विकेट वो दे चुके हैं और इस बार गेंद को उछाला and he's got the hat trick. He's got the hat trick. और सतीश 2, 4, 6, 4 and 3 wickets. 1 over, low maiden, 12 runs, 3 wicket. और यहाँ पर सतीश इसे क्या कहेंगे? अच्छी गेंदबाजी या बुरी गेंदबाजी? Buri batting, Gopi. And 12 for the loss of 3 wicket. What to say, Gopi? The wicket is wicket. It is counted. Whether it's a bad ball or whether it's a bad stroke. The wicket is in the accounts of answer only. And 2 excellent, 3 the deliveries. Of course, the 2 strokes. There is no ball is called as a bad delivery, Gopi, in this particular over because the batsmen did a fantastic job to hit the ball. And after that, he picked the wicket of Sajid. His level of confidence is definitely going to really increase. And because of he got a wicket of Sajid, immediately picked up 2 valuable wickets. That's the level of confidence. That's the kind of bounce back required. And Ansar once again outstanding. 3rd hat-trick of this cricket tournament. And he's just registering his name in this fantastic Yuvaratna Champions Trophy. He is one more bowler who got a hat-trick in this tournament. Of course, it's not that much of help for the bowlers in the particular cricket tournament, but some of the bowlers proved that they can be effective if they bowl very well. And Ansari got a hat-trick in this big final, mega final. Now Afridi. So far he's got outstanding tournament from his bowling for Gori young boys. Bowling right arm over the wicket. This time Altaf drives that one, not quite getting hold of the net properly, and already mentioned that against his bowling, driving the ball, hitting the ball, not so easy. Only one batsman, that is a Mansoor of NM Cricketers Mangalore, able to clear the ground with his absolutely magnificent footwork and the timing in behind the stroke. Otherwise, so far he's been some unplayable quicker delivery from this end. Afridi bowling with a short arm with the jersey number 100. Right arm over the wicket. Balls to Nainar. Nainar this time turns that one down. The short one leg division for 4 runs. That ball is really running down to deep fine leg boundary for 4 runs. There is no protection has been given for Nainar in the fine leg. And once he got a little bit bat onto that, the square leg fielder a little bit square and very difficult for him to chase that one. And again, lot of noises support coming here for 5-star outdoor. I think they got some supporters came here in UCG cricket ground to come and watch the performance of their favorite players. Just 17 for the loss of 3 wicket. Very good score on the board for 5-star outdoor. Again, the line is not good. Down the leg stump going to be wide. Frustration and pressure straight away there for Afridi. Each and every ball, enjoyment, joy coming from the supporters. 18 for the loss of 3 wickets. A big final. Gori young boys, they came into this tournament as underdogs, especially in the ranking teams. What they got, they're not a very good ranking in this particular cricket tournament, but they bounced back very strongly. They came into the finals of this cricket tournament. Again, one more wide. He's struggling, absolutely struggling. Looks like he got a little bit pain in his right leg, and maybe because of that he couldn't manage to get the line and length proper. But I think Gopi, it's not a good news here for Gori young boys because so far he's done a wonderful job in his bowling.
because bowling power play over is not any easy, and throughout the tournament he's done a great job for NM cricket for Goryang boys, but this time he's a little bit struggling. Maybe looks like Gopi the hamstring injury, and hamstring injury is happening only when you are playing continuous matches. Maybe it's definitely going to be the result of that is feeling a lot of pains. बिल्कुल हैमस्ट्रिंग इंजरी आप हैवी क्रिकेट खेलने की वजह से होती है, मांसपेशियों की खिंचावट जिसे कहते हैं, और यहाँ पर गेंद फेंकते ही शायद कोई नस खींचकर इस वक्त पकड़ लिया था, तो इस वजह से वो इस वक्त पैरों में दर्द महसूस करते हुए, लेकिन वो इस वक्त सक्षम है गेंदबाजी करने के लिए, तैयार हैं, और देखते हैं अगली गेंद पर वो क्या करते हैं. Absolutely, Gopi, and Afridi once again back to his bowling mark, right arm over the wicket, balls to 9R, technically very on player. He is struggling, absolutely struggling now. Now he's with the arm. He's putting his right hand, it's left arm, bowling arm. That means he's feeling a lot of pain here. One more addition to two more addition to total scoreboard was on 21 for the loss of 3 wicket. And Gopi, you are talking about that heavy cricket. We are thinking that the players are playing only here, but they are playing other part of the Mangalore as well, where there is a tournament. So many tournament is going on. The players having a very busy schedules, and because of that, I think they couldn't manage to keep their maintain their fitness level, and certainly they are a little bit struggling here. 21 for the loss of 3 wicket, and Afridi once again back to his bowling mark, bowling with a short run up. Right arm over the wicket, balls to Altaf. Altaf drives that one, but Mr. Got appeal for caught behind. Excitement from Arshad behind the stump, and with that appeal, Gopi, I want to see, nice to see that he's got a big smile in his face, and he's a very friendly nature, the very good cricketer Arshad, no doubt at all, and 21 for the loss of 3 wicket in the over number second in progress. Big over here for Adur. Again, the one more wide, prolong over, not really going here for Goryang boys. The big final, they started to feel the pressure, especially the bowler here, not really getting his line and line. 22 for the loss of 3 wicket in the over number second in progress. Already they got a very big over here for 5-star Adur. Altaf is on strike now, facing Afridi. Balls this time, good one, absolutely good one in the relegation, right on the line in the distance, a little bit outside the line of off time, but it's quicker delivery in there from Afridi, and scoreboard now remains at 22 for the loss of 3 wicket. Slowly sun started to moving towards the sea here. Looks like they will go into the sun will go into complete his duty for the day, and it is a Sunday and day belongs to sun, but wait and see in this particular match day belongs to which team, whether it's going to be a Goryang boys, will it going to be a 5-star Adur, but 5-star Adur definitely they're going to enjoy each and every wide deliveries, extra deliveries. 24 for the loss of 3 wicket. Warning, two deliveries remaining, yes, 2 balls remaining of this over of Afridi. Prolonged over, it's a big over. Right above the kitty balls. Again, that's down the next time. Again, it's going to be a same result. How many balls he bowled? Already bowled 10 deliveries, Gopi, and it's definitely going to be a disaster for Goryang boys. Not only they get extra deliveries, but extra runs here. 25 already on the board for a 5-star Adur. They got all the chances here to become the champions. A lovely shot, but not quite able. Oh, misfield by the fielder. Yuvaratna not really up to the mark at backward point region. Again, he made a misfield. Again, the 9R got a couple of runs. And with that couple of runs, scoreboard moves on to 27 for the loss of 3 wickets. It's just a second over in progress. 5-star Adur. They are cruising towards some big score here in the big final, the mega final of this cricket tournament. From the commentary box end, right arm over the wicket, delivers. Again that ball hitting his leg down the leg stump. No question of leg before, but that's question of leg by as well. One more addition to total. 2 overs completed after completion of over number 2. 5-star Adur at 28 for the loss of 3 wicket. And Gopi, 28 for the loss of 3 wicket. Now
3 overs remaining, and the kind of the bowling which is required in the big final, mega final, a little bit disappointment for Gori young boys. Very interesting to see that the organizer decided to reduce the number of over because we have a shortage of time, but number of over remains the same. 6 over. He bowled 2 overs and 28 for the loss of 3 wicket, Gopi, and now 3 overs remaining. I think if Gori young boys want to put some break in the run rate, they have to bowl very well remaining 3 overs. Otherwise, 5-star order are looking towards some big total in the big final. एग्जैक्टली सतीश, और पिछले ओवर में 12 गेंद जो अफरीदी ने फेंके उसकी बदौलत यहाँ पर एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा कर चुका है 5-स्टार अड्डूर, और कुल मिलाकर पिछले ओवर में रन से बने कुल मिलाकर 16 रन पिछले ओवर में बने, और उस ओवर की बदौलत 5-स्टार अड्डूर एक बेहतर स्थिति में यहाँ पर पहुंच चुका है। अब 3 ओवर में बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी यहाँ पर करनी है गेंदबाजों को, गोरी यंग बॉयज के, और अरशद इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए, स्ट्राइक लेते हुए इस वक्त नैनार इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त अरशद तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, गेंद ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ना चाहा, पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 20 रनों पर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर, इन फैक्ट 29 इन फैक्ट फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और जिस तरीके से यहां पर 29 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, ये गेंद इस बार ह्यूज वन, इट्स अ बिग वन, मैक्सिमम ओवर डिफेंस एंड ऑन द रोड 35, सो फैंटास्टिक स्ट्रक दिस टाइम केम फ्रॉम द बैट ऑफ अल्ताफ, और इस छक्के के साथ स्कोर बोर्ड छलांग लगाकर इस वक्त पहुंच चुका है 35 रनों पर। इट्स 35 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। What outstanding batting performance continuing here from the batsmen of 5-star अड्डूर, और यहां पर गोरी यंग बॉयज के गेंदबाज सही राह को इस वक्त तलाशते हुए, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को खेल दिया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर। 36 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। हल्के से गेंद को खेल दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए और रन्स आसानी के साथ बनते हुए, और 5-स्टार अड्डूर इस वक्त एक लंबे स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ। तो अरशद एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर, गेंद निकल चुकी है फाइन डीप थर्ड पर, सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए बाई के रूप में, विकेट कीपर के पहुंच से बाहर, और शॉर्ट थर्ड मैन फीडर भी गेंद तक पहुंच नहीं पाए, गेंद निकली फाइन, और यहां पर बल्लेबाज का बल्ला टूट चुका है, बैट हैज बीन ब्रोकन, उनका हाथ उनके बल्ले से अलग हो चुका है, और हाथ और बल्ला दोनों को लेकर वो इस वक्त पेविलियन की ओर बढ़ते हुए, और अपना बल्ला यहां पर बदलने के लिए, बैट बदलने के लिए, तो करारे तरीके से इस वक्त जमीन पर उन्होंने बल्ले को मारा था, और यहां पर 40 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका 3 विकेट के नुकसान पर। तो यहां पर अपना बैट बल्ला बदलने के बाद इस वक्त क्रीज की ओर लौटते हुए, और 10 खिलाड़ियों के साथ इस वक्त खेलता हुआ 5-स्टार अड्डूर, और जहां तक सवाल है रोशनी का, तो रोशनी इस वक्त मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है, अंधेरा सा छा चुका है, और यहां पर 6:20 शाम के बजते हुए, और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द यहां पर आगे बढ़ाए। तो इस बीच स्ट्राइक लेते हुए अल्ताफ और अरशद तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद बल्ले का भीतरी किनारा, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन मिलेगा, विकेट कीपर प्रताप गेंद तक पहुंचे लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए, और हर रन के साथ बाजों की आवाज, सीटियों की आवाज यहां पर सुनाई देती हुई 5-स्टार अड्डूर के समर्थक सपोर्टर्स द्वारा अपने टीम का मनोबल वो बढ़ाते हुए बाजों के साथ, सीटियों के साथ, और कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स।
सो 2 ओवर्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन द इनिंग्स, और देखना यह कि इन बचे हुए 2 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर रब बटोर पाते हैं। प्रताप गेंदबाजी पर इस वक्त लगाए गए हैं और चौथा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ 42 इन फैक्ट फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स 42। और प्रताप की ओर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, लेग कटर गेंद थी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है विकेट कीपर के हाथों में, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 43 43 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, जस्ट 4th ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। प्रताप अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद हल्के से दे, गेंद लेग कटर गेंद थी, गेंद का इंतजार किया अंतिम क्षण में और गेंद को इस वक्त खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट। बल्लेबाज ने पूर्वानुमान लगाया था कि गेंद तेजी के साथ आएगी, लेकिन गेंद आई इस वक्त धीमी गति से और गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने के बाद 1 रन बल्लेबाज पूरा यहां पर कर चुके हैं। 44 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। प्रताप बाउल्स एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑन बेहतर, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, दैट्स द लाइन ही हैज टू बॉल इन दिस सिचुएशन। लेग कटर गेंद थी, लगभग बल्ले के अति निकट टिप्पा खाई, फ्लाइटेड गेंद थी और यहां पर चकमा खा गए इस गेंद पर, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में। प्रताप ये गेंद ऑन साइड पर उछलना चाहा, मिड विकेट फील्डर के हाथों में गेंद, बल्लेबाज आगे दौड़ा लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित। एक बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ यहां पर प्रताप का, जिसमें सिर्फ 2 रन वो दे चुके हैं पहले 4 गेंदों में और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था ना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद राइट हैंड, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, दिस इज एन ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग। गेंद को इस वक्त टॉस किया था, बल्लेबाज को ललचाया था कि वो आक्रामक स्ट्रोक खेले और इस लालच में बल्लेबाज आ गए, फ्लाइटेड गेंद, लेग कटर गेंद और गेंद की फ्लाइट बल्लेबाज को वंचित करते हुए सीधे निकली, सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और मैं दरख्वास्त करता हूं कि कृपया बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान पर उतरे। अली बैट्समैन दयविಟ್ಟು आदर्श बेग ने क्रीज के पर बेकागी विनंती। तो एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में, स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर एंड स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट इज गोइंग टू बी 7 balls रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। तो बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर दौड़कर पहुंचते हुए फयाज नंबर 6 बल्लेबाज और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार प्रताप इस ओवर में अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक तेज गेंद और फयाज इस बीच 2 कदम आगे निकले थे जरूर, लेकिन अंतिम क्षण में क्रीज पर अपने कदम उन्होंने खींच लिए। तो बेहतर ओवर, पहला बेहतर ओवर सतीश, जस्ट 2 runs conceded बाय प्रताप इन दिस ओवर और मैं समझता हूं प्रताप का ये ओवर निस्संदेह अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी पर आएंगे उनका मनोबल बढ़ाने में सहकारी होगा। Exactly, Gopi. It's a better over as far as the Goryang boys is concerned after conceding lot of runs in the 3 overs and certainly it's going to be a very good over there from Pratap there, and need to be Gopi because batsmen are in a very good rhythm and they're picking up the line and length quite easily for the fast bowlers. Whenever the slow bowler is introduced, batsmen started to feel a little bit of confusion, and that's what the result he got in this previous over. बिल्कुल सतीश, पहली गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खेल दिया, फील्डर काफी पीछे तैनात, डीप कवर पॉइंट पर गेंद पहुंची, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। It's 46 for the loss of 4 wickets in the over number 5 and the last in progress at the start of the 5th and the last over in fact। और इस बीच नौफल गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ऊपर द विकेट, फ्लाइटेड गेंद ऑफ द टोज, गेंद को इस वक्त खेल दिया, गेंद जाते हुए गली की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, प्रताप फील्डर है, गेंद तक पहुंचे, वही विकेट कीपर के पहुंच से बाहर, थ्रो, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, सब कुछ इस वक्त 5 स्टार अड्डूर के पक्ष में चलता हुआ और एक लंबे स्कोर की ओर वो इस वक्त बढ़ता हुआ 48 रन जोड़ चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। It's 48 for the loss of 4 wicket in the over number 5 and the last in progress। और इस बीच गेंदबाज तैयार, ये गेंद नौफल की शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, 1 रन फिर से मिलेगा, नैनार और ओवर थ्रो 2 रन और फील्डर्स, गोरियंग बॉयज के फील्डर्स की देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि वो काफी हद तक थक चुके हैं यहां पर और इन 2 रनों के साथ the 50 comes up for 5 star Addur in the over number 5th and the last in progress। 3 balls now left in the innings। ये गेंद नौफल की बेहतर गेंद थी, इस वक्त गेंद को उछालना चाहा, नॉन स्ट्राइक रन पर यहां पर रन आउट हो चुका है।
और सिर्फ 2 गेंदें बाकी है सतीश, और मैं समझता नहीं, मैं यकीन के साथ कहूंगा कि यहां पर एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन 5 स्टार अड्डूर के बल्लेबाजों ने दिया है. Exactly, Gopi. It's a fantastic batting performance by 5 star Addur. That's one reason because Gopi, they're playing with a fresh mind, fresh physical fitness, because they already one day before they came into the finals of this cricket tournament. So that they really looks like they're very fresh here. So that is they're playing very nicely as per their game plan, and they dominated the bowling of Goryang boys. Doesn't look like they came from a team which is a local team, but they really looks like they're better to have in the रैंकिंग टीम नेक्स्ट सीजन. बिल्कुल सतीश, आपने फरमाया, और काफी फ्रेश अप इस वक्त लगते हुए, क्योंकि आज का पहला मैच खेला, जबकि गोरियांग बॉयज आज का तीसरा मैच यहां पर खेलता हुआ. ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा क्योंकि बेहतर गेंद थी, और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप, द स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड, 51 द स्कोर स्कोर्ड बाय 5 स्टार अड्डूर, एंड नाउ द टारगेट फॉर गोरियांग बॉयज इज 52. They have to score in the stipulated 5 to clinch the prestigious Yuvaratna Trophy 2022, and for the 52 runs they have to score with the required run rate of exactly 10.40 runs per over. और सतीश यहाँ पर under this condition 52 quite difficult है, लेकिन गोरियांग बॉयज के पास जो बल्लेबाजी में गहराई है, उस गहराई के अनुसार अगर वो यहाँ पर बल्लेबाजी करते तो लक्ष्य मुमकिन है. लेकिन 5 स्टार अड्डूर के पास न सिर्फ बल्लेबाजी में गहराई है, बल्कि गेंदबाजी में भी डेप्थनेस है, और निस्संदेह अगेंस्ट द स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप गोरियांग बॉयज को इस वक्त बल्लेबाजी करनी है, उनके बल्लेबाजों को. और मैं समझता हूं राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उन्हें घातक बल्लेबाजी करने की, और अगेंस्ट द स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप अगर उन्हें घातक बल्लेबाजी करनी है तो कुछ विशेष रणनीति के साथ उन्हें मैदान पर उतरना होगा. क्यों सतीश? Exactly, Gopi. But one more interesting thing to see in this big final, Gopi. The Goryang boys need to face their own bowler, Fayaz. He is representing his team, it's a home team, so that they need to deal with that 2 overs of Fayaz, who has been outstanding throughout the tournament. Very interesting to see that how Goryang boys will going to deal with Fayaz over. And of course, Deepak and then Naufal are the 2 opening batsmen. Definitely they will go into open innings, and I want to see that the battle between Fayaz and 2 opening batters of Goryang boys is going to be very interesting. बिल्कुल, अपने टीम के गेंदबाज के खिलाफ उन्हें इस वक्त बल्लेबाजी करनी है फयाज, और देखते हैं किस तरह की रणनीति वो अपनाते हैं. हालांकि फयाज के गेंदबाजों से वो काफी परिचित है, और यहाँ पर देखना यह है कि उनके बल्लेबाजी के खिलाफ कौन सा अस्त्र वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाजी में. फिलहाल 52 रनों का लक्ष्य, उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद फॉर द सेकंड लास्ट टाइम हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ अंग्रेजी में, जब गोरियांग बॉयज की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद, थैंक यू. Welcome back. Again, the big final, mega final. 52 is the target for Goryang boys to win the big title of this most prestigious Yuvaratna Trophy 2022, proudly organized by Team Fortune Mangalore in the memory of late Punit Rajkumar, and all set now for the chasing. Some destructive batting performance required here from the Goryang boys opening batters, and wait and see how well they will go into disturb this man. And Fayaz will go into start the proceedings from the community box, and right arm over the wicket, bounce to Deepak. Deepak going for the big shot, not quite getting a placement right, straight to the hands of Midan. No question of any run. Each and every ball you can see, Gopi, it's very nice to watch, nice to hear some sounds, just like we are in Sri Lanka, especially, and that kind of noises we can hear in Sri Lanka and West Indies as well. The festival atmosphere, and similarly in UCG cricket ground as well. Maybe the supporters of 5 star Addur,
they came into the large number, because this is a proud moment for the cricket lovers of Adur, because coming into the finals of this most prestigious cricket tournament, definitely it's going to be a privilege, and it's going to be a proud moment for the cricket players, cricket followers of Adur. That's when they came into large number to support their team, and because of that support, they're getting that much of support. Their performances looks to be fantastic against the Gori young boys, and looks like it's a very beautiful cricket ground here in commentary box, looking at the spectators out here in the UCG cricket ground, enjoying this big final, and wait and see who will going to become the champion here. The right arm over the wicket, Fayaz bowls, just like I mentioned about Gopi, they need to deal with this man, the young man, Fayaz. Is outstanding throughout the tournament in his bowling, and now he's bowling against his team, and is bowled beautifully. Lot of followers, lot of support here for Fayaz for each and every dotted deliveries. Lot of noises coming here from right of our commentary box, right arm over the wicket. Now fall this time, again the beautiful delivery, again the beautiful delivery. One more dotted delivery. Is really testing the temperament and the technique of Naufal in this particular over with this line and length. Outstanding. One without loss of any wicket. Needed some big shot. Gori young boys. He cannot deal with the dotted deliveries. Each and every dot ball taking you away from the. This time he lofted, high up in there. Long off fielder underneath it. He takes the catch, and now fall is back into pavilion, and Fayaz strikes. And Gopi, well deserved, isn't it? It's just really something is going in the mind of Naufal, because he played a 2-3 dotted dribbles that they wanted to break the shackle, and he just got that one over the deep long. They wanted to break the shackle. By doing that, he's got the fielder in the deep long, couldn't manage to get that one right from the middle of the bat. बिल्कुल सतीश, और 2-3 डॉट गेंद खेलने के बाद सहज रूप से दबाव उनके ऊपर पड़ गया था, और उस दबाव को उन्होंने हटाना चाहा एक छक्के के जरिए, लेकिन नॉट क्वाइट मिड लगी, टॉप एज पर गेंद टकराई, काफी उम्दा, काफी ऊंचा उछाला था, लॉन्ग ऑफ फील्डर ने इस कैच को लपका, और इस वक्त यही करना है सतीश, ब्लाइंड स्ट्रोक्स आपको खेलने होंगे, जब रिक्वायर्ड रन रेट 10 से ऊपर हो तो आपको खुलकर बल्लेबाजी यहां पर करनी होती है, करारे स्ट्रोक्स लगाने होते हैं, और वही करना चाहता नौफल, लेकिन दुर्भाग्यवशात उनका विकेट यहां पर गिर चुका है. Exactly. Now new batsman, one more danger batsman. Arshad came into middle, little bit mix up, misunderstanding between the wicket for that run, but at least they managed to complete the single. But a fantastic start here from Fayaz. Absolutely good start. He just conceded 2 runs and picked up 1 wicket. Now I think the cameraman will go into cover that the supporters of 5-star Adur Gopi, they needed to be, because the crowds, the spectators, they're the responsible for the success of any cricket tournament, and especially Gopi, look at the crowd here, jam-packed stadium, and after a long time I think that kind of atmosphere, the lot of noises, lot of sounds, loud whoos and ahs goes around the field, absolutely like just like in international cricket. निस्संदेह सतीश, ऐसा लग रहा है कि मानो अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला यहाँ पर चल रही है, और पूर्व क्रिकेट मैदान पर जो भी श्रृंखला होती है सारे जगह उसकी चर्चा होती है, देश विदेशों में उसकी चर्चा होती है, और यहाँ पर ये श्रृंखला जो कि एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला युवरत्न ट्रॉफी 2022 है, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया टीम फॉर्च्यून ने, और इस श्रृंखला का मेगा फाइनल यहाँ पर खेला जा रहा है, और निस्संदेह रविवार की शाम को यहाँ पर जिस तरीके से पब्लिक जो कि दर्शक भर चुके हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर चल रही हो. Absolutely. I request fielding team please make it fast. Still they have to bowl another 3 overs and 2 for the loss of 1 wicket. From the far end, the new bowler is introduced from the far end. First ball down the leg stump, and it fits everyone. Ball running down to deep 5-leg boundary, and meanwhile white signal umpire, 2 more to the total. With that a couple of runs, scoreboard now moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Now all up to this batsman Gopi. Nothing is impossible, Gori young boys. If Deepak and Arshad, as their potential, if they able to bat,
they can win the match. This time went for the big shot, missed it completely. Deepak not happy with himself. He wanted to hit that one down to mid wicket division. Again, he missed it completely. So far, I think 5-star outdoor, they came into the big final because they got some very good bowling department, they got very good batting department, and they got even better fielding department as well. That's why I already mentioned that any team which is coming to the final, they will definitely going to get some fight from this opposition. That is Adur outside the line of leg stump and going to be a wide chance of run out. Direct it might be the curtain of the innings of Asher there. Ball missed the stump, and Shaji is the fieldsman there in the short fine leg region. Tried to hit the stump, missed the stump completely, and one more addition to total 6 for the loss of 1 wicket. And Captain Asif Adur will not going to bother about that single. He know exactly need to restrict the big shots. He need to restrict the boundaries and sixes. And so far, these opening bowlers are succeeded to stop the boundaries and sixes. This is again down the leg stump, but here the bowler maybe looks like he started to feel the pressure, and one more wide delivery. Altogether, I think he bowled 3 wides in this over, and definitely this wide delivery is going to be a bonus here for Gori Young Boys. Now, Gopi, more than we are anything else in this particular cricket tournament, one of the most important part of this cricket tournament is Gopi, it's a live telecast, live coverage, and King Sports in the last 3 days they did a great job, absolutely great job as far as the quality of this coverage is concerned, and they've got a fantastic coverage of this cricket tournament. Again, they're going for the single, chance of run out, directed ball just missed the stumps here, and one more single is taken in the form of leg by, and with that leg by scoreboard was on 8 on the board for the loss of 1 wicket. And I would like to give special thanks to the owner of King Sports, Badruddin and Naufal, the owner of this cricket tournament, and they did a great job for the success of this cricket tournament as well. From the far end again, now looking for the blind shot, missed it completely. Good piece of early bowling there by the bowler. One more dotted delivery, each and every dot ball. And the target is looking stiffer and tougher for Gori Young Boys. They need to get some big shot if they wanted to back into this game from the far end. Right arm. This time again the dotted delivery. Deepak trying but not really having a contact with the bat. This is not an easy condition, one must say, because under this condition sighting the ball is definitely going to be a very difficult one. Deepak trying his level best. It's over number 3 in progress, and this is second over in progress, 8 for the loss of 1 wicket. Again, from the far end. Right arm over the wicket. Deepak swinging his bat. Again, he's not really getting that one from middle of the bat. He is very disappointed. This time, I think is a table delivery. Ball is came in such a line and such a height where Deepak can enjoy his big shot. But the fact that he is a little bit early into the strokes and ball came very late to his bat. He mistimed it, using his feet. Again, lovely, absolutely fantastic there from that bowler. He's handling the pressure very well, keeping this Deepak very quiet in this over. 2 overs, Gopi is going in favor of again 5-star Adur. Now, I think the target seems to be very difficult one. 42 to get, 44 to get, and in remaining 3 overs. 18 ball, 44, and what do you think? Will it go into a possibility of Gori Young Boys now onwards? बिल्कुल पॉसिबल है सतीश, और यहाँ पर सिर्फ चौके या छक्के ही ऐसा कहना पड़ेगा गोरी यंग बॉयज का भविष्य यहाँ पर बदल सकते हैं। और अरशद और दीपक इस वक्त मौजूद है, दोनों विध्वंसक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, और यहाँ पर 3 ओवर में छक्के और चौकों की बारिश हो करते हैं, तो निस्संदेह गोरी यंग बॉयज अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पर 3 ओवर का खेल बाकी है, और 1 ओवर उसमें बाकी है इस वक्त फयाज का। तो फयाज की गेंदों पर किस तरह वो बल्लेबाजी करते हैं, ये यहां पर देखने वाली बात है। फयाज खुद इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए अपना दूसरा ओवर लेकर, और अरशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज फयाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। अरशद के लिए उछालना चाहा, गेंद लेग स्टंप से बाहर की और निकलती हुई निशाना यहां पर लग चुका है, और यहां पर डिजास्टर एंड दीपक के लिए आगे निकल आए थे, और इससे पहले कि वो अपना बल्ला क्रीज पर रखे सीधा निशाना दागा था, गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में गेंद पर फील्ड करने के बाद, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। तो दूसरा विकेट गिर चुका है। दीपक का विकेट गिर जाने के बाद अब ऐसा कहना पड़ेगा गोरी यंग बॉयज की विजय की उम्मीदें आशाएं काफी हद तक कम हो चुकी है। तो अब नए बल्लेबाज
प्रज्वल जो कि इस वक्त क्रीज पर पधारते हुए, और देखना यह है कि वो इस तरह इस वक्त अरशद का किस तरह साथ निभाते हैं। फयाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। अरशद चौके और छक्कों की तलाश में इस वक्त सामना करने के लिए तैयार फयाज की गेंदों का। फयाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद अरशद के लिए। गेंद को इस वक्त हल्के से स्टीयर करना चाहा, आखिरी मौके पर गेंद की तेजी को पहचानते हुए, लेकिन गेंद पर बल्ला नहीं अड़ा पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फयाज, और निस्संदेह यहां पर मुश्किलें पैदा होती हुई बल्लेबाजों के लिए गोरी यंग बॉयज के। दाहिने हाथ राउंड द विकेट फयाज की गेंद, ये गेंद अरशद के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी, विकेट चटकाए विकेट कीपर ने, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज अरशद अपना बल्ला बैट क्रीज पर रख चुके हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, लगभग जमीन के सहारे आई, ऑन साइड पर स्विंग करने का प्रयास किया था, चूके पूरी तरह विकेट कीपर आसिफ के हाथों में गेंद जैसे ही पहुंची उन्होंने विकेट जरूर चटकाए आसिफ ने, लेकिन आखिरकार बल्लेबाजी से पहले अपना बैट बल्ला क्रीज पर रख चुके थे। सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, और यहां पर फयाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, फुल टॉस गेंद थी, वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद को स्विंग किया है, एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पर है। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, जिस तरीके से 5 स्टार अड्डूर के खिलाड़ियों ने तालियां बजाई, उनका अभिवादन किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर बेहतरीन फील्डिंग हुआ था। तो 2 रन यहां पर मिलेंगे, 10 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 10 for the loss of 2 wickets, और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, ये गेंद उछाला, नॉट क्वाइट मिड विकेट, क्लीन कलेक्शन, रन नहीं मिलेगा, बेहतर फील्डिंग वहां पर, और स्कोर रुक चुका है इस वक्त। आफ्टर सेकंड बाउंस गेंद को इस वक्त क्लीनली कलेक्ट किया था मिड विकेट के फील्डर ने, और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से फयाज गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, अरशद के लिए ऑफ स्टंप से बाहर, और इस बीच सही गेंद घोषित, बेहतर ओवर की समाप्ति, एक और बेहतर ओवर फयाज द्वारा, 3 ओवर की समाप्ति, 10 रन, 3 overs to 10 for the loss of 2 wickets, and now the target seems to be a much stiffer now for Gori young boys. 42 to get from 2 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 21 runs per over. और यहां पर परेशानियों के बादल घने होते हुए गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाजों के ऊपर। एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग फिगर्स फ्रॉम फयाज, 2 overs, no maiden, 3 runs he conceded and captured 1 wicket with the economy rate of exactly 1.50 runs per over, and this is an outstanding bowling performance in 5 overs format. तो यहां पर चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ, रोशनी मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है, शाम के 6:40 यहां पर बच चुके हैं, लगभग अंधेरा सा छाता हुआ, और इस श्रृंखला, इस टूर्नामेंट का 2 ओवर यहां पर बाकी इस मेगा फाइनल मैच में। और इस बीच गेंदबाज तैयार, हकीम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, गेंदबाजी शुरू करते हुए कहना पड़ेगा, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए, 42 टू गेट नाउ इन द विनिंग 2 overs। और हकीम ओवर की पहली गेंद, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर निकलते हुए, ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर ठीक से गेंद को गैदर नहीं कर पाए, वाइड का इशारा, 2 रन मिलेंगे। आप इस वक्त उन्हें विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी है, जब 42 रन 2 ओवर में बनाने हो तब आप वाइड फेंकेंगे तो निस्संदेह उपहार के रूप में, तोहफे के रूप में रन प्रदान करने के बराबर होगा। ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್, तो यहां पर ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा चूके, और गेंद सीधे इस वक्त, और इस बार गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुकी है, और इसी के साथ अरशद की पारी पर पर्दा गिर चुका है। तो विकेट यहां पर गिरा, और गोरी यंग बॉयज कहना पड़ेगा परेशानियों के दलदल में और धंसता हुआ। अब ऐसा कहना पड़ेगा, कुछ विस्फोटक बल्लेबाजी, चमत्कारी बल्लेबाजी ही गोरी यंग बॉयज को इस मैच में वापस ला सकती है, और 5 स्टार अड्डूर का तख्ता पलड़ा इस वक्त भारी लगता हुआ। 11 गेंदें बाकी, और अब रन से चाहिए 42, 42 इन रिमेनिंग 11 डिलीवरीज। और इस बीच फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, और नए बल्लेबाज यहां पर तैयार, शिवराज
इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरते हुए। और शिवराज का जहां तक सवाल है, इस वक्त उन्हें खेलनी है वो तकनीकी तौर के बल्लेबाज और यहां पर खेलनी है उन्हें आक्रामक बल्लेबाजी। और देखते हैं किस तरीके से वो यहां पर गोरी यंग बॉयज की नैया को सही तक पहुंचाते हैं। 42 टू गेट नाउ फ्रॉम 11 डिलीवरीज। और शिवराज इस वक्त गेंदबाजी माफ कीजिए बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। हकीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस वक्त तैयार ऑफ स्टंप से बाहर। और एक रन फिर से मिलेगा। 13 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। और स्कोर चाहिए, रन्स चाहिए 39, गेंदें बाकी हैं इस वक्त 11। एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने कोई गलती नहीं की। विकेट नंबर 4, शिवराज की पारी समाप्त 0 पर। और गोरी यंग बॉयज काफी संकट की स्थिति में यहां पर नजर आता हुआ। तो 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है 39 रन और बनाने हैं उन्हें विजय के लिए। और यहां पर नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ प्रताप, जिन्होंने पिछले सेमीफाइनल मैच में एनएम क्रिकेटर्स के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था। एक छक्का भी उन्होंने जड़ा था और वो छक्का मैच का टर्निंग पॉइंट रहा था, टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था वो छक्का। और यहां पर देखते हैं इस फाइनल मैच में वो क्या करते हैं। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकली और इस बीच एक रन मिलेगा। आई थिंक इट्स गॉट अ बैक ऑन दैट। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। उन सभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और चौके और छक्कों की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत है। और इस बीच गेंदबाज हकीम एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए प्रताप सामना करने के लिए तैयार। 38 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 9 balls. ये गेंद रिवर्स शॉट एब्सोल्युटली एक्सक्यूजेड एंड आई थिंक इट्स कुड बी फेल शॉर्ट ऑफ फेंस. One bounce into the fence. Nissandev with a twisted bat, he just got that one right from the middle of the bat and scooped that one with a style over deep backward third man for a boundary after one bounce. 18, 34 to get now. And the ball is remaining 8. तो 8 गेंदे 34 रन चाहिए। हकीम इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास। 1 रन इस बीच मिलेगा और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रन पर। लगभग अंधेरा सा मैदान पर छा चुका है। गेंद को साइड करना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। और कुल मिलाकर इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में सिर्फ 7 गेंदें अब बाकी रह गए। 1.1 ओवर का खेल यहां पर बाकी रह गया है और इस ओवर में अंतिम बार हकीम गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज। यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा और स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 20 रनों पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। प्रज्वल स्ट्राइक लेते हुए हकीम की ओवर की अंतिम गेंद का लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रज्वल के लिए हकीम। यह गेंद इस बार गेंद को उछाला और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। 26 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 26 रन और बनाने हैं और अंतिम ओवर बाकी। और सतीश आप क्या कहेंगे इस वक्त? 26 रन बनाने हैं अंतिम ओवर में और ये छक्का मैं समझता हूं गोरी यंग बॉयज के उम्मीदों को यहां पर बरकरार रख चुका है। Absolutely, Gopi, and maybe it's too late. That kind of explosive strokes is required in the innings of Gory Young Boys, but unfortunately they are not having that much of big strokes in the first 3 overs. But like they got that one in the 4th over, the last delivery of the 4th over, and now I think 24 runs to get, 26 to get. Half of the job is completed in 4 overs, Gopi, and they have to complete another half of the job in only 1 over. That shows this definitely it's going to be a very difficult one. It's definitely going to be very difficult and difficult one in this condition. Hitting 4 sixes or 3 boundaries and 1 6. It's definitely going to be a very difficult one. And in this condition, and we will see how Pratap and Prajwal will going to get this 26 runs.
Prajwal got a fantastic stroke that was in the previous over. He got right from the middle of the bat, clearing the fence. This time, dotted delivery number 1. Now 5 balls remaining, 26 runs required for the victory. This is a decider delivery. This is definitely a decider delivery for Gauri Young Boys. In this particular delivery, if they are able to get one big shot, then they can keep their hope for the next delivery. This time loft hit, not more than a single, and that's it. 25 required for the victory in 4 deliveries. 4 sixes will go into tie the match. The last and the final chance for Gauri Young Boys. Again, driven down to mid-wicket region. Not more, just the boundary. Oh, the boundary they got for 31 now. And 31 means another 21 more runs required for the 33. 30 required. 22 required, little correction. 22 required from 3 balls. Again, one more dotted delivery, and now I think no one can stop 5-star Adur to become the champion of this cricket tournament. 21 required from 2 balls. Here is Niner. Bowles went for the big shot, lofted high up in there, and Altaf is underneath it. He takes the catch. Look at the flags are flying around of 5-star Adur. The noises going harder and harder. They desperately wanted to see. They desperately wanted to enter the ground. They desperately wanted to lift their players, the favorite players. They were the one. They made their Adur the very popular by winning this prestigious Yuvaratna Trophy 2022. Just one delivery remaining for the celebration here for the 5-star Adur. Here you go. Balls, copybook style, defensive. That's it. 5-star Adur are really making a history in the UCG cricket ground. First time in history that 5-star Adur are becoming the champion, defeating Gauri Young Boys very comprehensively. The margin of exactly 30 runs. They defeated the opposition and came in and becomes the champions of this prestigious Yuvaratna Trophy 2022. Congratulations 5-star Adur and every supporters of 5-star Adur. They're entering into the ground and celebrate begins.
ಆಫ್ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಬಳಗ ಚಿಲಿಮಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರು ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರೋಹನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಗುರು ಹಿರೇಮಠ್, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ನಯನ್ ಇವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗುರು ಹಿರೇಮಠ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಮರಣಾಂತವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ 3 ದಿವಸದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು 2 ಹಿತವಚನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ ಟು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್. ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಇದರ ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದವರು ಯಾರು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಬಹಳ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದರು. ಈಗ ಹೊಸ ಯುವಕರುಗಳು ಆಟಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಉರ್ವ ಗ್ರೌಂಡು ಒಂದು
ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸಹ ಉರ್ವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಯಾರು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಉರ್ವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದವರು ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾದಂತಹ KL ರಾಹುಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈಗಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುರತ್ಕಲಲ್ಲಿ NITKಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಯುವಕ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ, ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅದು ಸಹ ಓವರಾಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಓವರಾಮ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಮಾಡುವವರು ಓವರಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಓವರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌನ್ಸ್ ಆದರೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ನಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಸ್ಲೋವರ್ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓವರಾಮ್ನವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಲೋವರ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋತ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಗೆದ್ದ ಟೀಮಿನಾಗೆ ಇದು 5 ಓವರ್ನ ಮ್ಯಾಚ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಯ ಒಂದು ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೌಲರ್ಗಳಿಗಾಚೆ ಹೆಚ್ಚು ಓವರ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಓವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಓವರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 5 ಓವರ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಜನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೆದ್ದಂಥ ಟೀಮ್ 2 ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏರ್ಬರಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಯಾರಿದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಯಾವ್ದು ತುಂಬ ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೀಮ್ಗಳು ಒಂದು 10-20 ಜನ 50 ಜನ 100 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೀರಾ. ಯಾವುದೇ ದುಡ್ಡಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ನಂಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಒಂದೇ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಆ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಆಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಬೋಟ್ನ 11 ಇವರು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೋರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಿದ್ದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಾನು ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಸಹ ಈ 30 ಓವರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನ ಆಡಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ನ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ನವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಟೀಮ್ಗಳ ಒಂದು ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ 2 ಮಾತು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you very much, Vishwas Kumar Das, for your inspirational words. Certainly, it's going to be very good to see that you are getting a lot of information from underarm cricket as well as in overarm cricket as well. And thank you very much for your wonderful words, sir. So we are going into the next. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್, ವಿದೌಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ definitely it's very difficult to organize such a big tournament like Yuvaratna Trophy 2022. So that I request Mr. Naveen vote of thanks for the sponsors. Over to Naveen. Team Fortune Mangalore, ದಿವಂಗತ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರೋಫಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ.
5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ 24 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಲೋಕಲ್ ಪೂರಲ್ಲಿ 16 ತಂಡಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅವರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಥಮ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಕದ್ರಿ, ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಜೀರ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್, ಇವರು ನಮಗೆ ಲೈವ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾವಣ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಾಸ್ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಬಳಗ, ಇವರು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಘು ಭಟ್ ಮಾಲೆಮಾರ್, ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಕಿರಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಚ್ಚನಾಡಿ, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್, ಆಸ್ಲಿ ಮಾಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್, ಟೀಮ್ ಸಾಯಿ ಸ್ಲೋಕ್, ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, 7 ಗೈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗ್ರೋಡಿ, ತಿಲಕ್ ಗುರು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ, ಟಾಪ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಶಮೀಮ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ, ಗೋಕುಲ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕದ್ರಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕದ್ರಿ, ರಫೀಕ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ SL ಶೇಟ್ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ಹಂಪನಕಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಟ್ಯಾಟೂ ಶಾಪ್ ಹಾಗೂ ಶೈನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾಕಲಾ ಇದರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಳೆದ ಲೋಕಲ್ ಪೂಲಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಫೆಡ್ಲೈಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕದ್ರಿ ವಾರ್ಡ್, ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅತಿ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಅದು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಯಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಹನ್ ಮಂತೇರು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳೂರು, ಜಯೇಶ ಪ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೂವರ್ಸ್, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಾವೀಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಿಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಕದ್ರಿ, ಇವರು 2 ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ಸ್ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರನ್ನರ್ಸ್ 2 ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರ್ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಇಬ್ಬರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ತಾಫ್ ಹಾಗೂ ಅನ್ಸರ್. ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಖತ್ರಿ, ಇವರು ಈ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ಇವರು ಈ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅಲ್ತಾಫ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅದು ಆ ಕೇಕನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಂಡೋಗಬೇಡಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋರಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅನ್ಸಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಇವರು ಈ ಕೇಕನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಈ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ.
ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓವರ್ ಟು ಸತೀಶ್. Thank you so much, Naveen, and once again, thank you very much each and every sponsors who are heartily cooperated for the success of this cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2022. We are straight away coming into this presentation ceremony, and before that, we would like to give special thanks for the authorities of officials. They are the one responsible for the success of cricket tournament in last 3 days. First of all, I would like to invite one of the most popular and KSCA qualified umpire Roland Pinto sir, please come forward. He's completed 37 years of umpiring duty in his career and is doing it this 38th year. So I request Roland Pinto to come forward. I request Tejas Shetty, please present memento for Roland Pinto. Big hand for Roland Pinto, one of the best official ever seen in both underarm and overarm cricket. Is dedicated everything for the job of umpiring. So thank you very much, Roland Pinto sir, for your cooperation for the success of this cricket tournament. Did a great job in the last 3 days of this cricket tournament, Roland Pinto sir. Now I would like to invite Sriraj of Gori Young Boys, one more fantastic umpire. The last 5 to 6 years he's been outstanding under the belt of Roland Pinto. Is really getting maturity in umpiring field as well. So I request Ritesh D'Souza to kindly request you to present this memento to Mr. Sriraj for his wonderful job for this success of Yuvaratna Trophy 2022. I request Mr. Vivek, one more umpire, Vivek of challenge bowler. He's also done a fantastic job. And the final day, it's a very difficult day because the top 8 teams participate in the final day, and Vivek did a great job. Once again, not an easy. He handled the pressure and did a great job. And I request Raghavendra Bhatt Udupa to hand over this memento for Vivek for his wonderful job. And one more umpire, Shriniket, is not here. I think he's in JD Trophy Bantwal. But his absence, I would like to give special thanks to Shriniket for your great job as umpire in the last 2 days. The next part of vote of thanks, it's certainly the 3 days of cricket is definitely very difficult for us because we have a busy schedule. The commentators, we have a busy schedule. We have to run Bantwal. Morning we have to come to Urva. Now we are moving to Bantwal as well. So it's a very busy schedule, and it's only possible because we are having a very good partner along with you. And my partner Gopi did a great job throughout 3 days with me. It's outstanding. Gopi in Hindi language did a great job. I request Rajit to present this memento to Gopi, one of the most popular name in underarm cricket. Gopi is my partner. 165 matches we together, and more than 25 years of experience, Gopi, in Hindi language. Thank you very much, Gopi, for your support. Now it's time for my friend Gopi to take over the microphone in our national language, not for cricket. But in the prize distribution ceremony, exactly Satish, there is no doubt about that. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನೂ ಆದಂಥ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸುವ
ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸತೀಶ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಆಚಾರ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. Thank you, Mr. Satish. Shukriya, Gopi. Now we are coming to the another important part of cricket tournament, scorer department. And last 3 days, I think the 3 guys have done a great job here. First of all, I would like to invite Swastik to please come forward. I request Guru Hiremat, please present memento for Swastik. He has done a wonderful job in this cricket tournament, one of the difficult job as far as the scoring is concerned. Lot of concentration is required, and he done a great job for the success of this Yuvaratna Trophy 2022. Big hand for Swastik. Now I request Dhanraj, please come forward. He done a great job in a scoreboard department. Dhanraj, the local hero. Dhanraj, famously known as a black tiger, done a great job in a scoreboard department. I request Prabhakar Kunjaturu to present Kunjatbail representation. Prabhakar Kunjatbail, please present this memento for Dhanraj for his wonderful work. Special thanks to Satya Swarup, I think he's not here, but I would like to give special thanks to Satya Swarup. First 2 days done a great job in a scoring department. The next one, every tournament really need to have some good sound system, light system, and once again I request Mr. Sandeep, the proprietor of Sai Electricals, please come forward. It's provided a very good sound system for this Yuvaratna Trophy 2022. I request Vishwas Kumar Das, please present this memento for Sandeep. Big hand for Sandeep, the present cricketer as well, representing challenge cricketers bowler for a long time, more than 25 years of experience as a cricketer. And thank you very much, Sandeep, for your support for the success of this cricket tournament. The next one, we'd like to invite the person who really responsible for the success of the cricket tournament. And everybody knows that nowadays Underarm cricket is not really having any boundaries. It's really having a live telecast not only from India but outside the India as well. Lot of followers in Gulf countries as well. So that if you get any very good live telecast, definitely they will get a lot of followers as well. And throughout the 3 days, we have a fantastic live telecast of this Yuvaratna Trophy. And I request King Sports YouTube channel owner, Mr. Naufal, to come forward. Naufal, please come forward. Any of member? Yes, definitely. On behalf of Naufal, I request Lakshminarayan Ashar, proprietor of Vidya Kala Furnitures, to present this memento for King Sports channel, YouTube channel staff member. Done a great job. Give a big hand for King Sports because they done a great job, especially in the department of third umpire. They done a great job, and I think definitely they got a very good future as well. King Sports have a great future, and now so we are straight away coming to the individual performance of this Yuvaratna Trophy 2022. Altogether, the 3 days of a fantastic game of cricket we are witnessed, and some fabulous bowling performance, batting performance, even the bowling performance. Altogether, this is a successful cricket tournament organized by Team Fortune. First of all, it's a big hand required for Team Fortune for giving such an opportunity for the
the cricket players to come and showcase their talent in this most beautiful UCG cricket ground. And first we are coming to the man of the match of the final. Of course, 5-star Addur, they came into the final. And Gori Young Boys, they also came into the final. But at last, it's going to be fantastic to see that the team which is came for the local team becomes a champion. So big hand here for the 5-star Addur. Nevertheless, they are equal to the top teams as well, where they performed from the bat, ball, and even in the fielding department. And man of the match, which is goes to any guess? Yes, any guess? No guess. Yes? Altaf. No, it's not Altaf. Absolutely right. The young talented bowler of 5-star Addur, Fayaz, who's judged as man of the match. I request Rohan Montero of President of Young Friends Suruvat to present this man of the match award. So tribal tattoos presenting t-shirt for the man of the match as well, and beautiful Mehmet trophy for Fayaz. He's an outstanding throughout the tournament from the bowling. He's the one responsible for the final of his team, 5-star Addur. Congratulations, Fayaz, for your wonderful performance from the ball. Now, next one, the best bowler of the Yuvaratna Trophy 2022. Any guess? Best bowler. Pura regorna baka baki takle enjina korpin. Onjana betakle korodate. So the best bowler of this tournament goes to the name from the opposition team. It's Ansar of Gori Young Boys, who picked up total 8 wickets in this tournament. He's been outstanding. He bowled power play overs. It's not so easy. He bowled every time he bowled power play overs, and he's got a very economical. I request Manoj Mugrodi to present this best bowler award, and he got a hat-trick as well. He got a hat-trick as well in the tournament. Total 3 hat-tricks and 1 hat-trick which is taken by Ansar in this particular tournament. Now it's coming to the best batsman award. The best batsman of Yuvaratna Trophy 2022, which goes to, any guess? Yes? Altaf? Deepak? Satish? Yan Gobudini Jimar. Sajid? Atif? No. The best batsman which goes to one who scored quick fired 43 runs. Deepak of Gori Young Boys. I request Raghavendra Bhatt to present this best batsman award for Deepak for his entertainment innings in this particular tournament. Threats some enterprising cricketing strokes and deserve this best batsman award. Now the big one, huge one, the big smile in the faces of 5-star Addur. Now it's a big one, the man of the series, man of Yuvaratna Trophy 2022, which goes to, yes, any name? Enchinamare for the Fayaz. Absolutely Fayaz. I request Srimati Lavanya Vishwas Kumar Das to present this Man of the Series award. Along with this, we got one at the bat, which is sponsored by Lakshmi Narayan Achar, and you will going to get the t-shirt as well.
So congratulations Fayaz and better luck. Have a great future in cricket and he deserves this man of the series for his wonderful performance from the bowling, who picked up total 5 wickets, but his economy is outstanding. Each and every matches his economy not more than a 3, it's less than a 3. Outstanding bowling performance. Now straight away we are coming to the big one. Now it's time to announce the runners-up of Yuvaratna Trophy 2022. Of course, it's not an easy job. 8 top teams participated in Group B, and everybody is predicting that it's going to be KFC Kodigal, it's going to be NM Cricketers Mangalore, but Gori Young Boys, and they really played like a champion and they came into the big final and they become the runners-up of Gori Young Boys, the runners-up of Yuvaratna Trophy 2022. May I request all the players of Gori Young Boys along with the captain, please come forward. Before that, medals for each and every players from our chief guest. They will go into honor with the medals. We have Ansar, we have Shivraj, Arshad, Deepak. The cash prize of rupees 50.